you may be hearing in terms of the context of the 4G and 5G and what does it mean and all that. But rest of the day, we will be seeing what all is being done by BSNL in rollout of 4G and 5G, right? How many people are aware about the mobile technology as such or dealing in or ever are direct in mobile technology? Anyone at any stage? Any of you like who has worked in the mobile technology like or मोबाइल में काम किया होगा कभी मोबाइल या you also? That's very clear. Okay. Anyone else? Okay. 2G 3G 4G क्या होता है कितने लोगों को पता है थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे हाँ थोड़ा थोड़ा पता है ना गुड so what I am trying to cover in this lecture is a kind of like how mobile technology in terms of the architecture has evolved out क्या changes है architecture में ये इसका डिस्प्ले अलग है थोड़ा anyway shifted है okay then what are the 5G user scenario key capabilities of what are the like 4G and 5G क्या अलग है उसमें then architecture wise क्या difference है और features क्या हैं radio part में as well as in the core part then some terminologies associated with migration from 4G to 5G and there's like a practical application of 4G and to larger extent 5G which we may be interested in as a operator right I'm fine sir. So starting with like as an introduction or bringing all the participants to the common platform, we will start with what all are there in 2G, what is there in 3G, what is 4G and 5G. Some of the terminologies which you may come across, right? इसका लेजर का है. So this particular in the red one is basically your 2G network. जब डिपार्टमेंट में शुरुआत हमने की थी रादर टेलीकॉम का शुरुआत मोस्टली 2G से ही हुआ था 1G तो it was somewhere in the world it was not everywhere so 2G was basically having as such mobile network है basically two components एक जिसको RAN कहते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क लूज है क्या एक जो होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क और एक होता है कोर नेटवर्क PSTN में जिसने देखा होगा एक तो आपका एक्सेस नेटवर्क हो गया जहां से आपका वेरियस मोबाइल को कनेक्ट करते हैं रेडियो से उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड अनदर पार्ट इज इक्विवेलेंट टू योर switching or transferring to other network handovers part so that is basically referred as a core network so in case of radio network there were two components BTS and BSC I think most of you may be familiar right BTS or BSC and another is MSC. That was a scenario for 2G. 2G was primarily basically your circuit switch voice services देते थे उस टाइम हम और वो circuit switched होती थी. Then came the 3G. 3G में भी radio access part was same like it was having a two component that was referred as RNC, RNS radio node controller जो कि आपका BSC equivalent है and another is node B. So BTS equivalent was there referred as a node B. I hope you're getting it, right? But when we migrated towards the 3G network, there was a concept of GGSN and SGSN to take care of data services, right? So primarily, basically, we had a circuit switch. Then to take care of some of the data services, there was two elements has been introduced: GPR serving node and gateway GPRS node. Those were introduced. So architecture was more or less same. In 3G, we introduced a packet data system, packet data handling system. Those were referred as these.
Now, when we migrated or when the 4G technology came in the radio access network, you see there is only one equipment that is referred as E node B. And we have a packet or switching core network that is referred as a evolved packet core EPC in case of 4G. Any basic doubt in this architecture? रैन में बेसिकली एक ही कंपोनेंट है दैट इज रेफर्ड एज ई नोड बी आरएनसी जो भी आरएनसी की और आपकी जो नोड बी की जो कैपेबिलिटीज थी दैट हैज बीन मर्ज्ड इन ई नोड बी और सम हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स योर कोर नेटवर्क so in the radio network you will only find E node B. Earlier there used to be two element, the hierarchy was like that. पहले BTS से traffic collect होता था, it used to go in the BSC, that was a kind of your RF switching element. And MSC was basically an overall BSC to BSC switching element. That was a difference. MME PGW is a packet gateway है, ये switching gateway है. This is a mobility management entity है. इसके अलावा और भी मैं element I am just covering in the later slides. So the so if you see on the left side, that was basically GSM and UMT's architecture. We had a circuit switch and packet switch domain. Then we moved towards your LT, that is referred normally called as a 4G, but not technically it is not a 4G as such, right? So when we you see the architecture from GSM EMTS 3G to 4G, you have basically E-Utron that is equivalent to your E-Node B networks, and you have a core one, EPC, right? The E-Utron is basically evolved Universal Territorial Radio Access Network. That was the term used for radio access network in case of a 3G scenario. 3G was basically referred as a UMTS network, Universal Mobile Telecommunication Service. जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी उसमें उस हिसाब से इसका नेटवर्क है और इसमें की डिफरेंस क्या है दैट वी जस्ट सी नाउ आई एम जस्ट समराइजिंग हाउ द आर्किटेक्चर इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ ए जो बेसिक टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट है हमारे स्विचिंग सर्किट स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग है हाउ मेनी पीपल आर एवर अबाउट सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग डिफरेंस यू आर अवेयर एनीवन एल्स या जो अपने पुराने स्विचेस होते थे PSTN like we used to have a basically like earlier we used to have a circuit switching. Circuit switching is basically I try to set up a path end to end. Like if Anil sir wants to speak to me, then I will be having a one dedicated path and time for a particular time it will be allotted to me. As long as I'm in conversation with me, we are having a dedicated path setup. That is a circuit switch. Like or if I have to speak to someone else. If Karasar have to talk to Venkateshwar, then there will be a separate path. So that was a basically circuit switch. So till the time we are in connection, I am using that particular path, right? उसके बीच में हम silent भी हो जाते हैं, hold भी करवाते हैं जैसे तो then it means it is a wastage of resource. Then we migrated to packet switching. अब internet protocol जो होता है उसमें क्या है कि whenever that is a kind of a virtual path. Whatever I want to communicate, my data will be converted into packet formats. And it will be transmitted to him through the router and all that. So there will be no dedicated path. Everything communication is going from one entity to another entity that is going in the form of packets, right? No dedicated path. It is going through best available direct path, right? So that is the difference between packet switching and circuit switching. Packet switching is supposed to be more efficient, but there were like initially there were issue related to the quality of service, reliability. Dedicated path hota to I know कि I can always whatever I want to communicate, I will be able to communicate him. Packet switching होता है तो then in some router I may lose some packets. So मैंने hello के बाद कुछ बोला है तो it may or may not reach. That was initially it was the best effort services, but later on we came out with several protocols in IP domain.
So that ensure as quality as good as like what we used to have in circuit switch scenario. Right? So we had BTS, BSC, 2G scenario, 2G and 3G scenario, then SGS and, and MSC, GMSC, that is for basically your packet, and this one was for circuit switching. Then came the 3G that were technically referred as a your UMTS by 3GPP. It used to have a radio network element was basically node B that was equivalent to your BTS. Then we had a RNC more or less equivalent to your BSC. Core element was more or less same. So as such, architecture was broad architecture wise, there was no difference. Functionality has improved, quality of service parameter has improved, coding methods has improved. That way algorithms have also improved. But the thing is, if you say कि कितने boxes है तो उसके terms में कितने physical element है उनके terms में मोटा मोटी it was the same architecture, right? Then coming to 4G, you see that 4G only has one element, E node B, in the radio access network part. Here, this 3G में actually दोनों था. 3G में बेसिकली आपके जो GSM वाला भी जो आ रहा है 3G में वॉइस एज वेल एज सर्किट दोनों था. वॉइस के लिए आपका जो था कोर एलिमेंट यूज होता था दैट वाज MSC एंड GMSC. और नहीं, MSC बेसिकली सर्किट स्विच. पैकेट स्विचिंग के लिए आपके जो GPR 2G में तो आप पैकेट देते ही नहीं थे प्रैक्टिकली. यू आर गिविंग ओनली SMS सर्विस. नहीं तो उसमें पैकेट स्विचिंग नहीं है ना फिर आपके 2G में. पैकेट स्विचिंग को कैटर करने के लिए यू यूज टू हैव एलिमेंट SGSN एंड GGSN जो GPRS नोड होते थे. नहीं, वॉइस को पैकेट स्विचिंग कर सकते हैं बट उसमें उसको वॉइस को पैकेट स्विचिंग नहीं किया हुआ था. उसको आपको डेडिकेटेड सर्किट स्विचिंग किया था. लाइक वी यूज टू सेटअप ए डेडिकेटेड पाथ. वी यूज टू अलॉट ए टाइम पीरियड और टाइम स्लॉट. पैकेट स्विचिंग इसलिए नहीं किया था. एक तो यह है कि उसमें जो रिलायबिलिटी होती है, आपने एक पैकेट भेजा, मैंने हेलो बोला, उसके बाद 4 वर्ड और बोले, एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स. वो फिर राउटर के नेटवर्क्स में जा रहा है. दैट में आल्सो गेट लॉस्ट. उस टाइम जो जो इनिशियल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स थे दैट वाज नॉट assuring me whatever I am speaking that has been converted into packet. हम्म. वो तो आपका GPRS वगैरह डाला होगा आपने पैकेट से. नहीं, 2G का पैकेट स्विचिंग नहीं है वो कह रहा हूँ. जो टेक्नोलॉजी है वो है, आप बोलो कुछ भी उसको, बट टेक्नोलॉजी बेसिकली सर्किट स्विचिंग फॉर 2G. उसका बाद आप GPRS वगैरह लाए हैं तब आपका वो MMS वगैरह चलता था. वो पैकेट वाला अलग डोमेन है, पर है वो 3G का ही पार्ट. हम्म. MSC में नहीं होता, आपका BSC में होता था. BSC में आपका एक एक वॉइस वाला जो डेटा वॉइस जो होती थी वो जाती थी MSC की तरफ. और BSC से जो डेटा होता था दे यूज्ड टू बी IWF फंक्शन, और जो फंक्शन होते थे वो जो डेटा वाला पार्ट जो होता था मोबाइल सब्सक्राइबर से, दैट यू यूज्ड टू गो टुवर्ड्स योर PDSN एंड ऑल दैट, राइट. GGS PDSN डेट उसमें CDMA में, इधर GGSN में. इंटीग्रेशन में नहीं. 3G and 4G you see it's entirely eh? You cannot migrate as such if that is the question. हाँ. Yeah, 4G will be separate network. आप जो 3G वाले पे जो वॉइस को सपोर्ट करते हो हैंडओवर्स को, दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ ए फॉल बैक सर्विसेज. वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. बट आई एम नॉट, आई कांट माइग्रेट फ्रॉम RNC एंड GGS adjacent to 4G network. And you see that there is no RNC
and you see there's no circuit switching from 4G onwards. जितना भी 4G LTE वगैरह में जो वॉइस जाता है, all is packet switched. From 4G onwards, you will not find any circuit switching concept. यूजर के लिए रहेंगे बिकॉज हम्म, हम्म, होगा नहीं, होता है। हो रहा है, आज की डेट में भी हो रहा है, बिकॉज वी हैव ए LTE सब्सक्राइबर व्हेन वी गो टू 3G डोमेन। यहाँ पे मोस्टली जैसे हमारे पास जियो वगैरह का भी होता है, लेकिन जब MTNL नेटवर्क में जाते हो या BSNL में जाते हो तो कॉल आपकी चलती है। आपका प्राइवेट ऑपरेटर का सिम लिया होगा, कई लोगों के पास होगा। हाँ, सो देयर इज a concept of like the standard supports there is a concept of service circuit switching fallback and all that. तो जब उसको यूई को 4G का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो एट द बैक हॉल पे IMS के थ्रू एंड ऑल दैट एलिमेंट, तो इट हैज बीन डिफाइंड कि वो उसको लैच कर लेगा। फिर जो 3G का नेटवर्क है, दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस हैंडिंग कॉल डिस्कनेक्टिंग। यू विल बी एबल टू गेट द सर्विस। फॉल बैक जो कनेक्टिविटी है, हैंड ओवर ऑप्शंस आर डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि एब्रप्टली आपने वहां किया और उसके बाद आप कहीं नहीं हो। 4G वाले में आपका HGSN से जा रहा है। जी जी। हाँ, EPC के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए 4G में खाली पैकेट स्विचिंग है। एक ई नोड भी है, जितने भी रेडियो नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क में जो एलिमेंट्स हैं, दे आर रेफर्ड एज ए ई नोड बी, एंड दोज आर द ओनली एलिमेंट्स। ठीक, थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। इसमें कोई डाउट? बेसिक आर्किटेक्चर्स फॉर सम इट में बी क्वाइट सिंपल, बट जस्ट टू कीप द IFAs आल्सो इन ऑन बोर्ड, और काफी टाइम पहले से पढ़ा होता है तो इसलिए। The next is 5G network. You see that 5G network is also architecturally similarly like what is there in 4G. It's also like all packet that radio network element is referred as a G node B, and 4 is referred as NG core, right? तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे एलिमेंट कम हो गए और सर्किट स्विचिंग से हम पैकेट स्विचिंग की तरफ माइग्रेट कर दें। दैट इज लाइक टेक्नोलॉजी और द पैराडाइम। एनी डाउट? वेरी। पार्डन? क्या? हम्म। नहीं, पर डेटा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, यू कैन हैव ए सेपरेट सेशंस। ऐसा नहीं कि वॉइस कॉल की तो आपका डेटा चलेगा आप। हम्म, हम्म। नहीं, पर जैसे आप देखोगे हम जब वॉइस कॉल पे होते हैं, व्हाट्सएप पे हम किसी को फॉरवर्ड करना होता है, फॉरवर्ड भी करते हैं। नहीं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस कि हम जब वॉइस कॉल पे, उसके 4G की वॉइस कॉल पे ही होते हैं, दैट चलता है। मतलब आई डोंट नो, बट व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप भेजते हैं, लोग बाग उसी को देखते हुए बात भी करते रहते हैं कि हाँ ये फाइल मेरे को मिला है कुछ। हाँ, सो बट लाइक टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स। नहीं नहीं, उस पे सेम पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है अभी। वो इशू नहीं है सच, वो कुछ और इशू होगा उसका, पर नहीं ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, वो यानी वो अपना लॉजिक तो लगाता ही है ना आदमी, इस वजह से हो रहा होगा। हाँ, यू कैन ट्राई। चलता है। आपका व्हाट्सएप चलता है, भेजते हो, हाँ आ गया, मिल गया, देख गया, इस पे ये पैरामीटर एंड पैरेलली आपका कन्वर्सेशन भी चलता रहता है, और वो व्हाट्सएप पर आप वो देखते भी रहते हो कि क्या। हम्म,
वो तो आपका एप्लीकेशन में आपने डिफाइन किया ना कि आप एट ए टाइम तो एक ही एप्लीकेशन यूज करोगे। पर जैसे फाइल वाला है या व्हाट्सएप वाला है, वो अगर सिर्फ व्यू वाला ऑप्शन है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है। You have a speaker and all that system are common shared system. So that is a restriction from your application and mobile handset में जो application है. So these are some of the like terminologies that you may be like encountering it. और लोग कहते हैं 2G है 3G है, कोई कहता है MT है। तो ये सब क्या है? That is like just one slide which gives you an overview. Basically ये जो 3G 4G 5G है, ये basically मार्केटिंग नेम है। जो 3GPP यूज करता है या मार्केटिंग नेम है। And these are basically your ITU name. जो what is ITU? How many people are aware? सबको पता है ना? हाँ? ITU is basically a UN body of it's a UN body which is dealing with telecommunication, International Telecommunication Union. तो जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, दैट इज बीइंग नॉर्मली डिस्कस और एंडोर्स बाय ITU. So ITU defines technical parameters for different technologies. So UMTS, HSPA, those are basically the terminology that is defined by ITU. ऐसे ही LTE एडवांस है, 5G है, या देखिए IMT जो शुरुआत में था वो था IMT 2000 में, it was expected to come out and that was referred as like 3G in marketing name, International Mobile Telecommunication 2000। जब ठीक है, तो ये 2000 से पहले की बात है कि 2000 में एक स्टैंडर्ड आएगा जिसको IMT 2000 कहा जाएगा। उसमें फिर जैसे 2 Mbps की मैक्सिमम डेटा रेट एक्सपेक्ट की गई थी, 384 की लाइक व्हीकुलर, बाकी व्हीकुलर स्पीड पे एक्सपेक्ट की थी। वो वाले पैरामीटर डिफाइन किए गए थे जो हमें उस टाइम मिलते थे। दैट वाज रेफर्ड एज जो 3G जो सपोर्ट करता था वो रिक्वायरमेंट वर डिफाइंड इन IMT 2000। So what ITU does is basically ITU specify a broad initially vision document, then it comes out with a technical requirement in terms of इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी लेटेंसी होनी चाहिए, ये डेटा रेट चाहिए, इतने सब्सक्राइबर सपोर्ट है। देन द वर्ल्ड वाइड जो SDOs होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे कम आउट विद द स्टैंडर्ड। Okay, this is my standard, this is my specification, and it is meeting with your requirement. Kindly endorse it as a IMT 2000 technology. उस टाइम हमारे पास 7-8 टेक्नोलॉजी थी अलग अलग, जैसे कोडेक थी, IWC एंड ऑल दैट, राइट। अब CDMA भी था उस टाइम, CDMA 2000 ऑल्सो। देन दे केम आउट विद enhanced IMT advanced, IMT 2000 that was equivalent to 3.5G. Then they defined IMT advanced जो कि 4G था। 5G को जो हम यूज करते हैं जेनरिक नेम 3GPP वाला, दैट इज IMT 2020, राइट। 2020 में एक्सपेक्टेड था, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 5G नेम। 3GPP, you people are aware? No. 3GPP is basically a third generation partnership project. GSM कौन सी, GSM का SDO कौन था? GSM is a standard, right? Somebody might have written or specified it. Which organization? ETSI, right? ETSI was the body, European Telecommunication Standardization Institute, which came out with the GSM standard, European standard, right? So that was the standard for GSM. तो उस टाइम काफी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। देन जो लॉबीज थी, स्टेक होल्डर्स थे, दे डिसाइडेड कि नहीं, 8-10 स्टैंडर्ड होने से क्या होता है कि यू डोंट गेट द एडवांटेज ऑफ लाइक व्हाट इज इट, if you have a common standard and more production is there against that standard, then price is reduced, right? So they say no, let's have a kind of a one or two uniform standard, तो सभी उसी अगेंस्ट बनाएंगे and advantage of bulk will be there. You will get a reduced cost because everybody is, as well as you have an advantage of universal roaming, right? CDMA 2000 was very good technology, but it failed primarily because its footfall was less. क्योंकि वो कहीं कहीं पे था CDMA 2000, GSM ऑलरेडी सब जगह था।
जीएसएम वाले 3G की तरफ गए तो वो चलता रहा। लोगों को जब जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री या इंटर ऑपरेटर, दे वांटेड कि हमारी रोमिंग शुड बी स्मूथ। और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी, हर मतलब आइलैंड में, हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग रेडियो टेक्नोलॉजी आएगी अगर, तो दैट मे नॉट बी दैट सक्सेसफुल। What ITU, what ITU does is basically they specify only vision requirement and technical requirement. मोटा मोटी रिक्वायरमेंट बताता है वो बस। उसके बाद जो एसडीओ है वर्ल्ड वाइड, ईटीएसआई है, जैसे यार डेक्ट का है, सीसीए है, एरिब है, अपने जैसे इंडिया में क्या मोरलेस कॉपी पेस्ट है ये इसका है, टीएसडीएसआई जो अपने इंडिया में हम बना रहे हैं, ये दे कम आउट विद देयर ओन स्पेसिफिकेशन मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट। तो इसलिए उनके नाम भी अलग अलग। तो 3GPP जैसे अपना नाम जो है, अपना नाम बताता है कि ये 4G 5G है। स्टैंडर्ड का मतलब बेसिकली है कि कॉल हैंड ओवर कैसे होगी। दैट्स नॉट ए सिंपल। What all parameter has to be taken from the UE, what all parameter will be taken observed by the UE, which will be transferred to your E node B, how they will be processed, how the algorithm of call handover will be handled. So those are the detailed specification which each SDO will be having a unique approach. किसी का efficient होगा, किसी का नहीं होगा. So there they will compete, right? So these are basically 3GPP name. 3GPP is basically like जो GSM की तरफ से जो कंसोर्शियम बना, उस टाइम 6 SDOs थे, एरिब, सीसीए, टीटीए and even ETSI also was there. TSDSI has recently joined. Now 3GPP is comprising of 5 organizing partners. So they came out with 3GPP standard जो कि आपका UMTS, U-Tran जो उसको कह रहा है, UMTS कह रहा है, right? LT advance was equivalent to your 4G. So basically like LT is not technically specific, speaking in terms of ITU terminology, ITU benchmark, LT is not a 4G technology. It is LT advanced, which is meeting the requirement of 4G or IMT advanced. Then came the 5G, which is ITU referred it as IMT 2020. Now we are working on 6G, which is ITU is referring as IMT 2030. ये हमारे जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके जो रेडियो एक्सेस, रेडियो के नाम है, ये कोर के नाम है, सिस्टम के नाम है। ईपीसी, ईपीएस 5G के लिए जो रेडियो नेटवर्क टेक्नोलॉजी, दैट इज रेफर्ड एज एनआर, न्यू रेडियो कोर, 5G कोर। फॉर 6G like still under consideration how they will be defined, what will be the terminology and all that is there. Any doubt? So this basically specifies ki that for the same technology you may be having a different terminologies. 3G, 4G, 5G जो terms are they are from the context of मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। जो जो स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली आईटी की तरफ से। नहीं, आईएमटी एडवांस जो है आपका, इसको फॉलो कर रहे हैं, बट द थिंग इज आईएमटी एडवांस एक आईटी ने आपको वो बता दिया, दिस टेक्नोलॉजी विल बी क्वालिफाइड एज आईएमटी एडवांस्ड और 4G टेक्नोलॉजी इफ इट मीट्स दिस पैरामीटर। अगेंस्ट दिस पैरामीटर यू हैव ए सेवरल टेक्नोलॉजी विच आर कंटेंडिंग। द मोस्ट पॉपुलर इज योर ये 3GPP वाले स्टैंडर्ड्स, लाइक IEEE के जो स्टैंडर्ड्स, या हमारे यहाँ सब जीएसएम वाला 5 जो था 3GPP वाला। नहीं, उसमें एक्चुअली उसमें क्या है कि IIT मद्रास वाज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट सम फीचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर रूरल एप्लीकेशन। हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट बड़ी थोड़ी सी अलग होती है। हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट वैसी नहीं थी कि, नहीं वो स्टैंडर्ड्स में आ गया है। इक्विपमेंट तो ठीक है कि अब तो खाली मेड इन इंडिया ही बना रहे हैं हम। सस्ता इसलिए कह रहे हैं उसमें क्योंकि उसमें यह था कि आवर फोकस वाज मोर ऑन डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस रादर देन द ट्रैफिक कैपेबिलिटी। देयर आर टू एस्पेक्ट इन रेडियो। या तो आप डिस्टेंस बढ़ाते हो
तो पर नंबर ऑफ यूजर ट्राई टू हैव ए लो। बट मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होता है, अर्बन एरिया होता है, वहां पे आपकी जो कवरेज एरिया है, उसी कवरेज एरिया में आपका ट्रैफिक भी मिल जाता है, इतना कि आप उसको दूसरा बीटीएस लगाना ही पड़ेगा, ई नोड भी वगैरह। बट रूरल एरिया में इश्यू क्या होता है, उसकी कैपेसिटी तो होती है, हैंडलिंग ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, बट रेंज ज्यादा चाहिए होती है। उसी उसी के लिए उन्होंने वो किया था, ताकि हमें रिपीटर्स जो है वो क्या कहते हैं, ई नोड भी या बीटीएस जो है वो जल्दी ना लगाने पड़े, वी विल टेक इट एट ए लॉन्गर डिस्टेंस। So that has been specified, included in the standard. Whenever you place the order, technology is there. The thing is what you want to buy. है। हाँ, सेलर दे रहा है, दे रहा है, आज की डेट में दे रहा है। इफ यू वांट इट इज अवेलेबल। सबका तो मैं नहीं कह सकता, बट दैट यू कैन आस्क विद फ्रॉम डीके अग्रवाल सर, नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे ना, बिकॉज दे आर प्लेसिंग द टेंडर। बीएसएनएल तो वो जो सी डॉट बना रहा है और जो तेजस बना रहा है वही ले रहा है। नहीं, लाइट तो एक बेसिकली एक फीचर है उसका। दे आर सो मैनी पैरामीटर, जैसे स्मार्टफोन बोलते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें एक फीचर और ये है। सो फॉर रूरल एप्लीकेशन वेदर दे आर स्पेसिफाइड इट और नॉट, आई एम नॉट अवेयर, दैट वी कैन चेक इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीकर्स, राइट। टाइम हो जाए तो बता देना, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। आई कैन, अभी आई विल देन स्पीड अप अदरवाइज थोड़ा सा। So this slide is basically, so I will basically try to speed up, I think 40 हो गया है। सो यू सी, जब हमने एलटी के टाइम जब आए, 4G के टाइम आए, तो हमारी प्राइमरी जो फोकस था वो था डेटा रेट और कैपेसिटी पे। वायर एंड कैपेबिलिटी में इसकी डेटा रेट, जैसे जो हमें फाइबर पे स्पीड मिल रही है वो मुझे उस पे भी मिल जाए, वायरलेस कैपेसिटी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो। यू सी लाइक देयर एग्जांपल ऑफ फिनलैंड, कि फ्रॉम लाइक 2007 onward your voice capacity started reducing compared to your data cap traffic. But when we moved to 5G, they came out with the different usage scenario और three different type of requirements. आज की डेट में आपसे कहा जाए कि कोई नई मोबाइल टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप क्या क्या उससे उम्मीद लगाएंगे, व्हाट ऑल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट इट शुड सपोर्ट। नहीं, टेक्निकल टर्म्स में कौन सा, वो तो अलग अलग तो हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, लो लेटेंसी। पार्डन, अभी तो फ्री है। ओके, ठीक है, और लो पावर कंजम्पशन। हम्म। ओके, गुड। ओके। हम्म। परफेक्टली राइट। सो like some of the requirements that you specified are available in 4G also। आपका जो प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि भाई मैं लगाऊं चल जाए, तो 4G से ही जो है आपके LTE ऑनवर्ड्स साउंड कैपेबिलिटीज आर देयर, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन नेटवर्क देयर, एवरीथिंग इज मोर or less सॉफ्टवेयर। आपके अपने ऐप में नेटवर्क में आप उसको डालोगे ई नोट बी को, इट विल ऑटो कॉन्फ़िगर इटसेल्फ, दोस फीचर्स आर देयर। जैसे हम जो है ना पेन ड्राइव डालते हैं, अपने आप ही सेंस कर लेता है और फाइल को पॉपअप कर देता है कौन सी फाइल खोलनी है। सो the standards are specifying all those requirements. So my e-note B is also a plug and play kind of thing. So similar, whatever you are asking, that is also available in from 5G onwards. वो एडवांस वो कैसे आया मैं कवर करूंगा, बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, आई विल टच दैट पॉइंट ऑल्सो। नहीं, 15 मिनट क्या करना है वो मैं बता, उसमें इशू उसमें ये होता है कि, चलिए आगे आते हैं, एक बताते हैं, पहले 5G सिनेरियोस को बात करते हैं। न, नहीं,
नहीं, नथिंग कम्स फ्री। अगर फ्री में आएगा तो टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगी फिर। देयर हैज टू बी ऑलवेज एन इंसेंटिव। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट बंद कर दो तो आप काम भी बंद कर दोगे शायद। राइट। So they have come out with the three type of usage scenario. First is with respect to high speed, जिसमें बहुत ज्यादा डेटा आपको चाहिए. Second is your latency requirement as well as reliability requirement, जहाँ पे बहुत ज्यादा reliability और low latency is required. Third is of late you might have know that कि IoT type of scenarios are coming. So many small devices जो कि communication के लिए नहीं है, but they have to be there in the network. IoT टाइप वाले सिनेरियो जो कि वहां पे मशीन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सो विद दिस दे कम आउट विद द थ्री टाइप ऑफ यूसेज सिनेरियो. EMBB, enhanced mobile broadband, URLCC, ultra low reliable and low latency, and third is MMTC. So I will quickly cover some example because I think time is short. So EMBB is basically like जहाँ पे आपकी फोकस जो है वो डेटा रेट, डेटा हंग्री एप्लीकेशंस पे है. You have this high definition streaming, cloud enterprise, AR, VR, media, holographic conferencing, all this. So ये सब एप्लीकेशन वो है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कैप्चर करते हो, हर मोमेंट कैप्चर करते हो. देयर लॉट ऑफ डेटा जनरेशन टू बी transmitted, right? So those are the application of your EMBB. Then you have another application scenario, URLCC, ultra reliable low latency. इसमें जैसे है रोबोटिक सर्जरी है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, AR VR. इसमें मेन फोकस ये है कि कनेक्शन हैज टू बी वेरी रिलायबल. ऑटोनोमस व्हीकल जैसे एक एप्लीकेशन है, तो मेरा कनेक्शन हैज टू बी रिलायबल एज वेल एज लेटेंसी शुड बी लो. ऑटोनोमस व्हीकल है या रोबोटिक सर्जरी में है, तो मैंने जैसे भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया रिमोटली बैठे हुए, उसने कट लगाया है सपोज, और बाय चांस नेटवर्क हो गया कट, तो उसको वो भी कट हो गया बेचारा. हाँ, तो इसलिए लेटेंसी भी कम होना चाहिए एज वेल एज नेटवर्क हैज टू बी ऑल्सो रिलायबल. चाहे वो ऑटोनोमस व्हीकल हो, जब व्हीकल ऑलरेडी में चल रहा है, जो भी पैरामीटर वो कैप्चर कर रहा है, it should be able to communicate and get the response how to react that. So those type of applications are falling under URLCC. Next is massive machine type of communication. Best example is smart cities. Right? Smart cities में आपके there are hundreds of smart energy meters are there, parking meters are there, water meters are there. They all have to somehow communicate with through the network to the application server. So that is a third type of scenario. सॉरी. लॉजिस्टिक ट्रैकिंग है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है. स्मार्ट एग्रीकल्चर में बेसिकली लाइक विद द ड्रोन एंड ऑल दैट, और विद द सेंसर यू आर एबल टू सेंस कि कौन कहाँ पे मॉइस्चर लेवल क्या है, कैसा है. those are different applications that are coming in picture. This I will skip. This again we have discussed. This is basically the slide which provides you the comparison of 4G and 5G. Like what is the, if you see the peak peak data rate from like in 4G it was 1 Gbps, in 5G it is 20 Gbps. Spectrum efficiency, it is 3 times more efficient 5G technology. Mobility, like in case of 4G we are specified as a 350 kilometer per hour. In case of 5G it is 500 kilometer hour. And normally it is driven by the speed of bullet train. कि बुलेट ट्रेन में जो बैठ के सफर कर रहा है, you should be able to have continuous conversation. Connection density, like latency is one parameter. Latency has been specified as 1 millisecond. जो response time है वो एक उसका. Connection density is 1 million device per 10 lakh एक square kilometer में. That is a requirement that is coming out of your MMTC type of smart, जैसे smart city वाले application है उससे driver. Pardon? This is 5, 6. हाँ, उसमें 5, तो यहाँ पे 1 million होगी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया. Number of devices that can be connected or supported by your node भी जो एरिया में है
वो तो होता है बिकॉज उसका आप उसका बैंडविड्थ थोड़ा कम रखते हो, फीचर उस तरह से सपोर्ट होते हैं, और वो इंटरमिटेंटली कम्युनिकेट करता है, तो शेड्यूलिंग इज सच दैट यू कैन सपोर्ट इट। all has happened because you have migrated towards your packet switching। नेटवर्क एनर्जी एफिशिएंसी है कि जो आप डेटा रेट दे रहे हो, पर यूनिट डेटा रेट कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो टोटलिटी में, एनर्जी का। सो दैट आल्सो हैज बीन हाँ, ये यूजर एक्सपीरियंस डेटा डेटा दैट इज मोर प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज द लाइक मैक्सिमम जब एक ही सब्सक्राइबर है और आपको फुल बैंडविड्थ डेडिकेट किया है। बट एक्चुअल सिनेरियो में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट। उसमें क्या होता है कि वो इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है कि इतने इतने लोग पेरीफेरी पे होंगे, इतने सेंटर में होंगे, तब एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल स्पीड मिलेगी। क्या? अब लोगे तो दोगे अगर उसको आप but standard supports it if you need it, the thing is they they may not be actually like going to the one core network to another core network। हम्म। नहीं, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, इससे ऊपर जाने में कोई नहीं रोक रहा। नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं मिलती है। नहीं, आ- आप जो कह रहे हैं 1 GB, बेसिकली ऑल द सब्सक्राइबर विल नॉट बी ऑपरेटिंग एट द पीक थिंग। तो बैक ऑल हम जब सर्किट स्विचिंग में जब डिजाइन करते थे तो रेशियो लेके चलते थे। और जो हाँ, नहीं बैकऑल का मतलब स्टैंडर्ड्स में तो है। अब आपके पास नहीं है या यूजर रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग थिंग। बट देयर आर सम एप्लीकेशन जिसमें क्या होता है कि लोकल ट्रैफिक जनरेशन इज देयर। मेरा ई नोट भी है सपोज कीजिए, हम बात की स्लाइड कुछ मिस कर देंगे, जो डाउट है वो भी कवर कर लेते हैं। तो जैसे कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि काफी, या आपका ये क्या नाम है, स्टेडियम में आपने लाइव स्ट्रीमिंग चला रहा है, कोई देख रहा है भेज रहा है, सो लोकल जनरेशन ऑफ ट्रैफिक विल बी टू मच, and you may be putting some server which is close to that e node भी, edge node जो edge computing कहते हैं उसे। So you will be processing, doing, and it will be acting as a cache, so most of the communication will be from your and e node b to that edge computing device। You are not going, except for the signaling part, you are not going to the core, एक बैक कॉल दूसरे बैक कॉल तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो उस तरह के एप्लीकेशंस भी, so there it may be used। In the focus area, like till 4G, the focus area was more or less, you see, one on speed and throughput। लोगों का यही होता है कि डेटा मिल जाए, स्पीड मिल जाए। ब्रॉम बट 5G में बेसिकली we have another two dimension added कि latency delay has also become important parameter while coming out with the new technology, as well as connection density। This will escape। So this is the thing that was tracking that in case of 4G, in the radio network, you all only have E node base, right? एंड हाँ, सिंगल साहब देखिएगा, ये ई नोड भी जो है आपस में कनेक्टेड है, और दे ऑल आर ऑन आईपी डोमेन, आईपी एमपीएलएस नेटवर्क पे। सो द स्टैंडर्ड सपोज कीजिए ये वाला ई नोड भी डाउन हो गया आपका बाई चांस, सो नियर बाय ई नोड भी विल इमीडिएटली कम टू नो नाउ दिस हैज गॉन डाउन।
We have a smart antenna here. They will try to optimize their direction such that कि यहाँ का जो सब्सक्राइबर है वो भी थोड़ा इससे कवर हो जाए, इधर का जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ा इधर से कवर हो जाए, तो जो आउटेज एरिया है वो मिनिमल हो जाता है। तो सेल्फ हीलिंग कॉन्सेप्ट एक ये भी है ना। हाँ। यस। ऑटो आप देखिएगा यहाँ पे 4G नोट भी का लगाया है। इट हैज बोथ फीचर। इट कैन बी रिमोटली tilted as well as mechanically tilted, आई थिंक। हाँ वो मतलब उसके वो, यस, यस, दैट यू कैन। इलेक्ट्रिकल चीज जो होता है, अब यहाँ पे आप अगर टाइम मिलेगा तो हम दिखा देंगे हम। हम्म। हम्म। दैट वो बेसिकली वहां पे के छोटे छोटे एंटीना बहुत, हाँ। हम्म। यस। तो आपकी जो एक रिक्वायरमेंट थी ना कि वो अपने आप ही कुछ कुछ ठीक कर ले, उसको सेल्फ हीलिंग कॉन्सेप्ट और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नेटवर्क कहते हैं। तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट। यस। तो आउटेज वगैरह कम हो जाती है ना, ऑल दैट, राइट। देन दीज आर ऑल एलिमेंट, आई थिंक it will become bit so these are the different component of the core element जो इसमें MME, इसमें ये वाला स्लाइड आप देख लीजिए। हाँ। 4G में क्या है, बेसिकली यू हैव ए कंट्रोल प्लेन एंड यू हैव ए यूजर प्लेन। यहाँ पे जो जिसपे पैकेट जा रहे हैं, आपका ट्रैफिक जा रहा है, उस वाले प्लेन में अभी भी कंट्रोल एंड यूजर प्लेन दोनों हैं अप टू 4G नेटवर्क। बट इफ यू गो टू 5G, 5G यू सी दैट यूजर ट्रैफिक इज यूजर प्लेन, जो यूपीएफ है वो यूजर ट्रैफिक करता है, खाली वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर योर कंट्रोल फंक्शंस। तो दोनों अब इंडिपेंडेंट है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सर्विसेज इन केस ऑफ 5G। Another feature is basically like the three features that are there in 5G architecture is cups, control and user plane separation. In 4G, we see that user control plane separation strictly अलग-अलग नहीं था, right? Another is service based architecture, like different functions has been defined, like अभी जैसे BTS होता था, BSC होता था, या स्विचिंग में जैसे SMX, जिन्होंने PSTN में काम किया, SMX होता था, SMSC होते थे E10B वगैरह में, या अपने इधर भी जो भी GPRS, GGSN ये सब होते थे, दे यूज टू बी काइंड ऑफ ए हार्डवेयर इक्विपमेंट। आपने एक एंटिटी को कुछ डिफाइन कर दिया है तो मोर लेस वो GPRS बना दिया तो GPRS ही रहता है वो, एक तो GGSN बना दिया है तो, या इनोड भी पर इसके इसमें क्या है कि एवरीथिंग इज मोर लेस इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड सॉफ्टवेयर। एक सिंपल सर्वर, मेरा जो भी सर्वर है ब्लेड सर्वर, उस पे मैं सारे नेटवर्क एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर आई कैन डिफाइन। So my core may be only in one rack if my traffic requirements are not high. So that is the idea of service based architecture and network softwareization. And I think this may be, ये जो 4G का रेडियो है, रेडियो था कोर से कनेक्ट हो रहा है। When I come to the 5G network, my radio access network is basically also getting separate as a user plane and control plane. So that is like pictorially that has been shown what I have told there. Another beauty is that till 4G, like I have a core element, BBU and RRU होता है, जैसे ये बेसिकली ये आपका ई नोड भी का ही पार्ट हो गया है। बट 5G में व्हाट हैपेंस, आई कैन स्प्लिट द फंक्शनलिटी ऑफ माय ई नोड बी, जो अभी उस टाइम जो ई नोड भी था, अभी जी नोड भी है, उसको मैं लेयर वाइज फंक्शनलिटी स्प्लिट कर सकता हूँ। सम फंक्शनलिटी आई कैन मूव टुवर्ड्स योर वन लोकलाइज एप्लीकेशन, जिसको सेंट्रल यूनिट कहते हैं। कुछ कैपेबिलिटीज को आई कैन decentralized, that is called as a distributed unit. We have a RRU। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी। एवरीथिंग नीड नॉट गो टू कोर नेटवर्क। आपकी कुछ चीजें जो जैसे गेम खेलने होते हैं, जो फास्ट गेम्स वगैरह होते हैं, वो आप यू विल ब्रिंगिंग टुवर्ड्स योर एज साइड, जो कि आपके ई नोड बी के पास ही आप मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यू विल बी सेंडिंग ओनली कंट्रोल सिग्नलिंग पार्ट टुवर्ड्स कोर। सो दैट्स व्हाई फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। थोड़ा टेक्निकल है बट एनीवे।
Similarly, like we have a concept of फ्रंट हॉल ऑल्सो. पहले हमारा बैक हॉल ही होता था और एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती थी. तो आपका जो इस DU है या कोर है, फ्रंट हॉल इज बेसिकली यू आर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट टुवर्ड्स टावर, RRU के बीच का. ये आपको फोर्थ फ्लोर पे लगाया है हमने वहां पे ना भी लैब में. सेकंड हाफ में आई थिंक विल ट्राई टू वी कैन शो इट. दिस इज अनदर नेटवर्क स्लाइसिंग इज अ कॉन्सेप्ट जो कि आपके एक ही डिवाइस में. अब आपने कहा कि मेरे को अलग अलग एप्लीकेशन रन करने हैं. Some application may be requiring URLCC type of SLAs or service level requirements. इसमें वो reliable भी होना चाहिए, latency. Parallelly, I may be accessing some application और कोई मूवी भी देख रहा हूँ. So that will be falling towards your EMBB type of scenario. ठीक है. और कुछ जो होता है कि वो कार में, आप कार में बैठे तो कार से वो इंटरेक्ट भी कर रहा है कार के डिवाइसेस से भी. तो 5G supports at a time from the same UE 8 type of connections, and all 8 may be having a different type of service requirements. तो जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि मेरा एक चलता है दूसरा बंद हो जाता है, बट एंड दैट इज पॉसिबल. तो राइट फ्रॉम माई यूई हैंडसेट से लेके जो भी एप्लीकेशन सर्वर है उसके लिए मुझे डेडिकेटेड एक पाथ मिलता है एंड टू एंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे वाले में क्या है. तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयराइज्ड. आई कैन बेसिकली आई एम मेकिंग ए पाथ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली. वो तो क्या नॉर्मल आपके वॉइस में आ जाएगा. वो तो सिंपल पैकेट जैसे आपका LT का जैसे वोल्टेज जैसे होता है, तो एक वो तो एक ही एप्लीकेशन में चला जाएगा, वॉइस एप्लीकेशन में. उसके मतलब वो एक वॉइस एप्लीकेशन वाला स्लाइस बन गया आपका, सॉरी. पर पैरेलली आप उसमें जैसे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए आपको ये. हम्म. 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 ये वो तो फॉल बैक वाला ऑप्शन रहेगा बस. उसमें आपका नहीं बेसिकली होगा, वो IMS के थ्रू होगा. हम्म. नहीं वो नहीं, जो संजीव जी कह रहे हैं ना, उसमें ये है कि आपके पास अगर मतलब मेन तो ये है कि आपको एक्सेस कैसे करेंगे आप. अगर आपके पास 2G का फोन है, नहीं पर आप उसको जब 5G नेटवर्क में जाएंगे तो 5G को आप रेडियो एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे ना. आज जब वो नहीं होगा तो फिर. हम्म. 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 आपका बेसिकली जो 4G वाला फोन है वो तो चला जाएगा. वो तो चला जाएगा. पर अगर 2G वाला फोन है तो वो क्या एयर इंटरफेस सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मेरे फोन. हम्म. तो अगर वो उसी उसी डोमेन में ही है तो कोई इश्यू नहीं है. कोर में किस लिए. नहीं, 4G का BTS है तो 4G से तो 2G में फॉल बैक तो हो जाएगा. पर 4G वाले उसमें आप 2G वाला हैंडसेट जो नहीं चले, आप बेसिकली नेटवर्क को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं ना. नेटवर्क को एक्सेस करने के बाद तो क्या IMS के थ्रू आपका फॉल बैक एंड ऑल दैट कैन बी सपोर्टेड. हम्म. नहीं वो पिक्चर में आएगा ही नहीं ना. वो तो अलग ही आपका IMS के थ्रू कनेक्ट होता है जब भी होता है, टू बिकॉज दैट इज ऑल सर्किट स्विचिंग. उस वाले को जब आप कनेक्ट भी करना चाहते हो ना इधर इस नेटवर्क से, तो IMS के थ्रू आते हो. हम्म. नहीं नहीं, पर उसको आप उसके हैंडसेट को किससे चलाओगे. हम्म. कोर क्या बेसिकली MSC है. हम्म.
नहीं नहीं, वो आईएमएस के थ्रू ही आता है, क्योंकि वो प्योर कोर है, वो मतलब ये प्योर सर्किट स्विचिंग है, ये प्योर पैकेट स्विचिंग है। सो वेन एवर अवर जैसे वोल्टी वगैरह भी जब होता है, तो वो आईएमएस का रोल होता है उसमें। मतलब एक एक इंटरफेस एलिमेंट आपको चाहिए होता है, जो कि सर्किट स्विचिंग से इधर लाता है। आप बीएससी को, हाँ, तो बीएससी को सीधा आप पैकेट वाले में लाएंगे, तो भी बेसिकली एमएस, वो एमएससी वाली कैपेबिलिटी आपको आईएमएस में डालनी पड़ेगी। नहीं, बट बिकॉज 4G 4G का जो कोर है, दैट विल एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन इन पैकेट फॉर्म्स, विच योर बीएससी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। कंपैटिबिलिटी के लिए जो है, जो मैं समझ पाता हूँ, जब तक मुझे नहीं मिलेगी वो उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन, देन इट्स नो यूज। राइट, हो गया। चलो। सो वी हैव अ फ्रीक्वेंसी बैंड। अच्छा, इसको हम, इसको भी स्किप कर देते। अनदर टर्म आई विल जस्ट से, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मैसिव माइमो, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, which which is like, as on date you see, जो 2G 4G में आपका जो एंटीना होता है, उसकी कवरेज इस तरह से होती है, एक ही एंटीना की कवरेज होती है, पूरा इस तरह से आता है। When I go in the frequency ranges of 4G and 5G, I am able to have a different beams. अब एंटीना जो है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये जो एंटीना आपकी, सपोज कीजिए आप, हमारे पास 3G 4G में था, अगर इस साइज का था, तो व्हेन आई गो टू द टेक्नोलॉजी इन गीगाहर्ट्ज रेंज, जो कि 4G 5G में ऑपरेट हो रही है, सो आई विल बी हैविंग सो मैनी एंटीना एलिमेंट, एंड each element, this element is as flexible as this element that used to be there earlier. So I can control different sub antennas, and I can make a beam. So that's why I'm able to achieve the beam formation. Another term is standalone and non-standalone when we go to migration thing, right? कौन सी? हम्म, इसमें बेसिकली क्या है, इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, FR1 FR2, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 एंड फ्रीक्वेंसी रेंज 2। FR1 बेसिकली आपका जो ये अपना 7, हाँ, फ्रीक्वेंसी रेंज 410 से 7121 जो मेगा से 7.2 गीगाहर्ट्ज तक की है, इसको FR1 फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। और 24 से लेके 52 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज जो है, उसको FR2 बोलते हैं। FR1 वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, मोस्टली वो आपके पेयरिंग डोमेन में काम करती हैं, बिकॉज दैट इज फॉर ए काइंड ऑफ ए डुप्लेक्स काइंड ऑफ थिंग। बट जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेंज है, दैट इज नॉर्मली नॉट ऑफर्ड इन ए पेयर, उसमें आपका खाली पैकेज जो डाउन लिंक और अपलिंक दोनों पॉसिबल होते हैं। Pardon? Yes. So basically, as you move towards 5G and high frequency range, your E node B coverage is like your access point, Wi-Fi के access point होते हैं ना जैसे। But we have to go to high frequency range because we need a high data support. और डेटा के लिए क्या चाहिए, मुझे बैंडविड्थ चाहिए। बैंडविड्थ मुझे अवेलेबल है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में। देयर आई कैन गिव ए गुड बैंडविड्थ टू द यूजर और टू द नेटवर्क। हाँ, रीच का होगा। सो दैट्स व्हाई इन 5G सिनेरियो यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रीट फर्नीचर इज अनदर वर्ड दैट इज यूज, कि आपके हर ये बस स्टैंड के ऊपर है, पोल के ऊपर है, यू विल हैव टू पुट ऑल दोस पॉइंट्स। इसीलिए वो जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट जैसे होता है ना, मतलब इसी तरह आपको बहुत सारे चाहिए होंगे, ट्रूली आपको वाइड कवरेज चाहिए। दैट इज इशू। बट नहीं, 3G और 6G वाला तो दे रहे हैं अभी। FR2 में अभी नहीं है, FR1 वाले में ही है अभी। आई थिंक द नेक्स्ट स्पीकर इज वेटिंग है। सो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में होता है कि आपका जैसे पूरा का पूरा कोर एंड रेडियो एक ही टेक्नोलॉजी का है, सिंपल टर्म्स में। जो कि जियो जैसे करता है कि 5G का कोर भी लगा दिया, 5G का रेडियो भी लगा दिया, दैट इज रेफर्ड एज स्टैंड अलोन नेटवर्क। पर जो बाकी ऑपरेटर जिन्होंने 4G का नेटवर्क लगा रखा है, वो माइग्रेट करते हैं धीरे धीरे, कि पहले 5G का कोर लगाया, उसको 4G के रेडियो से कनेक्ट किए, नए 5G के भी लगा रहे हैं बीच बीच में।
So basically, you are existing with the two different technology, 4G as well as 5G radio. So that is referred as a non-standalone option. Mostly, initially, the operator were going for the NSA, but of late, people are start going towards standalone mode also. ये वही है और अक्टूबर में लाइक इंडिया लॉन्च 5G इस ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 मंथ्स. हम्म. 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 नहीं, यूजर इनिशिएट ऐसे नहीं. यूजर का मतलब एज ए मोबाइल यूजर आई विल नॉट इनिशिएट, पर माई डिवाइस में कम्युनिकेट टू द नेटवर्क कि आई एम इन दिस रेंज. नहीं नहीं, बीटीएस डोमेन नहीं रहेगा ना. द थिंग इज द लोकेशन, ऑल द पैरामीटर ऑफ द यूई जो मोबाइल डिवाइस का है, कि उसको किस डायरेक्शन से कितना सिग्नल मिल रहा है और कितनी एरर आ रही है, वॉट एवर डेटा आई एम रिसीविंग, व्हाट इज द एरर रेट इन दैट. और मुझे जो फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट शेड्यूलिंग है वो एडजस्टमेंट से कितना है. ऑन दैट बेसिस माई ई नोड भी विल डिसाइड, द स्मार्ट एंटीना विल डिसाइड कि ये ट्रैफिक इधर है तो इसको मेरे को बीम बनानी है. हाँ, पर जो पैरामीटर के बेसिस पे जो डिसीजन लेगा वो बीम का, दैट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द यूई. एज ए यूजर मैं नहीं कुछ करूंगा, बट मेरा डिवाइस जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस बेसिस पे वो नेटवर्क करेगा. सो नेट. हम्म. हाँ नहीं, दैट इज पॉसिबल. यू मे नॉट रेडिएट टू द डायरेक्शन. जैसे रात के टाइम अगर आपका जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग टाइप वाला सिनेरियो है, so you will not be radiating toward that direction in the night also. So all these are the feature of smart antenna as well as softwareization. I think I will skip all these things. So there's a concept of captive CPN network. This is basically like these are the different scenarios where we can use 4G और 5G technology as a, in simple terms, जैसे एक्सेस पॉइंट लगाते हैं हम, हॉटस्पॉट बनाते हैं. सो हॉटस्पॉट इज बेसिकली लाइक आज की डेट में अपना वाईफाई वाला होता है. उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं लेटेंसी के टर्म्स में, मोबिलिटी के टर्म्स में. सो आई कैन ऑफर सच हॉटस्पॉट्स ऑफ 4G and 5G टेक्नोलॉजी. सो दैट इज द एंटरप्राइज बिजनेस, दैट इज द सिनेरियो दैट वी हैव टू लुक टुवर्ड्स. जिसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपिंग मॉल है, माइनिंग है. यहाँ पे आप क्या अपना एक ई नोट भी लगाया आपने, और जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है लो लेटेंसी वाली है, डेटा ट्रैफिक का एप्लीकेशन है, लोकलाइज यू विल बी ऑफरिंग है hotspot of 4G or 5G technology. Very simple terms. So that is the scenario we have to look for. Baki, anything else? Spectrum actually क्या है वो, I think Mr. DK Agarwal is covering. He's having a lecture. That's why I have not covered that. वो उसमें प्रॉपर पूरा है कि हमारे पास किस सर्कल में कौन कौन से बैंड अवेलेबल हैं, कौन सा मिला है, कौन सा सरेंडर किया. दैट विल बी कवर्ड. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कवर्ड हियर. ऑल ओके देन, थैंक यू. Thank you very much, sir. Uh, to facilitate our own Shri Rajesh Dayal, sir, I would like to call upon Shri Deepak Gupta, sir, be head from Rewari. Thank you very much, sir. And now, on behalf of House, I guess the tea is ready, and we shouldn't let the tea wala wait. So let's proceed for the tea, and then we are going to come up by 11:30 positively. Yep, thank you.
ठीक है, टेंडर, लेट अस होप टेंडर अगर ऐसा आता है नहीं हो पाता है कैंसिल करके रीटेंडर कर दो, वो ज्यादा बेटर है, बट डू इट फास्ट। ठीक है, I will also have a word with CGM sir. Any other challenge which you are facing? आ जाएगा हैं? ठीक है, वन बाय वन हम लेते हैं। Microwave will come in, I think by January it will come, should not be a very far off thing. जहाँ तक रोड्स का है कि रोड नहीं है और जहाँ पे सामान ले जाना चैलेंज है, if distance is more than 300 meter for this, I will request all to share those data with us so that we take up with state governments on priority that यहाँ पे whatever way they can support in terms of roads so that saman we should be able to take all the things, goods transport should be possible. We will take. Okay, government of India has very clear vision. I will talk about things. Communication has to reach to every village. Power has to reach to every village. Wherever power is not there, saturation project is not to lay power, to bring power there. They have already given mandate to Ministry of Power to make available power in every place. And ऐसा नहीं है, वो स्टेट भी तो डिमांड नोट देती है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। ऐसा नहीं है हम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अभी तक नहीं दे रहा, तो हम उसको फॉलो अप करा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसा काम चलेगा नहीं ना। Madam, main problem for Karnataka here, Karnataka, we are facing with the allotment of the sites from the forest department. We know it. So that is the main burning problem. And we have met so many times with the state government's chief secretary, and it has gone to top level. Still, we are not able to move it. Anything can be I done. have latest update of that will happen in the next 1 week, 10 days. Okay, That will right. If something is happening, good. Yeah, it is happening. Mm-hmm. 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 That we know. And that is the biggest concern for us, not only in Ladakh or JNP, in all the circuits where he is working. I know. Ladakh, where everything is sorted out, only thing is progress of the vendor. We are aware, we are chasing him. There is a meeting scheduled on 7th. You may also like to join online if you want. We know it. We know it. मैडम उड़ीसा बैक है, Mm-hmm. तो हमें ROW स्पेशली फॉरेस्ट से इशू आ रहा है, लैंड एक्विजिशन के लिए भी एंड सब्सिक्वेंटली OFC एग्जीक्यूशन के लिए भी। Mm-hmm. तो एक तो फॉरेस्ट का इशू है, और सेकेंडली जहाँ जहाँ पे हमारे टावर आ रहे हैं वहाँ पे थेफ्ट भी शुरू हो गया। टावर लगा के चले जा रहे हैं, उसके बाद फिर अभी फेंसिंग नहीं हुई है, तो वो उसमें टावर थेफ्ट के भी हमारे यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। ROW, I don't know because your CGM is very confident that he will get resolved all the issues, including ROW. And for it is now mainly on for cable laying. केबल नहीं, So for all of you, cable laying, what forest department? It is forest part or normal ROW? Hmm. See, forest ka. If that is the case, we are laying cable along the road. We are not laying in the forest directly.
Along the road only we are paying. Just. Like what forest department says, where Handwick says that along the forest, 15 meter on both sides. Yeah, that is in the linear projects. So we just require forest permission. We don't have to give any ROW charges. So if that is the case, wherever we have towers, we can go to forest department and take a blanket ROW permission for cable laying. That may happen. And if that happens, your all these issues will get addressed. But so that is what I'm saying, that talk to your CGM to get a blanket ROW from the forest for the cabling. I will also talk to him. So this is something I am listening from so many persons. So we will take in the CGM review also, which is scheduled on 7th. So we will give direction what has to be done. We should try to have blanket ROW. And in some states we have already got. Wherever we have not got, we can speak about. So I don't have much to talk. You all are doing projects. You all are in the GSM part, so you must be more expert than me. I will talk what is happening at the center side and what is expected from BAs. What things they should consider while we are doing project. So all of we know that timelines have been set by PM. It is 31st March, which deadline is being given. And we are, and they are saying that 100% towers should be erected in circles by 31st March. So we have to take at least this much part that foundation gets complete, tower gets erected. And wherever we get active infra, that should come and got installed in the circuits. So that is the broader things which we are talking. Apart from that, now being election year, government has lot of schemes for rural areas. And in all schemes, connectivity becomes a must thing. So within our project, we are getting lot of requests to prioritize some sites in terms of post offices. Government has a scheme that every villager should have post office within 5 kilometers. So we have around 1859 sites which are in post office. We keep on sharing priority sites on the cluster, our 4G saturation group. If any one of you is not in the group, please join the group so that you also keep on getting communications what we are sharing. 4G saturation group. Yeah. All circle CGMs, GMCMs are there. BA heads should also join, to my understanding, so that whatever communications we are sending, it is reaching to everyone. Then there is aspirational blocks, 500 blocks are there. And in that block, we have 2127 sites. Vibrant villages are there where we have 165 sites planned, border villages, 329 sites planned. And there are so many things coming up. Tribal PVTG is coming, Utkarsh is coming. So schemes will keep on coming and we will be requested to give priority. And ultimately, I'm sure the day will come when 100% sites will become priority sites. So whatever is priority, we should give them. Otherwise, we should target that 31st March, we should be able to erect all the towers. Okay. And project scope, we all know how we have to do. Just for all of you, if we talk about summary, we have to erect almost 17,000 towers. Foundations which are completed all over India is 6,700, almost 7,000. So we are almost 40%.
And in next 4 months, we have to reach to 100%. Tower erection is 3,821, almost 4,000 till date. If we talk about weekly progress, it is around 324, 350. This is something which everyone's efforts is required, that we should support all the bottlenecks and we should get this speed expedited as much as possible. This is a commissioning plan which we have committed to government. So in any case, tower should be erected by March. This is what we are saying. And what all instructions we have given, I will just discuss about that, and then we will have more interaction and concerns. That first thing is allotment of all pending sites. If we are talking about March, where all towers have to be erected by December end or maximum by mid-January, all the sites should be with us, be it private land, whatever we have to take, we should do it on priority. Government land, hardly you can take at it is 2,000 rupees, which is we have set. So if you can take within that, so you take it on rent and close it. In MP, 100% site allotment has happened. So if it is one site left out, you can take. Yeah. Long-term agreement, and we can take 3 years, 5 years fixed, and then what was it? Then in some places, what feedback we get, that government land is not suitable in terms of the power is not available there, or it is so far from the habitation that there is security concern, there will be security concerns in long run. So, or the media cannot be given properly, it will not have good RF coverage. So if we find any of these suitable concerns, we may switch from government land to other land. If not available, we can go on rental basis also, if we have proper justification. So we should check about all these aspects also, and if any action is required anywhere, we should take that action also. And there is a direction from corporate office that site plan should be within 500 meters of habitation, so that there remains security. And secondly, in future, if we go for 5G kind of things, if we upgrade, so population should have maximum benefit of long-term plannings also. And whatever drop sites are there where signal is already present, those should be updated in the cluster. Means cluster and Nirikshan portal updation is very critical. We are finding that almost 20-30% data is correct in cluster, 70% has to be updated. Land allotment is not there. Drop site information is not there. And nowadays there is so much reporting required that we cannot ask every time from the BAs that what is the progress. We have to rely on what data we have. And if that data is not correct, our reporting will not be correct. So request all circles to update cluster immediately in terms of land allotment, how much land is allotted, how many EB connections are applied, how many sites are dropped, so that we have exact information from the cluster portal itself, that how many total sites we have to make, how much land is available. You try from your side to take information of your BA. You will find that is totally incorrect, which is coming from clusters. That needs to be updated. OFC tender we were discussing in the initial stages. So we have to make sure that all tenders are awarded by 31st December. In case there are issues where it is seen that prices are not reasonable and work will not happen in long run, we may cancel at the tender finalization state itself and we can retender, rather than
finding in the problematic situation at the later date. So this is the target which has been set by our Honorable CMD sir. PLB laying activity has to be completed in January, OFC laying to be February, and all the fiber which has to be laid for 4G saturation project has to be commissioned till March. And when we talk about broadly these things, we have to also make sure that whichever sites where foundation is complete or erection has happened, if it is fiber site, we should end-to-end fiber termination and ready for has to be ensured along with that, so that commissioning we can start as early as possible. So that kind of aspect is also to be looked, and overall targets are also to be looked. And when we are laying fiber, we have to make sure that all the pictures, photography, videography is done and it is updated in the Transnet and Nirikshan portal. Transnet complete videography has to come. In Nirikshan portal, videographs are not there, only pictures have to be uploaded. So relevant pictures should be updated in Nirikshan portal also. There are a lot of concerns that fiber information who will update in Nirikshan. We have clear understanding that our ISP partner will be doing that. He will be doing O&M of the fiber laid in long term, so he has to have that information. So this is the best time he get information. He keep it as per his requirement and he update in the Nirikshan also. So there should not be any doubt that how it will be updated in Nirikshan. And we have to make sure that media reaches to all towers which are erected. BharatNet utilization, wherever it is required, we have to make sure that happens so that our fiber requirement gets minimized and we use BharatNet to the fullest extent. VSET is a big challenge, especially in few circles like J&K, Arunachal, Assam. I don't think it is a big concern. HP also, there was a big Chhattisgarh, Odisha. So request, we will not be getting these many VSETs reimbursement from USF. Secondly, VSET will not be a good proposition in long term to provide the good 4G connectivity. So we should look into it that wherever we can reduce VSET count. If we have to put some repeater for the microwave and repeater site, we can have BSNL site. If BSNL site is not there, any private operators towers are there in between. We can use those as repeater sites. Corporate office is going for an agreement and all those repeater sites we will get. But at the same time, there will not be any new tower to be erected for VSET. No, some sites we have projected for VSAT 7. The VSETs, we will be getting some, but we have to reduce the VSET count. So you should rework the planning. Wherever we have to put additional fiber, we can do that. So For lengthy routes, it is going to be considered because with respect to VSAT, that location, initially that VSAT has been proposed. see, Now- there was a limitation of 2 kilometer per site length, but we are giving some incremental fiber also we are allowing. So if there are some average 4, 5 kilometer, 6 kilometer we are allowing, but we should reduce VSET. So all VSET needs to be revisited, and wherever we find that the plant VSETs are easier to be converted to microwave or OFC, we should do that. And specifically Rajasthan, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, J&K, Ladakh, I will request you should look into how we can reduce the VSET count. To relax that limitation of the 3 kilometer, 2 kilometers. We are doing at some stages. Because even 5 kilometers also are up to 10 kilometers, some sites are not feasible. Because that's See, why it has been taken up for the We VSAT. know it. So by think it should, making a cluster of sites,
if we can plan something, we can give some additional fiber, we will keep on giving, but you should also try to rework. Priority sites, I have discussed that lot of priority is coming, so whenever new tower If foundation is to be. VSAT has to be going on fiber, what is the maximum span we can go for? Because I am having 3 routes and each of the routes is going around 13 to 12 to 13 kilometers each. We can We are not discuss it. going on We the can discuss it micro offline. pops. You can send us the complete requirement. We will assess and we will. That requirement we have already sent it to cycle office. Okay, so ask Circle to share with corporate office. Sure. Priority sites we have discussed. And 80 is something which is also becoming a challenge. We are finding that tower 80 and passive infra electrical 80. The tower 80 hardly 10%, 20% has happened. The passive in 80 hardly 1%, 2% has happened. So we have to prioritize all these 80s. From corporate office, we have already given direction that wherever civil teams are lesser, technical team has to do the tower 80 also. So lot many circles that is there. So as we had, we should look that 80 happens in time so that we can plan for commissioning. Ma'am. Yeah. There are a lot of issues in the erection of towers. For example, in several cases, the foundation top itself is below the road level or below the soil level. It is likely to be stagnated with water always. Mhm. There are several cases where base plate nut bolts are missing. The So, towers are tilted, the paints are not proper, primers are not coated, lots and lots of issues. But still it is getting cleared and vendor is not responding to any of the queries. हाँ? नहीं, नहीं मैं देखिए, जस्ट आई एम देखिए, गिविंग अ फीडबैक सिविल का काम है वो एक अलग बात है वो नहीं कह रहा हूँ नहीं देखिए, ultimately affected party are us. And if that is the case, it should be escalated at circle level also so that at least महाराष्ट्र में ऐसा है कि ऑल सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स आर रिपोर्टिंग टू वे हेड नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता जो टावर का बेस प्लेट ही कंटिन्यूअसली पानी में रहेगा और नट बोल्ट्स आर मिसिंग टावर इज लाइकली टू फॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, नट बोल्ट मिसिंग है वो तो नहीं बेस हमारा अनुभव है बेस प्लेट अगर कंटिन्यूअसली पानी में रहेगा वो रस्ट हो जाएगा और रस्टिंग के बाद वो गिर जाएगा so and these things have been reported also in writing also yeah, we have also seen and that there are some several cases. such cases not few many such cases Okay. The tower, tilting, for that tower vertical to 80 is there. With the theodolite and everything, they are supposed to offer for the 80 also. as I told, it is being done by civil wing directly. We don't have any control, but everything is getting not being cleared. maintained, it is very risky. Those things, that is to be 100% reported. is not cleared. These observations have been escalated. We are also, it has been come to our notice last 10 days back. So we will look into it. In many cases, it happens that suppose several sites are in forest area. They dig the pit and halfway because there is some dispute between the main vendor and sub vendor, the pits are kept open in the middle of the forest. And sometimes during torrential rains, these get filled. So there are lots of dangers. Yeah, dangerous Things are happening, Yeah. but these things somebody has to take care. Actually, VA doesn't have much control over it. Okay. And another concern is on hold sites. We are finding that all over India, around 1,000 sites are on hold because of various reasons. Mainly due to land local dispute that somebody says that it is my land or you should not construct over here, and with persuasion those issues gets cleared. And this is the high time we should clear all those cases so that unless those hold concerns are resolved, we will not be able to complete tower. So request all BA heads to look into it and make sure that prospective holds in their jurisdiction get cleared. EB connection, we are saying 2 lakh is the currently set limit. What we have done in few circles that average, if it is less than 2 lakh,
Maybe some site may have 4 lakh, 5 lakh also, but overall average, if it is less than 2 lakh, we are approving and paying. So wherever demand notes are more than 2 lakh, talk to discount to bring it overall 2 lakh range, and we will pay it. Absolutely no problem. So these questions was initially there, so we can do that. And apart from that, there is one more thing. Government has given mandate to Ministry of Power that BOP, BIP, border, VVP, aspirational, all these priority sites. If power is not there, Ministry of Power will extend the full support and extend power. So escalate all these to discoms that if for those sites, if they are asking high demand of, we should say that it should be, it can be brought to corporate office knowledge us also. You can send list of those sites to us. We have to take up with Power Ministry to get addressed. And at the same time, where whatever bills are there in the circles, BAs, we request that those should be cleared on priority. Cash flow is very important in high value project, and it is communicated at various levels. And cluster portal updation we have discussed. Nirikshan portal updation is equally critical because how many towers are erected in progress, that information we get from Nirikshan only. ISPs are updating the portal, validation and all has to be done at BA level properly. And Nirikshan portal update we have already discussed. LWE project, how many of you are handling LWE? So LWE also, sets have to be converted by 31st December, you all know. We are not getting any extension after that, so OFC prioritization has to happen in that areas. And BOP, BIP sites, media planning should be done as early as possible. We should try maximum on microwave sites. Wherever we have tower from army or something, fiber from army or something, we can utilize that. If they have towers, and if we can use their tower also, we can prefer that also. Because BOP, BIP are most difficult sites, and taking material and erecting towers will be a challenge there. So what best support we can get, we should try. I have a query here. Mhm, See, there are several cases where towers may be ready, mhm, but we may find it very difficult to extend OFC media. mhm. In such cases, we are having this tip, whether their fibers can be leased in. Fiber leasing is always recommended, Mm. and we have mandate BharatNet has to be maximum utilized. Mhm. And apart from that, wherever we can get leasing of fiber, it is the most preferred way Mhm. for all projects. Mhm. Because it is very clear understanding that after laying fiber, whatever O&M charges we pay, Mm. we in that same charges we can get leased option. Here, one problem what we are facing is Mhm. the TIPs are willing to rent out the fibers to us, but they want some minimum lock-in period. Because Yeah. if they lay, say, a couple of kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer cable for us, See, simultaneously I- they are knowing that we are going to lay underground cable also. हाँ? रेट कम है का सवाल नहीं है, अगर वो हमारे लिए एक्सक्लूसिवली केबल डालता है तो उसको 2 साल 3 साल के लिए तो देना पड़ेगा ना हमको। आप दीजिए ना, it is better to have a long term lock in 3 years, 5 years, and then But this, rate this fixed nobody rates. is, I mean, we don't have any guidelines for this. Okay, so See, the problem is on other side, we are saying that we have to lay our underground cable also. For that okay, also there is I got it. We will get the guidelines. lock-in issue. period should be approved Yeah, so that we can work on this. Lock-in period and SLA, these are the two Yeah. things which shall be there. At least some 2 years or 3 years lock-in period should be there. What I Correct. suggest is, even if our underground See, cable is laid, lock-in period is my our interest only, that if we have lock-in period with committed rates, guaranteed and committed rates, so that rate escalation will also not be there in no, our future. problem is that maybe couple of months we will lay our own cable.
It will not happen. If we are. If at all it happens, my suggestion is it should be allowed. Sure. And the other fiber can be used to put the BTS on ring. There is Sure, no harm. sure, So please issue some policy in this regard. definitely. And what about this, is this vendor not doing work fast? He's not working fast. Working fast, Yeah, that we are trying to I have expedite. 66 sites and we have made over around 63 sites. We and- know this issue is Ladakh, we were discussing, And- it's the same vendor. Yeah. And we are also trying, pushing hard that how he can expedite. We have called him this week in the corporate office. The concern is with everyone. We are, see, for all of you, we have weekly review with all ISPs. Okay, And we we see what issues they are facing and why they are not speeding up. And No, lot of pressure on them is to expedite the work. that's what I am coming to. In that particular, I have 3 districts and in those districts, there are no issues. Mhm, The sites are reachable. mhm. There are very few cases of head load. I mean, distance Mm. from road. And everything is available. Mhm. There are no weather inclement, anything else is no, there is no Snowbound, there weather is hurdle, nothing like snowbound in your. no weather issues, nothing, and no problem. And electrical connections will be, as soon as you pay, they provide. Okay. We know that the speed of So theirs is a the vendor is concern. slow, We, although, we yeah, are also pressurizing them to expedite. Some pressure. he is is not engaging more subcontractors. Mhm. This company is working through petty contractors. And he is engaging only few petty contractors. We know we have Okay. all this. See, every week we see how many, we don't do review circle wise, but we know how many foundation they have done overall. Yes. And pace in a week hardly able to do 100 foundations, 100 tower erection, which is not a speed. He has to work at least 4 times. And that pressure is on them from overall from the corporate office. So let us see how they expedite. They have been called specifically for in-person meeting this week to expedite the work. So the concern is with us also. In the overall picture, we have much bigger concern than what you have in your BS. Okay. But these issues are manageable. These are not difficult Okay, issues. these are manageable, and now most of the things are on BSNL side. Maximum we have to expedite the things. External factors are minimal that we know. Yeah. Mhm. Mhm. So that they have informed us that some they have taken warehouses and some material has already reached. So then there are few requests wherever we talk about these things. आपके specifically we can discuss जितने भी उसने दिया है material deliveries. Have we done store entries and all, and we have processed the bills, because somebody will not keep on pumping 53 kn. Nothing in Ladakh. But they were informing that they have brought something in Ladakh. We will specifically discuss this thing. Any other thing anybody would like to discuss? Yeah. Uh-huh. Uh-huh.
वो standard yes okay. Joint survey is sufficient because in villages, everybody knows everyone, they know what are the sites. So newspaper advertisements are not required from the FRAC and all circles. If we will talk, we require almost 3,000 sites on rent and now hardly 300 is left out. Most of the work is complete. So in your BA, you can talk to circle what is to be done and they will give clear directions. That joint survey report is sufficient. We should have long-term lease, 3 years, 5 years lock-in. Because we know once tower is installed, it has to be there for minimum 10 years. Because USF guidelines are very clear that they will be giving 5-year O&M charges, and after that, 5 years we have to keep tower on our own cost. So 10-year lease has to be there. And if it is 10-year, whatever maximum lock-in and long-term things we have, it is for better for us. Any other questions, doubts? UPBIP is border outpost, border intelligence post, mostly on the border area of India, starting from Gujarat to Northeast. Gujarat, Rajasthan, J&K, Himachal, border की sites हैं for paramilitary. So they have given us the separate agreement, and the circles who are handling, they are aware of those. Punjab, there is no site, so maybe you will not be having an interaction. So any other questions? If there are no more, still you can contact me anytime if you have any concerns. And this is a project which is my mobile number 9868 132627. So this project is something where what we can say that we have currently 60,000 towers in BSNL. This project is supporting us to extend that reach to 80,000. And with 700 megahertz band, our rural coverage will improve, and we are getting 25% network expansion without any financial cost to BSNL. So we should take it seriously, do it properly, because in long term, it will be a big revenue source for BSNL, and it will bring BSNL from red to positive side. So देखिए माइक्रोवेव सारा कैपेक्स इसमें बुक होना है other than only two things. One is vehicles which have been issued to you, and second is ROW charges. Apart from that, almost every expenses in this project. Only thing is equipment has to be new. We know the cost, and it is. देखिए टेम्परेरी माइक्रोवेव कुछ भी नहीं है. अगर कुछ न्यू है जो डाइवर्ट हो रहा है तो आप टेम्परेरी लगा रहे हैं, तो जब यहाँ का आ जाए तो फिर उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, बिकॉज ओल्ड की तो रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा हमें, वो भी नहीं मिलेगा डेफिनेटली. तो आपको कोई कह भी नहीं रहा आप लगाओ. सर्किल कह रहा है तो वी विल गिव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दैट, बिकॉज दैट विल बी अ कॉस्ट. One thing we should have clarity that USF is asking about the inventory, what we are putting at the sites, and they will take all serial numbers, bills, and whatever is the new material, they will pay only for that. So we should avoid diverting any equipment to these sites, because we will not be getting reimbursement for that. नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बहुत क्लियर है. नहीं, वो नहीं मिलेंगे. इट विल बी ओनली फॉर न्यू इक्विपमेंट. दे हैव कॉन्सेप्ट ऑफ TPA, थर्ड पार्टी ऑडिट.
So they will come and do audit, and we have seen they come and they do independently. We will never come to know that somebody has visited our site. So that kind of things are also there. बट So में एक इशू था इसमें यहाँ पे जो हम लोग विलेज लेवल पे बीपीएसएस हैं साइट है mhm, मोस्टली जीपी बिलो है ना जीपी ऑनवर्ड्स इज द बैक साइड एंड हाँ. अदर इज दिस साइड्स तो इसमें हम लोग के स्पेशली लाइक इन माय डिस्ट्रिक्ट राउरकेला mhm, वी हैव भारत नेट फेज 2 executed by state government of DCL. mhm, So GP onwards we have dependency on them only. We mhm. need their fiber actually. And So many of those wherever- fibers are faulty actually. We have worked out, we have written to them, but उनसे भी हमको support So- ना मिल नहीं रहा है. So तो agar support, if you are not getting support, send a detailed case to asset corporate office that how much is faulty and how much you require. Through yourself, we will take up with them so this that, will be taken up. Madam. yeah, so we will take up wherever they have not laid fiber or wherever their fiber is faulty and needs Fiber is faulty, intervention. basically it is overhead fiber. So you send us to us, we will We have circle office ko bhejiye and ask them to send to us. The phase 1 is with BSNL, BharatNet. Phase 2, if it is with MP, it is with phase 2 with BharatNet, matlab BVNL or with state. BVNL hai to BVNL is now BSNL only. Yeah. हाँ. Take up कीजिए BVNL के साथ, they will repair it. They have to do it and they are doing it. We will talk to Sakil. नहीं बहुत सारी states में खाली BharatNet phase 2 only 8 states are on state-led model. Rest all is with BVNL only. So don't say that it is 3-4 circles only. It is across India. वही बोल रही state-led model 8 states में है. Rest all 25-26 states it is वो है. कम है पर है. I don't know. ठीक है. Any other question? Any other concerns? Yeah. That is something BSNL will not be getting reimbursement from user. So vehicles, though it is part of capex, it is mainly our survey and centage. Those will be covering that. And our agreement says because we are retaining revenue, ROW charges will be borne by BSNL. So, but whatever we say, so these two we will not be claiming with yourself. Rest all the component has to be charged to 10%. WPS, it is fine. It is the BSNL capital expenditure which we will do. It will come in WBS, it will come on BSNL accounts, but it will not be claimed to yourself. नहीं हमने करी है and survey charges we are claiming. We will not be separately claiming vehicles with from yourself. This is as per standard government agreements, and 10% is highest wherever government gives. So it is somewhere it is 2%, 5% also. But in any case, see, that's what I am saying. We will be getting benefit. We are getting 25% network expansion without any expenditure. So revenue is ours. And mileage and capitalization, any company can do better. So we should think in that direction. हमारा ही रहेगा. It is our asset, BSNL asset. We should.
we will not discuss. It is not scope of this project. Fine then. Thank you all. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, Srimati Reena Malhotra, ma'am, for such insightful and interesting presentation. Now, on behalf of this particular house, I would like to call upon Shri B. Venkateshwarlu, sir, to felicitate ma'am on a behalf of, as a token of love and respect, on a behalf of LTTC. Now, I would like to request this house a very peculiar demand that whenever, where, and when need, kindly use the phone or the microphone so that we would be able to live stream your queries to the house. Yep, thank you. Now, I would like to welcome Shri Deepak Garg sir for a very interesting session on the BTS operation and the maintenance part. And I would request this house to participate interactively for this particular session. Afterwards, this particular session, we all would proceed for the lunch. Yep. Thank you. Let's have a round of applause for Shri Deepak Garg sir. लगा दो वो पॉइंटर भी पॉइंटर ये पॉइंटर है ठीक ओके Good morning. I am taking up this very interesting topic for all of you, BTS operation and maintenance, which is taking most of your management time also in the SSA. And a lot of feedbacks are being sought. Definitely with many of you, I am conducting regular VC also. So you might be aware of the things which we are discussing. But as part of this, we had training session, we will make it a little theoretical and just what is background of all these operations, why it is required and what we should do, what we are doing, and how we can do it better. So, operations, main work of all field units, SSA, why it is required to be done. Though it's a theoretical slide, but it will set the background right while we are discussing operations with you, all of you. So, what's the objective? Whatever network we have purchased, we have procured, capex we have done, we have installed also, we have commissioned also. But then it becomes very important that it remains up most of the time, all the time, so that whatever investment we have done, we are able to utilize it and provide the meaningful and good quality service to our customers. What it will achieve? We will achieve all the quality of service parameters and try benchmark. If we meet it, then it differentiates us in the market with our competitors. We get a good praise with operations philosophy. Customer experience will definitely improve. They will invite more customers. They will talk good about our service. It will supplement your sales efforts. Whatever efforts you are putting in sales, so you will definitely achieve a better sales, better inputs from customers for increasing sale and ultimately revenue, which is the objective of any commercial organization. It works for the revenue, it works for the profit. So it's the life cycle of operational objective, keeping in mind all our action should derive. So now how we can do for contributing to operations? Whatever infra we have provided, you have to keep it up all the time, most of the time. Equipment installed. So all should be definitely maintained by you and with vendor support, OEM support also. Most stable media. Stable media is very, very important thing for your any all BTS sites. It adds to your uptime, fluctuations, quality of service, call drop. Everything will emerge if the media is not stable.
So you have to define owners of all BTS in the field. All BTS should be earmarked, a group of BTS, say 10 or 8 or 12 or 15, depending on the geographical spread. You have to define an owner of BTS that you are defining already. And if update is required because of a person changing from one place to this place, then you have to update it. All this information is captured through your CNMC and web portal. So ownership of BTS is first important. And you have to monitor this network on real. It's not that somebody tells you that the thing is fault. You have to self-monitor it in real time. You can schedule it. What you can see in the CNMC mobile app or dashboard or portal with regular frequency. Say 1 hour, 2 hours. Important things you can always monitor and get a trigger also. If you monitor the network in real time, you will get the it early. Otherwise, somebody will tell you, then only you will come to know. Then delays are. Then you have to adopt best practices heard from us, circle office or nearby BAs, what they are doing to handle a particular situation, what they are doing. And of course, ranking. Ranking we are also issuing from here, corporate office, circle ranking, zone-wise ranking. That you can also good performers to motivate it and also advise poor performers why they are not able to perform. You can always guide them. Then at the end of it, complete network has to be in your monitoring radar. Because some network is missing from the system, then you cannot monitor it. So your all work is mapped in the system. So with this, this completes the strategic part of your operation objective. With this background, then you can devise your action. You have to keep in mind what many of things you are doing, and if something is not being done from all of you, then you can have a review of it. Just check whether ownership of BTS is correct, what person is having how many BTS, how is performing, and you also monitor the network in real time. So quality of service parameters are many. There are many reports, KPIs, and we are sending to TRI, taking data from various systems, OMCR, etc., from Circle Office, your CM specialized mobile team. But only 5 parameters I am listing for you that you have to check at BA head level. So out of 50, say I have identified only 5 for you. Very simple job. Network availability, 99%. Always strive for that. Always try for that. Where are you? You can check on day-to-day basis also. Yesterday availability, you can check. These systems are providing you all this information so that you are not required to go here and there. Last day, up to last day availability, you can check of any month. So suppose you are 95, 94, 90, 96. You can then find out the BTS wise availability also, which BTS are bringing your availability down. So you have all the information. Only thing is you have to make it available to yourself and process it. Then definitely network availability target is 99% plus. But we are discussing only 99 now. So along with this is MTTR. These two are related things. So MTTR, if you are high, then availability will be poor. So whatever fault incidences are coming, if you are attending it early, your team is moving fast, your team is able to attend in early time, then MTTR will of course come down. So while discussing with all of you, this MTTR, I will also show the circle-wise performance on this parameter. So you can relate with the Joe and circle and your BS. Where do you stand? So a very humble target we have kept, MTTR of 120 minutes. It's not a very tough target also. People are achieving better than this also. Then you can see what you are achieving. Then definitely you will try to find out the reasons why our MTTR is high. Call setup success rate, more than 95% of the call should be successful. Whosoever is attempting it, this is a try parameter. Similarly, drop call rate, it's also less than 2% for all cells. These two parameters are very important from the quality of network perspective. Once the mobile's BTS is up, even then these parameters are not being met. Then you have to optimize the network, you have to do the drive test with the help of a specialized team.
This will definitely improve both of these parameters. Drop call rate should be less than 2%. Call setup rate, success rate should be 95%. So you should find out from your CM team what we are achieving, even if the network is up. And whether there are few cells which we are not meeting this parameter, then it's a cause of concern. You have to define so many things, neighbor, etc., and the BTS also do some tilting, microwave link adjustment. Many things may be there which are impacting these two parameters. So that you have to check definitely. Once the availability is there, then you have to check this also. नहीं, these parameters आपके CNFC ऐप में आते हैं, but after a gap of say 24 hours or so, but real नहीं, इसमें reports are there. The CNFC reports are there. Reports are there. You can find out from web portal. You can find out. CNFC portal is also there. If it is not in the app, you are not able to locate. It will find out on the desktop laptop. Yes, it is there. So BTS fault 24 hours is a very crude thing. That you can always find out your BTS is down more than 24 hours. That you should definitely keep as 0. Target 24 hours is too much for any fault to attend. If any special case is there, then of course you can review it why it is crossing 24-hour faults. So only these 5 parameters you can keep in mind. From the operation perspective, it will give a very good result. Most of the things are solved. So next, just a theoretical slide only. How we are classifying sites in this our discussions. BSNL site, it's a site installed at BSNL exchange where infra is already available, or CFA site is there, some exchange is there. So non-BSNL site is specific to BTS site. It's a non-exchange site where infra elements are required for BTS separately. IP sites where passive infrastructure elements of BTS sites is provided by some other agents. So these are called leased out and leased in site. We are also giving our sites to other operators. We call them as leased out site. We classify that as leased out site, and leased in is what we are hiring from other. USO sites are there under Universal Service Obligations Fund, which aim to provide quality and affordable media and digital services across the remote areas and rural areas. So these 4 classifications we are using in various reports in the CNMC and portal and other discussions. Other thing you will find on the reports is the site categorization. So whenever you open the monitoring dashboard of portal or mobile app, there are 4 classifications. We also discussed with you. Suppose a fault, supercritical, critical, important, and normal sites. This classification is very important because in case of anything, any incidents, you have to first care for supercritical sites because it's carrying a very huge traffic. 350 Erlang data is carrying per day. Data is also 200 GB per day. So critical classifications is less than supercritical in the range of 250 Erlang traffic and 150. So it's a number only. Just point is that supercritical, critical, all hub sites are also in this category only, supercritical and critical, where more than one site is converging. So if any hub site is down, then you have to care it first because it is impacting more than one BTS. So all these sites are in supercritical, critical category only, then important, and then of course remaining sites are in normal category. You have to take care of normal category sites also, but these classifications help you in monitoring and resource allocation in case of any scarcity of resource or manpower. So you have to prioritize your actions based on the site category. That's why we are explaining this here to all of you, though it may be known to you also. So just listed better of time we discuss with all of you. Better of time is required. So what these are just very important factors. Stable transmission media. You will come to know later on around 40% sites more than crossing 24 hours are because of transmission media only. Backcoupling, and most of the sites should be on rings. Equipment you may be getting now in field again and under the various projects, MAN, etc. Power availability. Sometime we have noticed that power is there, but disconnection is there. Suppose due to non-payment or some other local issue, there is a prolonged electricity disconnection.
prolonging for more than 24 hours, 3 days, 7 days also. So means power availability, nobody is bothered if it is disconnected due to some transmission issue or some local LT cable issue, etc., which your electrical wing or team or SSA person should be attending and pursuing with the electricity authority. Battery and power plant upkeep, power plant module is to be functional, that we are discussing with all of you number of times. All are discussing power plant module repairing. We are having more module in the field as old only, so you are having some local tenders also for repairing. What is the efficiency? This is very big bottleneck now, because when batteries are coming, then you need modules also to charge the battery. If you don't charge the battery and modules are not there, new batteries will be spoiled. So we have also issued instruction not to install battery without sufficient capacity of power plant. You have to ensure that before installation of battery. DG sets availability also. DG sets may be there with you, supercritical and critical sets, hub sets at least, but these may be faulty for long. So you have to repair it. Of course, you have to check for expense also. Minimum expense, low capacity DG. If it's a high capacity DG, you may consider it a replacement with some available low capacity DG. Of course, and this I am telling you for DG repairing, but you have to keep the expense also in mind. It should not be very high, depending on the requirement of sites. Supercritical, critical, and hub sites, at least you should repair. And all equipment under AMC, whatever equipment cards are there, all vendors we are entering into AMC, like Ericsson, Nokia, Jetty, Huawei also, Alcatel, and others. And wherever we are not able to get the AMC support from vendor, because equipment is old also in our network, so we have finalized this tender. Circles, zonal tenders have been finalized for repairs of RNP cards and non-AMC card. Now all zones have finalized it, and that we will discuss further, because North zone circles only are in the place, are to place the PO. Authorization has been given to them, and other 3 zones are getting the card repaired also. Vendor has started picking up the cards, they are repairing it and providing to circles for checking. And Nortel we are making, sir. Nortel is here. yes. Nortel anything we are doing, sir? Yes, Nortel, and you are south in Nortel and Motorola. Both are there. Karnataka also. It is there. But already existing agency is not able to repair it. He is declaring more cards with an unrepairable. Yes. So existing agency, we have given one more agency. This tender is, I will tell you, only for RNB and non-AMC cards only. Suppose you are having AMC with the OEM, then you give him first chance. First chance to OEM. AMC card. Or you have not given AMC, then you can try to repair through these vendors. So I have clearly mentioned it is for RNP cards and non-AMC cards. So what we are thinking, findings, RNP cards declared, few are getting repaired also by them. So whatever is repaired from the RNP cards, it's a bonus for us, because suppose we are able to repair 30, 40%, 50% card also, which have been declared RNP already by the OEM. Then some availability of cards and equipment will increase in the field. Definitely, by this time, 4G equipment will also start arriving, but for at least 1 year or 6 months, we have to manage with this type of mechanism. Either repair the card through OEM. Say Ericsson is repairing card, then it is very good. Nokia, Jetty are repairing, because equipment is quite new only. Especially problem is coming with phase 5 equipment. Alcatel in Maharashtra, West Zone. South, I think you are having 3 equipment, Motorola, Nortel, and Huawei. Jetty also. Jetty to phase 7 and phase 8. So they are providing AMC support from OEM. So this is not a very old equipment. Whatever Jetty equipment is after 2014-15 only. Phase 7 and phase 8. Phase 8 is after 2018 only. So this equipment is repairable, and they are repairing also as per the AMC. But problem is coming for phase 5 equipment. So that's why parallel arrangement, we have done this tender also. Now all 4 zones tenders are in place.
Only North Zone may be in the process of issuing work order finally within this week or so. So that you can check up with your circle office also, any BA heads of North Zone, they can check up. So battery, you are aware and you are getting also around 24,000 batteries order, 23,000 already placed. Batteries are arriving in the field also. So what is required? We are waiting for battery last 2-3 years. So we need to install it early. 7 days I am giving maximum time, including 80. But what we are finding, people are not installing batteries. Many places batteries are available for 1 month also, 15 days, 20 days. So this is not correct, because when we are waiting for battery, we should be ready with all infrastructure and arrangement to transport the battery or install the battery. So you need to install within 7 days, maximum time, and 80 is to be done. Without 80, it should not be put in the system, because it will be difficult to do 80 later on. Any faulty cells you can report now to supplier for change. That you will come to know only when you do the 80. Sometimes people are not doing 80 or avoiding 80. It is not correct. The second point is very important. What we are discussing, battery has come now after a long wait. And now they will say, "Sir, we cannot install battery." The reason? Power plant is not there. Only one module is there. One module, then it's better not to install the battery there and ask for diversion within circle, or we can divert from to other circles also. This exercise has to be done beforehand by you. Don't wait ki battery will come, then only we will do this exercise. So I am also specifying this issue repeatedly on various discussions. Here also, as part of training, I am telling you, batteries are coming. They will come further in December also, January also. Allocation is also earmarked. You have to check now. Batteries are coming. थोड़ा सा माइक से बोली है, वो भी कह रहे हैं आप थोड़ा सा। हेलो। तो हम लोग जैसे परचेस ऑर्डर देते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी आपको इस डेट तक दे देनी है। चाहे जैसे पर्टिकुलर स्टेशन पे कोई डिलीवर होना है, अगर सेंट्रल लोकेशन पे डिलीवर होना है तो वो मैनेज की जा सकती है कि भाई 5 आनी है, हमको 5 लगानी है, कहाँ लगानी, कैसे लगानी, वो प्लान कर सकते हैं। बट जिसको आना है स्टेशन पे, पर्टिकुलर स्टेशन पे डिलीवर होना है, तो वो तो वेंडर बताने के लिए तैयार नहीं और किसी को मालूम नहीं। वेंडर से आप पूछो तो वो भी नहीं बताता है। तो उसमें थोड़ा सा आप जरूर कर दें कि भाई आपको अगर जो स्टेशन पे पहुंचानी है उसकी एक डेट तय कर दो, ठीक। और डेट नहीं तय करते तो सप्ताह तय कर दो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो एटलीस्ट प्लान कर सके। We cannot say first week of January, but distribution, so he will arrange for supply. Whatever he will do, but it should be known to the. But most of the cases, what you are saying, it is for big batteries only, big capacity battery sets. Maybe 1000 की भी शायद वो लोग वहाँ पे वो कर रहे हैं। ज्यादातर वॉल्यूम तो आपका 600 का है, 600 and 1600 का, so that you have to take from central location to your BTS locations. So anyway, whatever you are saying, you want a particular date of delivery. At least I think, but it's a upper time frame is there, delivery schedule, so you will get progressively. You can definitely cross check what is your supply status of particular location with the battery OEM only. So you can also cross check with them. Times agents, those partners that supplier, they are calling in advance, 10 days advance, they are calling us as per the delivery schedule. They are giving information when that probable tentative date of delivery. Okay. So that is going to use. That you are getting. That we are getting. They are calling us. They are calling us. They are informed. Take definitely you can also now find out what sir is saying. We have been after the vendor. They are not having schedule of their own. ठीक है. So you are also getting. हमारा एक problem था. Rewarding, you are getting battery yet? I have got 31 battery. All are installed. All are installed, na? So you are telling for others issue? No. It's जो आप बोल रहे point होता है वो हमने भी face किया है. नहीं, but I understand from your reward you are number one SSA वैसे availability में. जी. Now I recognize you, correct. But ठीक है, I will discuss with you further and take feedback from you. So this the third point I have already told you, 80 testing of battery to check of load capacity
whatever is desirable, it should be available. So now what another thing is that you may be knowing all these things. I am putting on one slide to refresh your knowledge and memory. Most of us forgotten this low voltage disconnect. And is anybody discussing in field about this? Discussing, then it's okay. Well, we have also started discussing with you for last 6 months. So this is a very important aspect, low voltage disconnect. So, so that is correct. Well, either you discuss with the OEM, suppose your Delta I think is coming up with AMC also, repairing of old power plant. That discussion is happening. Another vendor is your HECL, ITI. You discuss with them first, or you make some local arrangement. It is also available. Many are doing. But just this point, I am just highlighting why it is required. Till now, what we are doing, we are not disconnecting a battery from the circuit. Even then, it is discharged. So it will go to zero discharge. So then it will not come up nicely and properly with full capacity. So this is damaging battery. Whatever 6-year life, without this, you will reduce life to 2 years or less also. हाँ? कि अब तो क्या है कि आपको सर्कल ऑफिस को बोलना पड़ेगा कि को कि ये पार्ट पार्ट रिपेयर का जो टेंडर चल गया है तो वो अब ध्यान रखिए। अब तो अभी तक रिस्पांसिबिलिटी हमारी थी, हम फ्री हो गए अब तो। नहीं वो कोई बात टेंडर नहीं। देंगे कराएंगे तो देखो सर्कल इज वर्किंग इन एसोसिएशन विथ यू। सर्कल तो हमारा ना वो लड़के वाला लड़की वाले नहीं ऐसा ना करते हो। नो ऐसे डोंट टॉक लाइक दिस। नहीं ऐसे होता है किसी और सबसे कुछ नहीं तो देन यू हैव टू चेंज दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू डिस्कस विद सर्कल, बट आई विल टेल यू व्हाटएवर यू आर सेइंग। सर्कल ऑफिस बोलना पड़ेगा। हम तो बोल ही देंगे यार, वो कोई बात नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि यू कैन नॉट डिस्कस विद योर सर्कल। करेंगे लेकिन ऐसा नहीं सुनेंगे नहीं। नहीं ऐसा नहीं, डोंट फील योरसेल्फ सो वीक। नो इट इज नॉट करेक्ट। You have to discuss, but I will also tell whatever you're suggesting. I will also tell. Because I am highlighting this point so that it comes under discussion. My presentation is not for any theoretical data. I will not show anything. Any data I will not show you. I am just giving you food for thought. So this is my purpose of here. So when you start discussing, then more person will start discussing about it. Suppose all things cannot happen on day one. That I understand. 15 days, 1 month. But few are making arrangement also. You don't tender, but it's not very costly proposition to have some arrangement for, especially where you are installing new batteries. New batteries, you should take care. Suppose some site that battery is already not there, you can keep that site for some other day. But wherever new batteries you are installing, earth resistance also coming up. That is also one more thing. Well, we are making this infra and taking care of this infra further also for future also. For this equipment and of course 4G equipment which is coming. All new things we are installing. So our thinking should also take care of all these things. This way we are not discussing, so we will say the battery is not there, power plant is not there, equipment is old. So our operation philosophy also has gone for a toss. So now when everything is getting refreshed, batteries are coming new, power plant is coming. Power plant also tender is there. There's already order placed. Some power plants are coming and more will come. So infra we are upgrading, we are doing a technological refresh, but we have to take care of few things which we were not doing earlier. So that whatever we are installing new, so suppose earth resistance should be there, proper, less than 1 ohm. Somewhere you can find earth is not connected also. So what we are damaging our this new infrastructure, power plant, battery. I know you are doing some other tender also for lightning arrestor, everything, earth resistance or some aviation lab. So that will increase through this. But definitely at many places, if you take care of your old earth, many people are telling just by simple management of saline solution, watering, or some cleaning of connectors, checking of wire connectivity, people are able to bring the resistance within a limit also. Definitely wherever you are not able to bring, then tender is coming. Maybe you are doing, circle is doing. So this thing we are discussing to take care of future equipment also. Everything is refreshed, so we have to refresh ourselves for this and prevent. One problem is generally nowadays we are getting one set of battery only for that particular mobile sites. Single set are coming.
In such cases, most of the earlier old turnkey projects, whatever the generators has been installed, old generators are already crossed and more than 15 years, those things are not operational. So what happens is the main concern is to do the discharge and discharge test and for AT purpose. It is a challenging job actually. So in such cases, we are doing centrally in one headquarters and then AT also being conducted with power plant and other thing. Then we are shifting to that location. ठीक है, that you can make your local arrangement. Only purpose is that ki how you do it, but testing should be done. And there is preventive maintenance, of course, is required throughout the life of the battery. So these points I have listed here already to just give a thought process, to initiate a thought process. Definitely you will devise your own ways to do it. Because now that task is for going for our more than 99% availability. In such places, whether we are going to get any capital for this restoration of the generators with the new generators. Is That people are seeking, fund is there for operation. It's with circle. If you feel it correct, then why don't you should repair it? Because in the 9.2 project, when we are asking, they say that it is a limited. It's the operation fund. It's the operation fund circle is getting. If any specific requirement, then you can always send to circle office. Okay. So DG that we are discussing, again coming in this three, need to identify DGs which are lying faulty at supercritical, critical and hub sites and make them operationals at bare minimum expenses. A second point is very important. So historically, we may be having a high capacity DG at particular site. Load is not there now. So you have to review the capacity before entering into maintenance. Suppose 5 kilowatt load is there, you are having 30 kilowatt DG. You have to do it. First of all, shifting the DG, low capacity DG will require a lower OPEX in maintenance and running also. So regular maintenance of DG is definitely will add to your uptime. This we have discussed with you already. The possibility of spares are not available, the card may be shifted to supercritical, critical sites. Definitely you will get a priority. Suppose 2 sites are down, cards where you will shift supercritical and critical sites, make them up first. I have told you about tender already. This the card repair tender. That we will be now repairing the cards. The card repair has also started, and card have come back also after repair. So what are the focus areas? Tools are available with you. This CNMC and portal in the form of portal and also as well as app. Outage analysis, alert to end of staff and fault regions. It is available. Fault rectification expeditiously means MTTR will better. Traffic reduction also you can monitor. Suppose some sites are having a traffic reduction month-on-month basis. This report is also available BTS wise. So it will give you insight why a particular BTS is having a less traffic now carrying through it. Some maybe regions, maybe some sales functions also have gone down in that particular BTS area, which is a technical issue. Alarms extension, many circles have done it and few are doing. So 80%, at least 90% target we should try to achieve for extension of alarm. When you extend the alarm, then definitely you will be able to know the fault incidence before in the form of SMS alert. It is going from the system. Your BTS owner will get it. And then escalation is also there. Earth resistance that we have already discussed, measurement and corrective actions and all these sites. Wherever you are able to correct yourself, it's good. Maintenance also you can do. If not maintenance, then you have to come up with a new earth for which circle may be doing tender also. So this is a repetition only. Only thing is important to be seen regularly. So last point you can read on this slide. You have to see it regularly and you can ask yourself how many times in the day you are opening it. Yeah, at least 3-4 times you should see for assessment of proper functioning of mobile network. So suppose you have not opened throughout the day. It is possible. You may be busy somewhere else. Then all our discussion goes waste. So this the only last point you read to be seen regularly.
Rest all things you will know. So what is having main features? Current availability at any point of time. It's available in the form of a dashboard, circle wise. When you click the circle, you will find your BA. What is the availability of BA, SSS? It is having SSA concept, OA concept. So leased out sites ki availability. In the CMC portal, basically we are receiving the daily in the mornings and morning and afternoons about the statistics of availability and MTR from our circle office. What my observation was that like every month, starting first of the month, if you take the first 2 days of the statistics, month end mein agar suppose Nagpur is at 95% availability and the MTTR is to the tune of 4. The second of the month, it shows like it has gone to 89% and the MTTR is 7% and all. The calculation part, when we try to analyze, we are not sure what exactly happens. Okay. Second thing is this parameters which we need to shoot up to the 95% or whatever it is, it takes the whole lot of 1 month. And suddenly the next month when we see, suddenly that 89% which was available, that comes to sits at 98%. So we really are confused in what exactly the statistics is where. Okay, any mismatch you can first discuss with your circle, because circle is sending some files to ITPC, this portal. Because this portal is not generating any information on its own. It's thing that some files may be missing from your side, not going regularly. When you send the file from this place, your place to ITPC, then only they process the data and put up the reports. So there may be some delay or some missing files or some files which were to go now, they have gone after 7 days. So this type of interaction you can do always with your ITPC team through your circle team. So any special issue, then definitely you will come to know that some data mismatch is happening. It is everything. Online system or CNMC, the data transfer, I'm not sure about from where the data is getting collected. Abhi कहने के लिए हम mobile wing when we ask, so sir, certain parameters is fixed in the CNMC portal and it is taken care of accordingly. I can show you the statistics of the last month or this month itself. Okay, that we heard, because anyway nobody can say like this, it is like that. You have to find out the reason. Suppose you are convinced, then you will not ask further. How did this system works? You understand? Because whatever data you are sending, there may be some problem sometime in system also. It is not like that. We are taking 100% guarantee, but you can always point out and discuss with ITPC why my data is irritant coming. Someday it is 89%, next day it becomes 98%. It means that some files have not been pushed regularly. In bulk, they will send in the month end. I mean, I didn't mean to say on that part. It is not like daily variations. What I said is, suppose the first, when the month starts, okay, once the month start in a day or two, what is the statistics of that particular 2 day statistic? If it comes, my MN is 95% or MPTR is 2% or whatever it is. The subsequently, what are the major whatever actions we are taking for making the network ability about our whole power plant, जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो statistics maintain होती है, stable रहती है. And there may be an improvisation also if you see very minimal of percentage like 2%, 3% भी नहीं आता है, 0.1%, 0.2%. But ये month में आ जाती है. Once that month is over, the second month when it shoots, suppose December starts, नवंबर मंथ की जो सर 95% अवेलेबिलिटी एंड में मुझे दिख रही है, supposed I'm telling, and the MTTR is at 2% or whatever it is. The 2nd of December it shows me 89%, the MNA, and the MTTR is shot up to 9%. अब हमारे समझ में ये आती है कि भाई जब हमारी पूरी मंथ में हमने 95% अवेलेबिलिटी रखी है और MTTR हमारी ये पोजीशन पर, ये 2 दिन में कहाँ से चला गया? Only for you are talking of 1st or 2nd December. Yeah, same thing. नहीं, I'm telling in general month switch over. नवंबर मंथ का भी चेंज हो जाता है. Yeah, monthly wise, ये हमारी स्टार्ट ऑब्जर्व. ठीक है, I will find out from Ara circle. मंथ एंड में फ्रेश स्टार्ट होता है ना सर, मंथ एंड के बाद खत्म होगा. No, तो fresh start होगा, but I think he's saying कि November also it is getting changed. सेकंड डे के परफॉर्मेंस शेयर वही होल मंथ जो है आपको वो मेंटेन होता रहता है. अगर आपके मंथ फर्स्ट ऑफ द सेकंड ऑफ द मंथ आ गया तो एक मंथ के लैप हो गई. अब जो आपका फर्स्ट ऑफ जो मंथ आ गया वो फिर से गोस फॉर कंप्लीट. I will tell you but simple observation. Whatever problem you are saying, if it is being analyzed properly, it will be analyzed. Only thing, if you just say something and don't analyze, then I will listen. I will ask somebody else to analyze. When you analyze, then definitely some problem will be noticed.
Either in the CNMC system or in your system, you are pushing the data to CNMC. First thing you have to come to the but anyway, I have taken your feedback. I will ask ITPC to interact with you, Satara. Okay. But anything, just we cannot say, we have to analyze also why, what could be the possible reasons. And if any support issue is there from ITPC, then I will ensure. So this third point I have written, the traffic file status, failed file details is available. Suppose some file your circle has pushed, but it has failed. So QS failed status is coming, you have to repush it. Sometime in the month end, they will repush, so all data will be better. Sometime OMCR mein restoration ho gaya, but report is not getting pushed. Restoration is not updated also sometime. Your field BTS is live, correct, operational, but in the data it is showing fail. So all these issues are there. Definitely you have to check with the OEM also sometime. And even then I will ask ITPC to look into it, whatever you are observing. So this hierarchy I am showing circle level, BA level, and my BTS user, BTS faults are available in category, supercritical, kitni kharab hai aapki, critical, important, normal sites, technology wise, 2G, 3G, 4G, all is available. Duration, how many sites are down more, less than 1 day, 1 to 3 days, 3 to 7, and more than 30 days also. Site outsource, partial down, lease out, commercially load. So there are various categories. You can always look into data of which category of sites are down. Traffic also available. I think somebody was asking. Circle wise, SSA wise, voice and data traffic is available. So you can always look into it. Traffic trend. If it is going down, then you have to see which area is going down. So outage is reported. It's through SMS. SMS is pushed. Less than 10-minute duration, immediately it will go to your this thing, first level staff. Also down restoration time, everything will go. Then 12 hours, it will be escalated for L2 once in a day. 24 hours supercritical sites, critical sites. There's some defined frequency. So escalation mechanism is available. I will not read it verbatim, but it is there. So your sites are not getting restored, the next level will be alerted through SMS alert. But all these things, important is that SMS alerts are coming. But he should be sincere about it, to read it and then ask why escalation is there. Then only things will improve. Suppose he should act on the escalation officer who is available. Suppose a site is down more than 12 hours, supercritical. So is he reading just SMS or asking also in the field? That is the important part in this. Sometimes we see they read the SMS and wait, it will happen, it will automatically. Then escalation officer will not serve any purpose. Another insight, you need to update the region of fault in CNMC for all type of faults more than 24 hours. So this will give the analysis of, I will show you what type of analysis is coming. So 24-hour fault are crossing, definitely in your BS. So whether input the reason is most important for your management decision. All fault crossing 24 hours, region of fault should be known to first BTS owner, then is escalation officer. What is the reason that it is getting fault more than 24 hours? So region update facility is available in the CNMC. Sorry. Because you need to monitor this more than 24-hour fault at your table. Because it's not anything, it's your job. 24 hours, you have to take care. So what are the carriers categories which we have planned into it? So they will say media kharab hai. You will hear about this, media is faulty, as OFC break hai. So we have categorized, he has to input also ki whether this OFC which is break is to be maintained by SSA or CNTX or it's a BBNL OFC. So drill down, you have to do up to this level also. SSA, OFC kharab hai, OFC faulty, it's not sufficient. Suppose you ask your person, what is the problem? He will say OFC kharab hai. Who is to attend? He should input it. So you have to then, as a BA head, either you have to pursue with CNTX if it is crossing 24 hours, or BBNL also you have to pursue. Or within SSA there is some problem that your team should attend. So all type of issue, EB pole break, there are many regions are there which.
OFC मीडिया में तो अभी कुछ होता है, कार्ड वार्ड भी आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया में, अलग दिया है ना, इसमें कोई कार्ड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, मतलब सिस्टम प्रॉब्लम, यस। तो मतलब OFC ओनली स्पेसिफिक की ब्रेक हो गया फिजिकल कोई, OFC ब्रेक नहीं है तब भी मीडिया फॉल्ट हो सकता है। हाँ लास्ट। So so transformer faults may be there. Many reasons which we could understand. We have listed. You can categorize it and ask your team to put a correct category. Suppose mains failure is there, so you will come to know the seat side is down. Mains failure is there, then you can inquire from the person BTS owner why it is mains failure prolonging 24 hours. 24 hours is we have seen 3 days, 7 days, 15 days also. At our home can be tolerate more than 3-4 hour outage when our neighbor is having electricity and BSNL BTS is not having. So you should ask why 24 hour it is crossing only for BTS. All neighbors are having enjoying electricity there. So now I will show you this this thing. So when we have done the analysis of whatever data you have input. So more than around 45% fault is in transmission media of your all whatever crossing 24 hours. So that's not a new thing for most of you, but even then analysis is available with us. Yeah, around 45%. This has increased also when we compare with September. So this blue bar is showing September data as per the system, and another this red bar is December data. December is 4th December yesterday. So 45% of your fault which are available in system in the range of around maybe 2000, 24 hours. So around 45% in media. Mains failure is very high. So mains failure means it is not because of battery. Please keep it. So 24 hours, so anyway battery will not take load. So this mains failure is actually mains failure from the outside. So around 17% sites are prolonging more than 24-hour electricity disconnection. It's a very simple to attend, but no old equipment, transmission media, everything may be okay at those places. So hardware BTS, it has come down slightly, but 13% is still there. Regions. But we are having this card repair tender now in place, so we need to see some improvement in this mini link fault also due to hub sites. Hub site is down, so then other sites are also down. So super critical. That's why this classification comes in picture. All hub sites are put into super critical category by the system. Power plant also is constituting 5% of the sites. We are hearing that power plant models we are not able to repair, so site is down more than 24 hours. Whatever arrangement you have made, you have to ensure that power plant module you shift here and there and get repair faulty modules. Owner issues are also there. Now it has come down. So a lot of work has been done in the field. Rental issue is not there now. So there is no problem like that. And other issues, of course. So this type of analysis is only available with you. You can do for your BA also. See what are the regions. So you can definitely initiate your corrections. So with all of you have putting a lot of efforts together with corporate office and circle office team. So this is a motivational slide for you. This is a motivational slide. So this is output of all of you, not only corporate office or circle office. You are working for it. 99.5, 99.8. वो तो अभी पीछे है काफी. Industry that we are not discussing. So this, all of your efforts is appreciated by this slide. You can always check. So there is an improvement of 5% during last 6 months. So 90 to 95, 96 is very difficult. 96 to 97 will be more difficult. When you reach near 98, then improvement is getting more and more difficult. So this is a motivational slide. So no firing. So only good thing. So this 96, we should see 97, more than 97% in December. We are 97, 98, and by March, February, when we will get most of the batteries installed, whatever has come, and definitely you will cannibalize also some recovered batteries. Make 2-3 battery recovered, you can make 1 good battery sets. So we should see 98 to 99% in March. So a lot of works will be required to be done by you in transmission media also. It will not happen simply now. So now further, which circle has done what?
during last 6 months. So this is an improvement column is there in this. So I am just focusing on improvement column. Because this is improvement because some circle is having good already. So he's good only. But those who were not good earlier, now they have improved. So we appreciate that also. So this Calcutta, Kerala, Punjab, AP, all are these good circles which are already 98% plus. So many circles are 97, 99. So somebody was asking what is the industry trend? Who was asking? You were asking. So you can see within BSNL also trend, circle trend. So which circle you belong to? J and K. So you can say your trend and Kolkata trend. That's all. Well, Leh is difficult area that we geographically we also appreciate it. So even then, the circle trend is available within BSNL. So definitely we can say this Kerala and Kolkata, Punjab also very catching up very fast. So already 99.37 we are doing within BSNL. So there may be some job, you may have some advantage, no advantage are there, but definitely your focus will turn the situation into your advantage. Whatever. Now, when we see the improvement, I will just highlight improvement. This Rajasthan has done 5.48% improvement. Chhattisgarh, yes, Chhattisgarh 9.85% improvement. So they have done 10% improvement last 6 months. So it's not a very simple achievement. So a lot of hard work must have gone in all those circles. Because we have not allotted anything extra to any circle. It is being given uniformly to all. And he was rewarded also in HOCC, Chhattisgarh. Even Bihar also has shown 8.9.3 improvement. And Jharkhand also 8.73. Karnataka in South, yes. As per South standard, yes, Karnataka is low only. But definitely things will improve there also. So you can relate your BA availability first with your circle and then what we are doing within BSNL. So this is available to you slides also. So you can have a look at on later on also. So this is the situation of MTTR. How far how we are faring in the MTTR that we discussed less than 120 minutes. So I just put it in zone wise just for your information and be aware of what we are achieving currently. So in South Zone, AP Circle is achieving 84 minutes and Chennai 162 minutes. Not a good one, but there is a range 84 to 162 minutes in South Zone. Similarly, North Zone, Rajasthan is doing good 92. UP is 147. So this is the range. Zonal flavor I am showing. So, Kerala network availability is best, but MTTR is 153. Yes. MTTR is 153. Network availability is best. So whatever. Yes. And I will tell you one more thing. When you install more and more batteries, then your MTTR will increase. You will surprised to know where you are installing batteries and MTTR will increase, and you will say what has happened because your denominator will reduce. अभी तो light जा रहा है, light is going coming small distance. So ठीक है मतलब even then so we are when we just analyze one data, we are now ignoring fluctuations of 15 minutes while calculating this. So when we ignore fluctuations of 1 hour, then it will be 3 times. So then it will be actual picture that we are trying to see whether we can just discuss with you on that parameters. So low traffic sites we call because we are issuing some letters also low traffic sites. So how we classify low traffic site that is just an informative slide for of you. Its actions are known to you because what we are doing, how we say low traffic site, we declare it. Voice traffic GSM through G less than 30 lungs per day. All these figures are per day only. So it will be categorized as low traffic sites. 3G sites with 5 GB data or less, it is a low traffic site. And if it's a 4G, then 10 GB site we then classify it as a low traffic site.
from the voice and data perspective, and then you have to see the reason why it is low traffic. Now this line, what is a site with low traffic and low availability. So if suppose for a particular BTS availability is low, then you can say the availability is not there, so traffic may be low. So you have to work for increasing the availability of that particular location. That we are discussing with you to just have a list of all BTS of your location arranging in the ascending order of availability. So suppose your BA is 95%, and even then around 10 to 20% BTS can be there which are less than 50% availability. So you have to work on availability improvement, traffic will also increase mostly. The second is very different discussion is required on this. You are having high availability also. Availability high, even then traffic is low. So obviously some sales efforts are not there in those BTS. Maybe retailer may not be there, or retailer might be not functioning. Highway sites हो सकती है. Yes, you will find some reason here. I am discussing a major point, but you are saying highway side. I am not denying it. मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ. हाईवे पर तो आपको कुछ करना नहीं, दूसरे में करना है. आपको सेल्स, आपको चेक तो करो वहां पर रिटेलर हैवी है कि नहीं वहां पर. So definitely highway side we are not denying, it will be there. Availability may be high but low traffic, but it is very less percentage. Other percentage is very high. The sites are not on highway. High availability is high, but you are not able to sell the same in that place. हाँ, बस ये आपको सब काम करना है ना. This is an operational achievement. So yes, high हो गई देखो. तो ये आपका फिर achievement है ना. This is an operational achievement. I am not discussing any practically thing. You will do a lot of things once you reach there. Once you reach there, all this detail is available side wise. Only thing is that how you put your team to find out the data and analyze it. Reports are useful only if you analyze it. Otherwise, a report only. Definitely, I will not expect all of you to just do everything, but you have to put your mechanism. Your team should analyze and tell you, sir, site is very highly available, but even then traffic is not there. So we are discussing 99% availability with you. You will achieve also. What was the last point? Revenue. Ultimately, it should generate in the revenue also. 99% availability, no revenue, what we will do? Then one reason he told you, another reason I am telling you. Suppose somebody wants him, whether he can get it in that area. वो भी होगा. रिटेलर में नॉट फंक्शन और रिटेलर अपॉइंट ही नहीं हुआ उस एरिया में. कोई फूड ऑन स्ट्रीट नहीं होगा, कोई पॉस नहीं होगा, और होगा भी तो वो कुछ कर रहा होगा. तो अब आपकी अब टीम जाएगी वहां पर, तो दे विल टेल यू, सर रिटेलर भी है, सिम भी बिक रहे हैं, पर तब भी ट्रैफिक नहीं है. देन यू कैन अचीव व्हाटएवर यू आर सेइंग. साइट का आपका जो कवरेज एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन है, वहां कवरेज नहीं है. तो ये ठीक है, आपको ये देखना चाहिए. All these points I am telling you just to have a food for thought. Then you can work on it further. How you want to take it forward. External alarms I have discussed with you why it is important, because it will send you an SMS alert to your BTS owners. These are 4 infra regions only which you are extending alarms. Mains failure, site on battery, site on DG, and rectifier failure. So whatever percentage is high, then definitely your team will get alert early. So it's a very important activity. And what is the status that I will show you. Few circles have achieved at this. I think I will not go into detail in this data that you can see on these slides later on. But some circles have achieved 100% also, some are in the range of 90%, and very few are not done. Suppose Uttarakhand is there, Haryana maybe it is less only. So they may be doing on this. So overall country achievement, we have achieved 82%. 82% of the sites are having alarm which are extended to our portal and mechanism for generating SMS alerts. So these are some regions shown, and I have written also what you can do. Lack of connectors and cables can be arranged. You can collect from the co-located BTS sites, as multiple items are available at such site. Same may be utilized some other site also. Suppose a duplicacy of availability cable is there, you can take out one cable and place it on the other side. Lack of alarm panels. Some solutions are developed locally. Faulty alarm BTS cards.
some solution already developed. But even then, power plants are coming also now in field. So definitely you can improve the availability wherever it is not possible. There are various ways to do it. Some have done also. You can check with our team in corporate office and circles other also that we can guide. Sometimes VSWR faults are also there. So this may be attended by sending rigor. Rigor is required in this. So no. BTS door fan not working alarm. Sometimes everything is okay, but BTS door fan is not working. So it should be known and should be attended. So cooling may be impacted. So that we discussed with you initially, call drop rate and these other things, success rates, setup success rate. So we are having a drive test mechanism inbuilt and regularly frequencies also defined by corporate office. So it lists the categories. Suppose your area is having more than 10 lakhs population, cities, we do drive test, complete drive test once in 3 months. So it's a categorization of your BA. You can recognize where you land. 1 to 10 lakh, 4 months we have specified the frequency of drive test. 1 lakh to 50K, at least 6 months you should get it done. And so 12 months for less than 50,000, and especially for national highway and rail routes. Every 6 months you have to conduct it, and state highway you have to cover once in year. So some other terminology which you may be hearing. सर So- जो ये ड्राइव टेस्ट है Tools. ड्राइव टूल है ड्राइव टेस्ट टूल्स है सर Tools का J&K का issue है. हमारे लेब ये में सर वो टूल्स ही अवेलेबल नहीं है Yes, तो हमारे लोग कर ही नहीं पाते But I think मतलब हम tender has happened, so tools will come now. J&K का yes, but you can get it repaired. I ask your CGM to get it repaired at least by that time. You at least repair one. नहीं तो that circle has to repair. Circle has to repair for circle. Unless new is coming, you can repair it, get it repaired. So there are two types of independent drive test we are doing, and operator assisted one drive test try is also doing. So that we are giving you information to assist the try team. So how this is QoS improvement is done? You do the drive test. First you do the drive test. You will do some RF optimization. Once you identify some issues, your team will do some RF optimization. Then retest is important. After doing the optimization, you have to retest it. And even then some problem is there, then you have to do again RF optimization. So unless this cycle is to be repeated, unless it is solved. So it's not like that only one time you do the drive test and attend it. You have to retest it, re-drive test. So how do we recognize your work? We are issuing some ranking, circle ranking, of course, BA ranking also we are doing. BA ranking, SSA ranking, employee ranking, outsource agencies. So these definitely we are recognizing all of your efforts, and all these rankings, BA ranking and SSA ranking, now we are doing zone wise also. As an MDTR base or availability base, we are doing, we are specialized recognizing those SSAs which are performing better in a month. Monthly, we are doing this. So outsource agency also ranking are being issued. So what are the parameters? What parameters if you focus upon will make you come up in the ladder, will improve your ranking. So weightage 65%, that is prepared by getting reports from various systems. So 65% is weightage for network operation parameter, 25% is for finance performance and sales and marketing, 10%. So this 10% now we have changed. This slide is not updated. This is not gross connection growth now, it's a quality of acquisition. We have changed the now this parameter I am saying quality of acquisition. There is no parameter for cross connection growth. कम अगर ये कम जो हो हो कम क्या किया- रहा है कि ग्रॉस अगर- कनेक्शन के टारगेट्स हायर साइड में हैं नहीं, कम किया- उसको अचीव करते हैं तो क्वालिटी एक्विजिशन नहीं होता हाँ, quality that you understand. So, नहीं, I think we have reduced the target. फिर और भी इसमें फीडबैक आ सकता है.
So this we have removed from the ranking also. So we are not after the gross connections which are not paying you anything, and they will not be there for 2-3 months. We are not running after those connections. हो गया ये बंद कर दिया अभी उसमें स्लाइड अपडेट नहीं हुई है, बाई चांस मिस हो गई है। नहीं हमने कर दिया हमने वो एग्री तो हो गई किया है क्योंकि हाँ नहीं एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन। अगर आप इसमें आपकी में 100 कनेक्शन बुक किए 90 कट गए, ऐसा हो रहा है, 10 से 15% भी है कुछ ऐसे में। Sorry, I will speak English. 90 are disconnected out of 100. No use. You are only doing some expenses only in acquiring the customers. Huh? Expenses only. I am not saying wastage. Expenses only we are doing, and so we have changed this also. Now we will see the results, because this is also a very good thing. I think sales and marketing, Sushi will come today. She will tell more about it. So 40% weightage is there, which you are putting a very good effort, super critical, important, normal side availability. This weightage is very high now in your ranking. So other things which we are not discussing today, I have halted sites, low traffic sites, drive test conducted. Halted sites are low, then definitely you will get up in the ranking. Sectors with CDR 2%, 95%. So all these parameters you have to see and discuss it within your team. When you discuss it, when you make it a point to convey to your team, definitely ranking is one part. Ranking will improve, but services will improve. Huh? चलो वो टारगेट whatever is fixed with circles ठीक है। आपके टारगेट 7% का है। ठीक है, ओके, I will review it. ठीक है। That MNP ratio, daily voice traffic. Well, there are many things. These are all operational important parameters which you need to see also day-to-day basis, because it's not like that only availability we are not discussing. Availability is only basic pillar. A lot of other things are also there. So some weightage variation is there, and few areas which were not related to BAs and SSA ranking, which we have removed out of this. So you can just cross check with it. So here also this parameter will change. It's a quality of acquisition only now. So we will update this slide also, my mistake. So employee performance, BTS owner that we discussed, BTS owner. So I was just making you all available with the terminology. BTS owner is assist on these 3 parameters. Whatever sites he are doing, maintaining availability 60% weightage, repeat fault count 20%, MTTR 20%. So all these 3 are bad. So, how much time is there? I will. Excuse me. How much time is there? Okay. So I will wind up. So these parameters are assessing your BTS owner. So he should focus on all these 3, then he will be definitely recognized and appreciated from corporate office also and from your side also. So outsource agency also same parameters with respect to employees and outsource agency performance, availability, MTTR and repeat fault. So whatever one more drive we are starting, we have identified BTS now, which are high count of repeat fault. So that you will be getting later shortly. And we have seen many BTS are having a fault more than 500 also in a month. So you have to attend all these things, because transmission media will be fluctuating. That we will start. All these reports are available, of course, that you can see without waiting for us also. Repeat fault should not be there. The repeat fault we are saying, suppose a site is going down more than 10 times in a month, then it's in repeat fault. So outsource agency tender you must have floated by now as per the new policy. Because why it is important, I will tell you next slide if it's coming. Regular activities are included, preventive maintenance, and we have checked up with all of you. I think most of you have done it now. So this should be as per new policy only. Because I was uniform tender guideline is must for upcoming automatic billing system. One billing system is getting now deployed. It is started from Kerala circle. One SSA they have migrate also.
So BTS outsourcing management system is now going to be in place in your circle also from January onward. We are migrating few more select SSS to just ascertain the efficacy of system. So what is having, what functionality will be available? This is an important slide, and I will may finish it. Partner registration and their onboarding on the bombs, fault docket booking, various failures at BTS sites. Now we are collecting real-time alarm also from the field. So there is a gap now 15 minutes to 30 minutes. So whenever alarm is generated in the system, your BTS outsourcing team and BSNL team will get the fault docket booked automatically from the system. So you will come to know that this fault has happened. So outsourcing quantity rates, SLA penalty, etc. as per respective vendors that will be inputted. Partner-wise SLA penalty generation and outsource partner billing data will be generated on monthly basis. Verification you will do by and acceptance by partner. Then there is a submission of electronic invoice by partner, and then online processing of invoice for the payment. So all process will be automatic. Only data will be generated. You will verify it, and the partner will submit this invoice electronically. Other authentication, etc. We are incorporating, and work is going on this. Reason? वो आपको करके देगा ना सिस्टम, ये नहीं सिस्टम करके देगा आपको एसएलए पेनल्टी सिस्टम कैलकुलेट करके देगा एज पर टेंडर। आपको माइग्रेट करके बताना, जैसे कोई सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा तो वो करेंगे, पर ऐसा नहीं बताया हमको। अभी माइग्रेट किया है इसमें अलार्म्स के बाद बेसिस में फॉल्ट डॉकेट बुक होगा, वो बीएसएनएल को अटेंड करना है तो बीएसएनएल के पास जाएगा। और इसका मूवमेंट ऐसा रखा है कि पहले पार्टनर पे जाएगा, पार्टनर कह देगा, पार्टनर पे से कि दिस इज नॉट माय फॉल्ट, देन इट विल गो टू बीएसएनएल टीम, देन इट विल बी टेकन आउट ऑफ द एसएलए पेनल्टी. The flow is there, even then some lacuna, but it's going to be a very game changer system. And this system will be game changer for BTS outsourcing maintenance, because all things will be recorded, no manual work intervention. The system will calculate the penalty also for partner. They will do the electronic invoicing, no physical invoice in any office. ERP already entered, payment released. Just like FTTS policy. So there is definitely some dispute resolution workflow is also there, but definitely, and it's my user access, BSNL outsource partner as per authorized privilege. Mobile app will also be there. So I think quota is going to migrate from Rajasthan circle now, and one SS in Nagpur or what from Maharashtra circle. So इसमें लिखा हुआ है for management, fault docket booking for various failures will be there, partner wise penalty will be there, generation of partner data होगा, everything will be there. So this is status. Code term has been rolled out on 6th November. Phase 2 is work in progress, ERP migration and mobile app. This is expected by to be in place by December end, but we are told, and migration will start from January to March for all SS. So this is the timelines. So I think O&M best practices that we have discussed for lot many. It is in this slides, you can go through it. So I will, एक क्वेरी था सर, यू डोंट नो, तो अभी जो ये O&M का SOR जो आया था सर, आई डोंट नो वेदर टू से SOR और नॉट, जो 3000 का जो कैपिंग है, एक्चुअली वो सिटीज के लिए तो इट इज फाइन सर, बट हमारे जैसे ले वाले ज्योग्राफी में इतने फार फ्लंग एरिया में इतने स्कैटर्ड बीटीज है सर, तो उस लिमिट में वो काम कराना बहुत मुश्किल था। हैव यू सेंड द केस? आई थिंक यस सर। कहाँ पे जाए? सर्कल तो भेज दिया है, सर्कल से आगे भी तो आएगा। आप मेरे ख्याल पॉइंट समझ गए हैं सर। समझ गए भाई, देयर आर बीटीज, एवरी पॉइंट इज अंडरस्टूड। Corporate office will work only when your CGM is forwarding the. ये रिक्वेस्ट है, ये point is important, but have you sent the case? Any deviation is required from policy, some case has to be there. You sent it, then we will definitely consider. For any issue, I am just telling anybody, first discuss with your circle. If circle is convinced, CGM is convinced, please forward. Definitely, we will also consider it favorably only. वो आपको पॉलिसी में थोड़ा देख के ही करना पढ़ लीजिए।
So I think, well, this is a very important topic which is interesting for all of you. So whatever food for thought I have given, you will carry it forward and definitely do. And those who are listening through this live streaming also, it's for them also. There are many points which we are not discussing here, but whatever are important, we have listed. So you have to discuss it further. It's not one man show or one man job. It's a collective job, and you discuss so many things will emerge. Thank you so much. If any question is there, then we can discuss for 2-3 minutes. Anything can be discussed. I guess the house is keeping the questions for the evening session, sir. Okay, no problem. Thank you, thank you. Let's have a use round of applause for the sir for such informative and interactive session. Thank you. Now I would like to call upon our beloved PGM Shri P.N. Dhore sir to facilitate Shri Deepak sir. Thank you, Yash Panekar sir, for correcting me out. Yeah. It's about 1:35 by my watch, so we are planning to meet up by 2:30. Yeah, thank you.
Hello, may I have your attention, please? On behalf of LTTC, I would like to welcome all the participants for the post-lunch session. Now, so on behalf of this house as well as LTTC, I would like to welcome Shrimati Suchi Srivastava to provide an insightful insightful presentation over the sales and the marketing of the mobile services. So let's have a huge round of applause to welcome Ms. Srimati Suchi Srivastava. Good afternoon, everyone. Am I audible clearly? So good afternoon to all. I'm Shuchi Srivastava, GM Sales and Marketing at BSNL Corporate Office. I'm also looking after corporate marketing at BSNL Corporate Office. So first, what are the activities we are handling in the sales and marketing cell at corporate? The policy related to our channel partners, the commission structures, S&D policies are being dealt in our section. Then constantly evaluating the tariff of our competitors, then feedback receiving from our circles and our field units. The tariff proposal for CM users are also being dealt, modified or revised by our section. Then monitoring of call centers. We have zonal level call centers. And there is one call center at Noida also, which is handling the tele-verification. Also, we are running one call center for Department of Public Reforms and Department of Administrative Reforms and Public Grievances. So that also is there. So these Noida call centers are directly dealt by corporate office and other are dealt by the respective circles, zonal. We also have customer relationship management system, which are integrated with the call centers for handling of users' queries and their complaints. Then also the agreement with the content partners for the bundling of entertainment or gaming contents with our plans. Those also are being dealt by our section. Agreement with the ePIN distributors is also dealt by the sales and marketing cell at corporate office. And then the IT tools and applications like the self-care app, the tender was done by our section. Sanchar Aadhaar presently is being looked after by the CFA section, but a new tender is under process, which is there in our section. Then also the C top-up system by Pyro present, that is also completing its tenure and new tender is under process. That also is being dealt apart from other activities. So these are some of the brief activities which we are doing at sales and marketing cell. इधर करना होगा. किधर से होगा? लैपटॉप से? नहीं, इससे होना चाहिए. या हाँ, अच्छा, स्लाइड मोड पे कर दें. So sales and marketing, we often use the word sales and marketing together. So marketing and sales both aim to increase the revenue for the organization, but which is more important for any organization, whether marketing or sales?
Yes, definitely. So marketing should be good. If marketing is done properly and more effort is put on marketing, then definitely we have to put less effort on sales. So marketing we are doing as advertising, promotion, selling, branding, positioning, and then some research and analytics. So as BA heads, you have to see that your S&D team, they are doing proper marketing so that we can achieve our sales targets. And marketing mix, as the theory states, consists of product, pricing, placement, promotion. What is happening? So this slide I have taken, it presents the customer orientation. What should be the orientation for customer for any organization? Traditionally, there used to be the frontline people only used to interact with the customers, and top management used to decide the policies and middle management implementing the policies. Frontline were the actual implementers and interacting with the customers. But now the orientation of the organization has to change, and every organization should follow this top-down approach. That is, the customer is on the top, and all the frontline people, middle management or top management has to be customer oriented. So whether they are the BA people at the BA level, people at the circle level, or people at the corporate level, we all have to be customer oriented. And we have to keep customers on top for our policy decisions. इसको क्या करना है भाई? अच्छा, backward forward. So the BSNL sales strategy should be that every employee should be the salesperson of the company. We focus on the acquisition or retention of our customer, and we should incentivize our channel partners with best possible incentive so that they are motivated and are in a position to sell BSNL products for our profit. So for the sales team, the focus area required is strengthening the channel distribution through empanelment of franchisees and other channel partners, monitoring and incentivizing the sales and distribution workforce for the sales promotion, then continuous evaluation of market dynamics and formulate responsive and competitive sales strategies. Conversion of demands and leads into revenue generating connections, exploring new channels, expanding point of presence, and then the most important, retention of our customers. तो ये चाहे हमारा BA level हो, चाहे circle level हो, चाहे corporate level हो, these points should be the focus area for all the people involved in the sales. That is our sales team. And for the marketing push, the team should have focus in these areas like visibility improvement करना है. इस पे बहुत insistence है. हमारे director साहब भी बार-बार कहते हैं कि we have to put flex, dangler, some visibility should be there that BSNL exists here. So कुछ display या इस पे हम लोग corporate marketing cell से भी regularly review कर रहे हैं circle से. I think वो information BA तक भी जा रही होगी that visibility should be improved. The BSNL presence should be felt to the user. Then regular road shows, मेलाज करना है channel partner के through. ये I think हो भी रहा होगा. For branding and visibility, wall painting, posters, pamphlets, and other BTL activities. Then digital marketing through social media. आजकल every organization is following the digital marketing, and we are also using our social media. Time to time, we are putting some creatives. Then we are following up with circles, and circles in turns must be following with the BAs so that our marketing information is percolated down below. So digital marketing at circle level, at BA level is also required. Then updating of tariff and other promotional offers
हमारी जो टीम है उसको भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, व्हाट आर द न्यू टैरिफ प्रपोजल विच हैव बीन ऑफर्ड, and there should be some training also to our channel partners that these are the new tariff plans or the offers which have been introduced. Then promotional marketing, SMS, OBD, हमारे GP1, GP2 customers को bring back करने के लिए. तो जो BSNL की टीम स्ट्रक्चर है अंडर प्रोजेक्ट विजय, इट वाज कंसीव्ड, एंड एट BA लेवल DGM or AGM is there looking after the sales and marketing at the BA level, and in under him or her this franchisee manager and retail managers are there. So I think it must be franchisee manager and retail manager must be there in every BAs, and these franchisee managers and retail managers are looking, coordinating and monitoring the activities of the franchisees and the retailers. And also they are equipped with the FOS so that they can coordinate between the franchisees and the retailers for the inventory distribution, for target and monitoring. So the key activities for the franchisee manager, as the name suggests, is to monitor the franchisee performance. That is number of activations, how many CAF has been done, sales, and also the target setting for the franchisees. So franchisee manager at the BAs present, they are doing these activities, then compiling feedback on the issues related with retailers, FOS, franchisees. Complete understanding of the offers also, and then distributing the information among the franchisees and retailers, collecting feedback from the FOS on what retailer wants, and then accordingly deciding the further course of action. Similarly, retail managers are also there. So retail managers reviewing the performance of the retailers, collecting materials for distributing to the retailers, and understanding the latest offers and distribution of the information to the retailers. Then they have the franchisees have the FOS team. So fleet on street, they ensure availability of BSNL products at retailer shop. CAF collection, अब तो खैर physical CAF नहीं है, but then viability of BSNL, sorry, visibility of BSNL at retailer shop. ये सारी चीजें, communication between the franchisee and the retailer, so FOS is taking care of these. इसी connection में I would like to mention about the SFAS system is there, which has been given to the field units, Salesforce automation system. तो अभी इसमें around 8,000, 9,000 users have been created, but it is not being used in the field. So SFAS में there is features are there where the FOS can visit the retailers, can identify the location, वो अपना location उसमें tag कर सकता है, अपनी photo tag कर सकता है that they have visited, because FOS were not visiting our retailers. So this system was procured and was made available, but इसका usage नहीं हो रहा है. So to collect the correct geolocation of all the POS in the SFAS, उसको वहां पे विजिट करना है, उसका जियो टैगिंग करेगा, एंड देन अपनी फोटो डालेगा, और पॉस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या सामान चाहिए, वो सारी उसमें कैप्चर करेगा. सो डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर एंड फंक्शनैलिटीज आर देयर. फ्रेंचाइजीज वाइज इट कैन बी मॉनिटर्ड, सर्कल कैन मॉनिटर्ड, logins are given to the circle nodals or the BA nodals. So these details captured can be used for monitoring whether the FOS is actually visiting the POS, is collecting the details or not. हाँ, नहीं तो क्या, तो यूज तो करें, अभी तो यूज ही नहीं हो रहा है. आप सिस्टम तो है लेकिन यूज करें तब फिर उसको हम वो एक्शन भी लें. हाँ, एक बार यूज होने लगेगा देन इंसेंट. हाँ नहीं, फ्रेंचाइजी कैन क्रिएट बीट प्लान ऑल्सो, सभी एफओएस के. आपके बीए में यूज हो रहा है? हम्म.
इसी उसी की मॉनिटरिंग के लिए है सिस्टम ये, बट ठीक है, ये सब ये भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं फर्स्ट। अभी तो हम इसका यूसेज बढ़ाने के लिए, बिकॉज सर्कल्स दे हैव रेज सम इश्यूज कि ये नहीं उसमें मिल रहा है, उसमें बीट प्लान नहीं सेट कर पा रहे हैं, उसमें ये फॉर्म नहीं मिल रहा है। सो दोज वी हैव टेकन अप, वी आर आल्सो फॉलोइंग अप विद सर्कल्स। ठीक है, वो उस डायरेक्शन में भी एक्शन लेते हैं। तो ये आपके बीएस से बीस में क्या परफॉर्मेंस कैसी है? एनीबॉडी हैज एनी सर बीए हैज यूज्ड इट? नहीं, किसी के यहाँ? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में लिया है। तो फ्रेंचाइजी अब सिम सेल में ही रह गए हैं। हम्म नहीं वो तो है, आई हैव आल्सो कैप्चर्ड, अभी आएंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। उसी हिसाब से वो रिटेलर्स लिमिट करेगा ना, नंबर ऑफ रिटेलर्स लिमिट करेगा। सर वर्क हो रहा है, उसमें भी वर्क हो रहा है यूसिम वगैरह के लिए। हम्म हम्म नहीं वो दैट वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, वी आर एनालाइजिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन, बिकॉज सिम डिलीवरी अब यूजर आजकल ऐसा हो गया कि एवरीथिंग दे वांट कि उनके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाए। सो हाउ वी कैन अचीव दिस, व्हाट वी कैन डू इन दिस डायरेक्शन, वी आर वर्किंग ऑन इट। हाँ वो तो है, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे सेल्स चैनल हैं, सीएससी, फ्रेंचाइजी, then rural distributors, DSAs, e-distributors, and we are also thinking of having online SIM selling agent, which will be capable of delivering the SIM to the user and also capturing the KYC. So उस direction maybe we are working. And accordingly, these policies, the sales and distribution policy is there for franchisees, for e-distributors, DSAs. The agreement, the working between the BSNL and these sales channels is defined in these policies, and these are part of the SND policy 2018, which is under review, and very soon a new policy will be introduced. So franchisees and about 2000 franchisee territories are there pan India. E-distributors भी हैं हमारे, करीब 7-8 e-distributors हैं, कुछ तो यूरोनेट के थ्रू हैं, कुछ डायरेक्टली impaneled हैं। DSAs हैं many. Rural distributors are there. Then retired employees are also there as our distributors, and universal distributors are there. हालांकि उसमें काम ज्यादा नहीं हुआ है। And this is the snapshot of incentive paid to our channel partners. Franchisee को upfront 4.66% हम देते हैं जब वो स्टॉक लेता है। Then FOS का at the rate of 6,000 per FOS. Postpaid में CAF commission 5 rupees, 25 rupees and 80 rupees for activation, and for 14% of the FMC for the 6 months. प्रीपेड में जो ट्रेड स्कीम, एक्टिवेशन कमीशन, बोनस स्कीम वगैरह था, उसको क्लब करके न्यू कमीशन स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July, and time to time we are introducing OTFs on selected plan vouchers and STVs. Excuse me.
मैडम हम ओटीएफ सारे प्लान्स में क्यों नहीं करते हैं? ओटीएफ का ये लगा कि मींस कॉस्टली पड़ रहा था अपने को, तो इसीलिए फिर अब न्यू कमीशन स्ट्रक्चर में सर हम दिखाते हैं कि वी हैव क्लब्ड ऑल दीज एंड इन द उसमें उसको बल्कि ज्यादा ही हम दे रहे हैं ओटीएफ में, उसको भी अपफ्रंट मिल रहा है। अभी आएगा नेक्स्ट स्लाइड में आई विल कवर। तो न्यू कमीशन स्ट्रक्चर जो हमने 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया था, इसमें क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन को लिंक किया गया है उसके परफॉर्मेंस से, इंसेंटिव से, एंड इससे एक अपफ्रंट इंस्टेंट कमीशन है एंड डेफर्ड कमीशन है एंड सम इंसेंटिव इज देयर। बिकॉज क्या है कि हमारा रिटेंशन बहुत कम हो रहा था इन सम ऑफ द सर्कल्स में, बहुत पुअर रिटेंशन हो रहा था कस्टमर्स का। तो उसको देखते हुए देन QOA has been linked with the incentive to franchisees and also some SIM sales per month target has been given to the circles. जैसे अभी अगर देखें FRC 249 में for franchisee 40 rupees upfront commission is there and for retailer 220, so total 260 we are paying as commission and deferred is 60 rupees. And for eKYC it is 1.5 1 rupees 50 paise for the franchisee and 13 rupees 50 paise for the retailer. So total we are paying 335 and this incentive is given if the benchmark for QOA and SIM sale per month whatever has been decided circle wise is being achieved. हाँ, deferred इस केस अलग अलग है, इस केस में 3 months के बाद है। इसमें मैम लेकिन रिटेंशन बहुत कम हो जाता है, मतलब बेसिकली होता क्या है कि जो कस्टमर को सिम मिलता है वो ऑलमोस्ट फ्री मिलता है। 45 डेज में 2 GB पर डे वो यूज करता है। उसके बाद जो अगला आता है उसमें आपको 28 डेज के लिए 139 चाहिए, 139 पे करना पड़ेगा, तो वो उसकी जगह फेक करके दूसरा सिम ले लेता है। तो मतलब वो भी एक ऐसी चीज है। नहीं, अब वही है कि क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन पे फोकस है कि हमें रिटेंशन करना है, हम इतना कमीशन दे रहे हैं। अब वो मेला में वो फेक मतलब सिम सेल हो रहा है, फिर उसके बाद वो 10 दिन के बाद नहीं हो रहा है, तो हम वी आर पेइंग टू आवर चैनल एक्चुअली जहाँ पे आप देखेंगे सभी जगह सभी वैसे फ्री में ही दे रहे हैं, वोडाफोन का भी फ्री में ही जा रहा है, बाकी सबका फ्री में जा रहा है। यहाँ पे कुछ अगर इस टाइप से अगर हो सकता है कि उसे बिल्कुल फ्री ना पड़े, मतलब कुछ पैसे उसे देने लग पड़े, तो शायद नहीं, उसमें भी सर्कल्स की रिक्वेस्ट है कि सिम की कॉस्ट 0 रखें। अभी तो मार्च तक यही है कि सर्कल कैन डिसाइड, तो वो मतलब फ्रेंचाइजीज भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फ्री में सिम देने का रखें। तो ये हमने मीन्स एक कंपैरिजन हमने बनाया है कि जो पहले हम कमीशन दे रहे थे और अभी जो कमीशन दे रहे हैं। तो अगर ओल्ड स्कीम में हम देखें एक्टिवेशन कमीशन था, OTF कमीशन था, ट्रेड स्कीम में था एंड बोनस मिला के, as majority our channel partners are in the bronze category, so we were paying around 266 rupees, which in the new scheme we are now paying at 335 rupees. So कई circles and field units also say that अभी commission कम हो गया, या franchisees हमसे बोलते हैं, तो we can tell them that अभी we are paying even 26% higher जो उनको पहले मिल रहा था। तो commission हम ज्यादा दे रहे हैं, only thing is that quality of acquisition has to improve. तो ये एक 3rd month QA का मैंने एक टेबल बनाया है, सर्कल वाइज, BA वाइज वी आर नॉट हैविंग डेटा। तो इसमें देखें कुछ सर्कल जैसे यूपी ईस्ट का देखें, सब लोएस्ट है, 14% है। बिहार, हरियाणा, उत्तरांचल, तो हमारा जो पैन इंडिया जो एवरेज है 28%, उससे भी बहुत सारे सर्कल्स उससे नीचे हैं। एंड सदर्न सर्कल्स इफ वी सी तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, चेन्नई हुए या इवन छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो गुड। तो ये QA को अब नाउ दैट इट इज लिंक टू IPMS ऑल्सो, तो फोकस है कि हमें रिटेंशन इंप्रूव करना है। दिस इज स्टेटस एज ऑन अक्टूबर एंड, तो इस डायरेक्शन में वी आर वर्किंग कि हमें कस्टमर का रिटेंशन बढ़ाना है। तो ये सर्कल्स जो हैं इनके, इसका परफॉर्मेंस आगे भी जो डेटा मैं दिखाऊंगी उसमें सब में रिफ्लेक्ट करेगा कि हाउ दिस इज रिफ्लेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्कल्स एंड इन टर्न BAs। ऐसा कुछ प्लान है मैम जहाँ पे बेसिकली 4G सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब वगैरह में, तो वहां से अगर ZTE का इक्विपमेंट है वो निकाल करके ऐसी जगहों पे भेजा जा सके जहाँ एरिक्सन साइट्स हैं? सुल्तानपुर तो भिजवा देंगे जरूर। भाई ये सब तो
डायरेक्टर साहब बताएंगे ये आप मेरे से सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करिए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेबिलिटी आने में ही काफी टाइम लग जाएगा। इरेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप मतलब रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जा रहा है हम लोगों के लिए। चलिए ठीक है, अभी इस पे फोकस करते हैं। तो ये जोन वाइज मैंने बनाया है 3rd मंथ रिटेंशन स्टेटस सितंबर का। इसमें देखिए कि ये दिस इज फॉर ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में हम मेजॉरिटी ऑल्दो दे आर नॉट इन लेस देन 20%, एंड उसका रिफ्लेक्शन हमें वहां भी दिख रहा है कि उनके सर्कल्स अभी फ्रेंचाइजीज भी लेस देन 20% रिटेंशन में नहीं है। और बीएस कुछ है इन असम एंड बिहार, some of the BAs are there where the quality of acquisition is less than 20%. Some are in 20 to 40% also, but very less, about 49%. अच्छा ठीक है, 49% are there more than 40%. तो East zone performance that way is better. लेकिन जब नॉर्थ जोन में आएंगे तब देखिए, क्योंकि वहां हमारे जो लेस देन वाले आ रहे थे लेस देन 20% में, मेजोरिटी वर द नॉर्थ जोन सर्कल्स। दिस इज फॉर वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के भी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के बीएस हैं। एमपी के 6 बीएस आर हैविंग लेस देन 20% ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन। मतलब यूजर सिम खरीदता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको फेंक देता है। हम चैनल पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रिटेन आवर कस्टमर्स। फ्रेंचाइजीज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। So in west zone about 31% are having 20 to 40%, and about 40% are having more than 40% of the quality of acquisition. ये है नॉर्थ जोन के सर्कल्स। तो नॉर्थ जोन के देखिए सभी बीएस, मोस्ट ऑफ द सर्कल के बीएस जो हैं दे आर हैविंग लेस देन 20% ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन, एंड फ्रेंचाइजीज ऑल्सो मोस्टली आर हैविंग लेस देन 20%। उनकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से इट इज रिफ्लेक्टिंग टू द ओवरऑल सर्कल्स परफॉर्मेंस। वेयर साउथ जोन में आप देखें, साउथ जोन लेस देन 20% में हार्डली ओनली 1 इज देयर इन कर्नाटका, अदरवाइज दे आर हैविंग गुड quality of acquisition, and accordingly it is reflected in their performance also. Their market share is high, their QA overall is also high for the circle. हाँ, उन लोग मार्केटिंग पे बहुत फोकस करते हैं। लाइक केरला सर्कल से डिस्कस हुआ था, तो उन लोग टारगेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज वगैरह उन्होंने की हैं, और भी दिया है, हमें इनपुट दिया है। सो आई थिंक वी विल बी एबल टू शेयर अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। ये फ्रेंचाइजी वाइज एनालिसिस है, सिमसेल एनालिसिस, मंथली सिमसेल। तो ये भी ईस्ट जोन में देखिए हमारा जो फ्रेंचाइजी है वो लेस देन 50, मेजॉरिटी जो है लेस देन 50 सिम सेल कर पा रहे हैं पर मंथ में। वेयर साउथ जोन में हम देखें तो दे आर एबल टू डू गुड सिम सेल। उनका क्वालिटी ऑफ रिटेंशन इज ऑल्सो हाई, एंड सिम सेल ऑल्सो दे आर एबल टू डू गुड बिजनेस। नॉर्थ और वेस्ट जोन में देखें तो नॉर्थ जोन में सिम सेल तो काफी कर रहे हैं, काफी फ्रेंचाइजीज हैं विच आर मोर देन 500 सिम सेल्स कर रहे हैं मंथली, बट वो रिटेंशन नहीं हो रहा है। वेस्ट जोन में भी अराउंड 200 to 500 में काफी फ्रेंचाइजीज हैं जो सिम सेल कर पा रहे हैं मंथली। सिमिलरली द सी टॉप अप सेल ऑफ फ्रेंचाइजीज का एनालिसिस है। तो एज यू आर टेलिंग ऑल्सो कि उनका अब बिजनेस, ये जो ज्यादातर सी टॉप अप रिचार्ज का बिजनेस इज शिफ्टिंग टू ऑनलाइन। सो फ्रेंचाइजीज अब सी टॉप अप सेल में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ईस्ट जोन में भी मेजॉरिटी आर हैविंग लेस देन 5 लाख ऑफ बिजनेस। साउथ जोन में इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम आर about 17 franchises, they are able to do more than 40 lakh of business also. Then see top up sale for the north and west zone. North zone में majority are having less than 5 lakh of business, and in west zone also majority are in the less than 5 lakh of business. So see top up में अब franchisees को viability नहीं है, and it is shifting towards the online recharge system. ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे रिटेलर्स का है, इसमें भी अगर देखें तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है।
एक्टिव रिटेलर्स ना तो हमारे इंक्लूड हो रहे हैं ना फिर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो एज इट इज फिगर मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट स्टेबल सी है। तो रिटेलर्स को हमें इम्पैनल करने में क्या इशू आ रहा है, व्हाई रिटेलर्स आर नॉट वर्किंग, एनी फीडबैक? क्योंकि अब 4G के लिए वी हैव टू गियर अप, एंड डायरेक्टर सर अगेन एंड अगेन ही मेंशंस कि हमारे को रिटेलर्स बढ़ाना है। इनफैक्ट वी स्टार्टेड वन वीकली रिपोर्ट आल्सो, बट हमें ज्यादा उसमें इनपुट मतलब वीकली रिपोर्ट मिलती नहीं है, काफी एफर्ट करना पड़ता है, बट रिटेलर्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो एक्टिव रिटेलर्स को इंक्रीज करना है। तो दिस इज फॉर रेस्ट सर्कल। सो यहाँ भी वही है, फिगर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, चाहे वो हमारे FRC वाले रिटेलर्स हो या फिर हमारे रिचार्ज वाले रिटेलर्स हो। इसमें ये भी करते हैं कि जो सेल है ई पिन वाला वो बहुत ज्यादा हो गया है व्हेन कंपेयर टू थ्रू रिटेलर्स या और भी कोई चैनल है। यस सर। तो जो थोड़ा बहुत पैसा आता था वो भी उनका खत्म हो गया, तो रिटेलर का कोई भी अब इंटरेस्ट नहीं रह गया। सेम सेल में भी कुछ ये सब होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो उसके कारण नए रिटेलर तो जुड़ नहीं रहे, इवन जो एक्टिव रिटेलर है उनकी भी बहुत दिक्कत से यस यस यस, हाँ नहीं दिस इज देयर, दिस पेमेंट इंसेंटिव भी बहुत चेंज हो गया, तो उनको 2 महीने के बाद मिलता है, पहले नेक्स्ट मंथ। हाँ ये पेमेंट का थोड़ा सा डेफर्ड है, वो भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि चैनल पार्टनर्स को। छोटी छोटी नहीं, अभी जो स्कीम निकली उससे जीएसटी का कुछ उनका पेमेंट का इशू आ गया फ्रेंचाइजी। नहीं वो ERP में कर रहे थे, उस कुछ विदहेल्ड करने का वो इशू है। हाँ विदहेल्ड नहीं है, अब 2 महीने के बाद उसको मिल रहा है, कुछ ऐसा होता है इसके बाद मिलता है। हाँ तो वो 2 महीने पहले वो कुछ 30 दिन के अंदर या 35 दिन के अंदर तो सभी सर्कल में ये इशू है क्या? बहुत बड़ा इशू है। और बात ये कि हमारा एक फ्रेंचाइजी था जिसने 29 तक काम करा, उसको मैंने कहा मिला ही मतलब लुक आफ्टर कर रहा था, वो महीने में 31 दिन में से 29 दिन काम कर रहा था, उसका कमीशन नहीं मिला उसका। अब वो कहता है कि साहब मैंने अपने कुछ पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं, और वो 1000 रुपये 800 रुपये 900 रुपये वो रिटेलर इनएक्टिव हो गए और वो मेरे तो पैसे रुक गए। तो हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं उनके हर 6 महीने साल में 20-25 हजार रुपये डूबी हम खाई जाते हैं। तो सर वही है कि आप भाई आप BA लेवल पे आप उसको ले आइए सर्कल लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पे जो फॉलो अप। सर्कल कहता नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा ही तो कॉर्पोरेट बना सकते। मतलब बात ये है कि रिटेलर का पैसा, अब रिटेलर का पैसा उसमें उसको मतलब फ्रेंचाइजी का पैसा नहीं मिलना चाहिए, डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ सिस्टमिक इशू, बट मिलना तो चाहिए। इशू ये है कि मतलब कोई इसमें ज्यादा डाउट करने लगा कि फ्रेंचाइजी रिटेलर को पैसे दे 2000 रुपये और रिटेलर जो है बंद हो गया। अब आप कहोगे कि साहब रिटेलर 2000 रुपये दे दिया फ्रेंचाइजी को तो क्या वापस करे जाए, तो देयर हैज टू बी सब सिस्टम ना कि मतलब सिस्टम हैज टू बी देयर, यू हैव टू पुट दैट सिस्टम इन प्लेस। तो सजेशन दे सकते हैं लेकिन कोई माने तो सही। ठीक है सर। मैं तो जब भी देखा ध्यान दिया ना इसमें घुसा फ्रेंचाइजी सिस्टम में, तो पता चला कि 6 महीने 1 साल में 15-20 हजार खा जाता। सर अब तो हमें उस रिटेलर को खुद ही अपने पास रजिस्टर करना है, तो डायरेक्टली वी हैव टू डू एग्रीमेंट विद द रिटेलर, सो वी हैव टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। वो हम बिल्कुल इवन वो भी जो है मैं तो 10 साल पहले तो हम कुछ उसको लेके ना बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पीरियड तक हो जाता जो प्राइवेट वाले तो उनको 1 महीने के अंदर मिल जाता कॉपी कर ले हम लोग। वो 1 महीने के अंदर पे कर पाते थे, अब डिलीजन रेट वो सारी चीजें। तो इसमें कागज वाले कूपन होते थे, कागज वाले आई डोंट नो एग्जैक्टली क्योंकि हम सॉल्व करते थे तो फिर बीच में 5-5 लाख की पेनल्टी लगा इसमें कॉर्पोरेट का क्या रोल है, मीन्स यहाँ से कुछ पॉलिसी में स्टॉप करता है क्या आपको? एयरटेल डॉक्यूमेंट उसको फिर बेचेंगे ओके दैट आई विल लुक इनटू। नेक्स्ट मंथ उसी तरह से ये रिटेलर का भी सी टॉप अप सेल एनालिसिस किया है, तो रिटेलर अराउंड इन ईस्ट जोन मेजॉरिटी आर इन द 500 rupees to 2000 rupees business, and in west zone also they are in the 500 rupees to 2000 rupees monthly business. तो रिटेलर्स इन नॉर्थ जोन भी देखें तो 500 से 2000, तो रिटेलर मोस्टली दे आर एबल टू डू मंथली बिजनेस ऑफ अराउंड 500 rupees to 2000. साउथ जोन में वी हैव सम हायर ग्रेड में भी बिजनेस कर पा रहे हैं, तो दैट परफॉर्मेंस इज देयर। तो अराउंड 3 lakhs हमारे
रिचार्ज वाले रिटेलर्स हैं और अबाउट 70,000 अवर FRC रिटेलर्स आर देयर। सिम सेल भी देखें तो लेस देन 50 सिम सेल ही है इन ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन, and in north zone we majority they are doing less than 50, and south zone also majority in the less than 50 sim sales per month। तो ये कुछ एनालिसिस किया था हमारे फ्रेंचाइजीज और रिटेलर की परफॉर्मेंस से। तो हम देखें तो एवरेज ऑन एन एवरेज पर फ्रेंचाइजी करीब 500 सिम सेल्स हो पा रही है पर मंथ, जिसमें कि 17% आर सेलिंग 50 सिम्स पर मंथ, less than 50 sims basically, and 27% are selling less than 200 sims per month। जैसा कि we all have seen, means आपने भी input दिया, I have also seen कि market is shifting towards the online recharge। तो फ्रेंचाइजी का बेसिकली बिजनेस रह गया है सिम सेलिंग में। तो इसको एनालिसिस की जरूरत है कि कैसे उनके बिजनेस को वायबल बनाया जाए, कैसे हम अपने सेल्स चैनल को रिवैम्प करें जिससे कि हमारा बिजनेस भी बढ़े, वी आर एबल टू डू सिम सेल्स, एंड हम अपना क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन भी एक डिसेंट लेवल पे मेंटेन रख सकें। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हमने टैरिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, बिकॉज टैरिफ के हमारे पास सर्कल से भी प्रपोजल्स आते हैं। वी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट हमारे कॉम्पिटिटर्स के क्या प्लान्स हैं, देन जो हमें फीडबैक मिलता है सर्कल से या फिर हमारे अपने एनालिसिस से, देन वी ट्राई टू इशू, वी आर इशूइंग इन फैक्ट द प्रपोजल्स एंड प्लान। एंड मैचिंग टैरिफ के लिए हमारे पास ECT प्रपोजल्स आते हैं सर्कल से, विच वी प्रोसेस एंड देन अकॉर्डिंगली इशू द टैरिफ प्रपोजल्स। ये जो हमारे स्कीम्स वगैरह हैं वो हम सोशल मीडिया वेब पर भी रेगुलरली अपडेट करते हैं और उसको सर्कल्स को BAs को सर्कुलेट करते हैं, सो दैट इट इज द इंफॉर्मेशन इज सर्कुलेटेड टू ऑल, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। कोई नया प्लान आया है, वो कई बार हमारे जो एंड पॉइंट है वहां तक इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि विच इज द न्यू स्कीम और व्हाट इज बीइंग लॉन्च्ड। तो सोशल मीडिया पे डालते हैं एंड देन द मार्केटिंग टीम इट फॉलोज अप विथ ऑल द सर्कल nodal points for circulating that Twitter information on the Twitter or the YouTube or Facebook। क्योंकि ठीक है, तो ये दिस आपने जैसे कहा कि कुछ प्लान पे हमने OTF पहले भी लॉन्च किया था बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, एंड फ्रेंचाइजीज की भी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर्कल्स की भी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड OTF ऑन सेलेक्टेड प्लान्स। इसमें करीब 5% to 8 to 10% हमने एज एन OTF दिया है। तो इसका हमें इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, सेल बढ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड विल शो कि काउंट बढ़ी है। हम सभी प्लान पे क्यों नहीं दे पाते OTF? बिकॉज हमारे को मीन्स जिसको हमको प्रमोट करना है हम अभी उसी पे ले रहे हैं, जिसकी सेल ऑलरेडी है उस पे हमने अभी नहीं जिसकी किया। सेल अगर आपकी हो रही है, अगर उसको OTF बंद कर देंगे तो उसकी सेल डाउन जाती, या फिर हो सकता है कि वहां ये का जो न्यू कमीशन स्ट्रक्चर आया था जुलाई में, उसमें वो सब विड्रॉ करके नया हमने देखा कि नया कमीशन स्ट्रक्चर लाए, उसमें भी इट इज बेटर देन द प्रीवियस वन। वो FRC में था तो उसमें तो वैसे सिम सेल खत्म होता जा रहा। सब लोग बोलते क्वालिटी सिम बेचिए, और क्वालिटी सिम बेचना तो ठीक है, इतना फिर मुश्किल है फीडबैक कि ले लेते हैं, वी विल रिव्यू इट कि अगर अभी इसका जैसे अभी हमने कुछ पे लॉन्च किया है, ये सब हाई ARPU वाले प्लान्स हैं, इनको हम प्रमोट करना चाहते हैं सेल्स, तो इस पे हमने लॉन्च किया, विल ऑब्जर्व बिकॉज 3 months के लिए है, लेट अस सी द परफॉर्मेंस। मतलब आपने जो किया इट्स वेरी फाइन। मतलब मेरा ये कहना था, जैसे अगर हमारे को पर्टिकुलरली X वाउचर पे OTF देना है तो हम उसको X+2 रुपीज करें और 2 रुपीज का OTF दे दें, कुछ दें। एक्चुअली वहां पे ये हो रहा था, 0 मिलता है तो फिर वो लोग डिमोरलाइज होते कई बार क्या होता है कि प्लान में जब हम कुछ मतलब ऐड कर देते हैं, फिर उसको विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, वो कम करना पॉसिबल नहीं होता, इट इम्पैक्ट्स द अदर नियर बाई प्लान्स आल्सो। वो सारा इवैल्यूएट करके ही वी आर एबल टू डू इट। हमारा USP क्या है? Why should anybody take BSNL phone? ये USP क्या है हमारा? हाँ, हमारा है, रूरल एरियाज में रीच है। नेगेटिव है, कुछ नहीं है। बताइए भाई, आप लोग एक्सपर्ट बैठे हैं, व्हाट इज आवर USP टू फॉर सिम सेल? सिम सेल का तो USP कितने में है? वो देते नहीं है, BSNL सिम क्या USP है?
नहीं क्यों, जिसने लिया है इनफैक्ट कुछ इश्यूज है। मेरे परिवार में सबने मैंने चीजें ले रखी है, क्यों? क्योंकि सबसे सस्ती है, और मतलब मैं जहाँ रहता हूँ। नहीं, हाँ वो तो हम कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं। बात ये, लेकिन अब जो है, जो कॉम्पिटिटर से हमारा रेट है वो डेल्टा कम रह गया। अब वो इंसेंटिव नहीं रहा, यूएसपी नहीं रहा हमारा। मतलब जैसे हमारा जो प्लान है, पहले जो है 30% कम था, तो 12-15% कम रह गया। तो मैं इसलिए रख रहा हूँ कि चलो बीएसएनएल में काम करता हूँ, अदरवाइज कोई इंसेंटिव नहीं रहा, मतलब सस्ते वाला। ठीक है सर, दिस इज अ फीडबैक टू मी। नहीं, इनफैक्ट जो रीजन है, हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बहुत पुअर है, जिससे हम अपना बीटीएस कनेक्ट करते हैं, या इनफैक्ट ठीक है, वो जाने का रीजन है, बट नहीं, जाने का रीजन नहीं है, वो हमारे सेल को इंक्रीज नहीं होने का रीजन है। और दूसरा, हमारी अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत आती है कि जहाँ पे हमारे को चाहिए है, एक बार बीटीएस बंद हो गया बैटरी चोरी होने के कारण, या कोई आईपी के इश्यूज के कारण, या हमारे कोई भी जहाँ पे भी टावर लगा उसके इश्यू के कारण, अगर एक बार बंद हो गया तो फिर उसका शुरू होना मुश्किल होता है। हम किसी दूसरे आईपी में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसको हमने पैसे नहीं दे रखे हैं, वो हमारा एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो ले दे के ये होता है कि निकालने लगेंगे तो बहुत सारे वीकनेसेस निकल आएंगे, लेकिन तो हमारे मेरा ये कहना है कि कहना ही चाह रहा है कि सस्ती चीज जो हल्की हल्की ऑलरेडी चीज है वो हल्का हल्का रेट, और हमारा नहीं, कमीशन स्ट्रक्चर भी कॉम्पिटिटर से बेटर है। हम सब कुछ ठीक है। मेरा पॉइंट ये था कि टिल सच टाइम हम अपने हम अपनी इन सब चीजों को थोड़ा बेटर कर ले, जैसे 3G को हम 4G कर रहे हैं, वो एक अच्छा है, उसी नाम से बहुत बहुत सारी चीजें बिक जाएंगी क्योंकि हमारा सस्ता है। लेकिन जब तक ये नहीं है, एटलीस्ट कुछ इंसेंटिव बेचने वाले को जरूर होना चाहिए। हमने उसका पूरा तो पैसा वो ड्रॉ कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया, केवल 5.5-1.5% बचाने के चक्कर में 4-5.5% का कुछ। सर जरूरी नहीं है ओटीएफ देने से, उधर हमने सितंबर में दिया था, आई डोंट नो स्लाइड है कि नहीं है, तो सितंबर में ओटीएफ वाज गिवन अबाउट 10-15 अप टू 20-25 रुपीज, बट परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई थी सेल की। तो जरूरी नहीं है कि केवल ओटीएफ देने से ही परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने ये हाई आरपू वाले में दिया, देखते हैं अगर कुछ होगा तो मैं एक बार बोलूंगा कि हमारे जैसे साहब बोल रहे थे ना कि सर्किल से थोड़ा सा दिक्कत होती, क्योंकि सर्किल अपना एनालिसिस करता है, उसको हमारे एक बीए के बारे में नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इवन वाउचर्स भी, सेल भी लोकल फैक्टर्स पे भी बिकते हैं, तो हमारे को थ्रू सर्किल में आने में दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध आपकी तरफ भेज दूं, अगर आप कंसीडर कर सके तो जरूर देखिएगा जी। ठीक है, वी विल एनालाइज इट। तो इसकी काउंट बड़ी है ओटीएफ जो हमने दिया है नवंबर मंथ की, ये तो एक्स्ट्रापोलेट किया था, 15 नवंबर का डेटा है। सिमिलरली हमने ये डेटा ओनली प्लान 411 और 788, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप अवेयर होंगे, देन फर्दर इट कैन बी सर्कुलेटेड अमंग योर एसएनडी टीम मेंबर्स एंड अदर चैनल पार्टनर्स। तो इसका भी लॉन्च करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमारे को, मीन्स अक्टूबर में सेल्स 1000+ हो गई है फॉर 411, बिकॉज इन बिटवीन देयर वाज नो डेटा प्लान, डेटा ओनली प्लान। ये भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब यहाँ देखिए, कुछ हमने वैलिडिटी एक्सटेंशन किया था, लाइक 2999, 2399, 1999, बट इसमें देखिए, आप देखिए मतलब इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं है। तो नॉट वी आर टेकिंग मेजर, हम कुछ एक स्टेप लेते हैं, बट एवरी टाइम इट पे नॉट बी। जैसे आप कह रहे हैं ओटीएफ, तो ओटीएफ मैंने पहले भी हमने इंट्रोड्यूस किया था, बट वो रिजल्ट नहीं किया। ये वैलिडिटी एक्सटेंशन में ओनली 2999 का थोड़ा सा सेल बढ़ा है, बट बाकियों में सेल कम भी हुई है। हाँ हाँ, वो तो बाद में आया है। तो यही है कि एवरी टाइम मीन्स वी आर डूइंग, टेकिंग मेजर, एनालाइजिंग आवर कॉम्पिटिटिव trend and what is the market trend, but sometimes it results into positive and sometimes it may not be. Then IT tool and apps which are being used by our users, self care app है जिसमें कि GSM के लिए उसको रिचार्ज फैसिलिटी एंड बिल पेमेंट फैसिलिटी है, एंड ऑल्सो माई BSNL ऐप इज देयर थ्रू विच यूजर इज डूइंग द recharge, and other landline functions are also available through my BSNL app. So at present both apps are being used by the CM users for doing the recharge and bill payment. Yeah.
Yeah, it is there in our notice and we are working towards it. We are analyzing that there should, because user should not be. So which app is more popular in your BAs, in your areas? User में कौन सा app ज़्यादा popular है? What is self-care? Okay, that is good. Because we are also working. Yeah. User perspective say there should be one app because other operators, they are also having one app. So we are also working towards it and we'll finalize it. तो अभी हमारा एम है कि हम सेल्फ केयर ऐप को प्रमोट करें सो दैट वन ऐप इज देयर एंड विच प्रोवाइड्स ऑल द फंक्शंस. दूसरा, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि ईपिन में काफी ज्यादा अभी ईपिन के थ्रू रिचार्ज हो रहे हैं, तो हम सेल्फ केयर को इसलिए भी प्रमोट करना चाहते हैं कि यूजर सेल्फ केयर के थ्रू रिचार्ज करे. बिकॉज ईपिन में ईपिन वेंडर्स को वी आर पेइंग अबाउट 3% कमीशन. सो जब यूजर सेल्फ केयर में आएगा देयर वी डोंट हैव टू पे टू एनी आउटसाइडर्स, सो वो भी हमारा रेवेन्यू सेव होगा. सो दिस ऑल्सो वी आर टारगेटिंग कि हम सेल्फ केयर ऐप को प्रमोट करें फॉर. अभी करीब 4.5 लाख रिचार्जेस हो रहे हैं मंथली, अराउंड 11 करोड़ रेवेन्यू पर मंथ सेल्फ केयर के थ्रू हो रहा है. और इसको प्रमोट करने के लिए, सेल्फ केयर को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ कुछ प्लान्स भी ले आए हैं. लाइक जो हमारे OTT बंडल्स वाउचर्स हैं उनका एक्टिवेशन, जो क्लेम नाउ एक फीचर ले आए हैं कि जो बंडल्ड कंटेंट बंडल्ड है इट कैन बी एक्टिवेटेड थ्रू द सेल्फ केयर ओनली. देन सम हम कुछ एक्स्ट्रा डेटा, कुछ एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट वगैरह भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इफ द यूजर इज यूजिंग द सेल्फ केयर ऐप. वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि कुछ हम ऐसे वाउचर्स दें जो कि स्पेसिफिकली सेल्फ केयर के थ्रू रिचार्ज. So this is the revenue through self care app. So it is increasing अभी, but majority जो है अभी उसमें recharge के लिए ही use हो रहा है. Small percentage is being used for the bill payment. And South Zone is contributing 51% of the revenue through the self care app. And in fact, my BSNL app is also is widely used in South Zone circles. So these are the. हाँ बताइए. हम्म 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 ओके. ठीक है. हम्म So means 2-3 months का एक साथ ही user if they want to pay, they should be in a position to pay. ठीक है, I will look into. हाँ, कुछ वॉलेट टाइप क्रिएट हो जाना चाहिए वहां पे, उसका डिपॉजिट है. नॉट ओनली एडवांस पार्ट पेमेंट का भी प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिए 3-4 तारीख के आसपास और वो तब तक वो बिल जनरेट हो जाता है नेक्स्ट बिल, तो उसमें 2 बिल जुड़ के आ जाते हैं. अब कस्टमर ने एक बिल तो पेमेंट कर दिया है तो वो पार्ट भी नहीं कर पाता. मतलब वो उसमें एडिट होना चाहिए कि कस्टमर जितना चाहे उतना पेमेंट कर सके. ठीक है, ये उसमें प्रोविजन जरूरी है. ठीक है, पोस्टपेड के केस में ही. राइट. ठीक है, मीन्स दिस इज द इनपुट कि उसमें वो एडवांस अगर एक्स्ट्रा भी है तो पे. ठीक है, कीनन में इसमें नहीं इम्प्लीमेंटेड होगा. वी कैन टेक अप. हाँ, वी कैन टेक अप दिस इशू. तो ये सेल्फ केयर को प्रमोट करने के लिए हमने कुछ ये प्लान लॉन्च किए थे, जैसे कि इफ द यूजर इज रिचार्जिंग विथ मोर देन 250 सेल्फ केयर ऐप पे तो उसको 2% अपफ्रंट डिस्काउंट. इससे भी हमारी सेल्स में इंक्रीज हुआ है. बिकॉज पहले जो 2900 करीब सेल्स हो रही थी वो 3500. ये कुछ ही पीरियड का डेटा है, 21 अक्टूबर से 16 नवंबर. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 21 October.
सिमिलरली जो हमने एक्स्ट्रा डेटा दिया था 3 GB एक्स्ट्रा डेटा कुछ वाउचर्स पे दिया था, तो उसकी भी सेल इंक्रीज हुई है. सो सेल्फ केयर को प्रमोट करना है. वी आर ऑल्सो मीन्स इशूइंग इवेलुएटिंग एंड इशूइंग प्लान्स विच कैन help in promotion of self care, and the additional features which we feel कि it is missing in the self care app, we are working so that उसमें हम और facility enhance कर सकें. So at present it is being used only for recharges and partly for the bill payment. इसके अलावा GP2 को एक्टिव करने के लिए भी वी हैव इशूड प्लान्स टाइम टू टाइम. एक प्रमोशनल ऑफर लाए थे जिसमें कि हम उनका इनकमिंग SMS फैसिलिटी हमने स्टॉप कर दिया था. तो दैट आल्सो हैज रिजल्टेड हमारा रेवेन्यू करीब करीब स्टेबल सा है, और अराउंड 64 lakhs GP2 कस्टमर्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड ऑन मंथली बेसिस. देन यूपी ईस्ट का एक स्पेशल प्लान था फॉर GP2 कस्टमर्स. इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन ये है कि लोअर वाले प्लान में GP2 में उन्होंने 124 का दिया था विथ 90 days वैलिडिटी. तो इसकी सेल अराउंड 10,000 GP2 वाले कस्टमर एक्टिव हो गए थे. तो अभी उन्होंने इसका एक्सटेंशन भी लिया है फॉर 2 and 456. तो एक्सटेंशन भी दिया है. तो जैसा सर्कल की रिक्वायरमेंट रहती है, सर्कल के प्रपोजल आते हैं या फिर हमारे जो असेसमेंट है, बेस्ड ऑन दैट वी आर इशूइंग टैरिफ प्रपोजल्स. देन सर्कल्स को हमने ये मींस सर्कल्स वर आस्क्ड टू अप्रोच द GP2 कस्टमर्स, उनको टेम्पररी SMS या कॉल करके उनको एक्टिवेट करने के लिए. तो दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन सम ऑफ द GP2 बिकमिंग एक्टिव. USSD बेस्ड मैसेजेस उनको सेंड करवाते हैं थ्रू आवर नोडल्स. SMS फ्रॉम INs भी सेंड करवा रहे हैं. फिर सर्कल्स को इंस्ट्रक्ट है कि जो उनके स्ट्रॉन्ग कवरेज एरियाज हैं वहाँ पे हम सिम सेल इंक्रीज कराएं. तो दीज मेजर्स आर बीइंग टेकन. 4G हैंडसेट का जिनके पास है उनको 4G सिम दें, सो दैट 4G रेडी रहे हमारे यूजर्स. तो ऑल दीज एक्शंस वी आर टेकिंग टू इम्प्रूव आवर कस्टमर बेस. Then we have a partner management system also is there, C top up system from Pyro, जो कि रिचार्ज टॉपअप के लिए, प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट, एंड इसका भी न्यू टेंडर इज अंडर प्रोसेस एज आई हैव टोल्ड. एंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग विच इज प्रेजेंटली थ्रू संचार आधार, तो उसका भी न्यू टेंडर इज अंडर प्रोसेस. So with all these activities, our market share is still 8.7%. And year on year, it is decreasing from March 21 with 10%. And currently, in June 2023, we are having a 8.7% market share. And if we see the circle-wise figures, so circles में all India average से भी circles like UP West, Karnataka, गुजरात, महाराष्ट्र इज अ बिग सर्कल, MP छत्तीसगढ़, ये सभी हमारे पैन इंडिया एवरेज से भी नीचे हैं. बट ऑन द अदर साइड वी कैन सी केरला, ओडिशा, these circles are there, they are able to retain a good market share. नहीं, ये तो है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है 4G के साथ, तो आ जाएगा. तो आई थिंक फिर हमें इतना एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए. दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड. या तो अभी हमें यह है कि यूजर्स को रिटेन करके रहना है टिल द टाइम वी आर गेटिंग द न्यू इक्विपमेंट. सो उसके लिए हमें एक्टिविटीज, मार्केटिंग एज वेल एज सेल्स. सो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन अ नटशेल जो अभी तक डिस्कस किया था कि वी आर वर्किंग इन दिस विद दिस स्ट्रेटेजी, इम्प्रूविंग सेल्स, that is strengthening our sales and distribution network, higher incentive with volumes, and simplification of commission structure. Then improving quality of acquisition for franchises retailer having high quality of acquisition, they are being rewarded, and with poor quality of acquisition are being disincentivized. Then social media we are using for creating social media buzz. Every new plan, every new policy, and these are being promoted or popularized or
retweeted and distributed information is distributed through the social media handles. Then visibility at POS, इस पे भी काफी insistence है, तो circles and field units must be doing this events, मेला, umbrellas लगाना या कुछ display danglers लगाना, तो these is required at circle level and BA level. Then using the SMS app, USSD messages for informing to customer, then for GP to customers to make them active. ये हमारा सिम सेल का परफॉर्मेंस है फॉर 2020. ग्रीन वन इज फॉर 21-22 एंड फॉर रेड वन इज 22-23. तो सिम सेल मंथ ऑन मंथ इज ऑलमोस्ट स्टेबल. हालांकि अभी सिम सेल काफी कम होने लगा है. इट इज गोइंग बिलो 10 lakhs, सो वी नीड टू इम्प्रूव इट. तो BA लेवल पे आपसे रिक्वेस्ट है कि यू मॉनिटर द फ्रेंचाइजीज एंड रिटेलर्स परफॉर्मेंस, उनके टारगेट्स, उनके MNP टारगेट्स रेगुलरली एनालाइज करें, रिव्यू करें, एंड फिर उनसे क्वालिटी ऑफ एक्विजिशन के टारगेट्स वगैरह भी रिव्यू करके उस पर करेक्टिव एक्शन लें. सॉरी. एंड दिस इज द रेवेन्यू परफॉर्मेंस. सो रेवेन्यू का भी हमारा ऑलमोस्ट स्टेबल है. अराउंड 12 करोड़ रेवेन्यू पर डे रेवेन्यू है, IN रेवेन्यू. इसको भी हमें अपने चैनल पार्टनर्स को मॉनिटर करना है टू इंक्रीजिंग आवर रेवेन्यू with our activities, sales and marketing activities. So BSNL agenda for future is centered around 3 pillars: leveraging 4G technology with fiber first attitude, with network optimization, so that we are having improved network, improved quality of service and competitive difference and readiness for the future technology. And with this, we should have the customer first attitude for our customers, giving them personalized experience and serving them through omni-channel. Along with this, we need to have partnership and collaboration with our partners, bundled service providers, OTT providers, our last mile partners, and we should be in a position to provide total integrated solution to our customers. So we expect that with 4G, till the time 4G is coming, with our available resources, हमारे channel partners को motivate करके and उनके issues को resolve करके, जैसा कि कुछ issues आपने बताए वो भी take care करके, we have to improve our retain our customers, maintain our market share, and once 4G comes, then we will move ahead with much speed. So for readiness of 4G, replacement and upgradation of 4G SIM, isko bhi corporate office, I think January onwards, they are monitoring replacement or upgradation of existing 2G, 3G subscriber to 4G SIMs. Then increasing the retailers, जैसा कि हमने पहले देखा कुछ इसमें बहुत चेंज नहीं दिख रहा है, so retailers भी हमें बढ़ाने हैं. Then strategy for replacement of non-4G SIMs, जो users identified हैं जिनके पास 4G handset है, उनको priority पे 4G SIMs replace करें. जैसे पानिकर सर ने एक सजेशन दिया, वो भी कुछ अपने लोगों के थ्रू ही अगर इंफॉर्मेशन पर्कुलेट हो कि भाई मींस दिस इज टू बी रिप्लेस, सो दे विल आल्सो, बिकॉज OTP अभी यूजर को SMS जाता है, देन सम OTP जाता है, उस इंफॉर्मेशन अपने स्टाफ के थ्रू उनको मिले. एंड इसमें हमें वर्क करने की जरूरत है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ 4G SIMs, बिकॉज वंस 4G इक्विपमेंट विल कम, then this will be a very challenging task. Also 4G saturation project being rolled out in rural areas, तो हमें हमारे retail chain, हमारे channel partners rural areas में भी required है, तो rural distributors को भी strengthen करने की जरूरत है. Then 4G के hoardings वगैरह हम लगा सकते हैं जहाँ पे कि high footfall location है, tourist spots हैं, to increase our visibility. तो ये Is it visible? ये 4G SIM upgradation का status है. Pan India अगर हम देखें तो total number of 2G, 3G subscribers were around more than 3 crore as on 1st of January, which were to be upgraded to 4G
and till October we could do only 1 lakh. तो प्रोग्रेस बहुत स्लो है, ये हमें करने की जरूरत है प्रायोरिटी पे, so that users are ready with 4G SIM once the 4G equipment is there. हाँ, इसमें हमने केरला सर्कल का एक प्रपोजल आया था, हमने एक्स्ट्रा डेटा 4G एक्स्ट्रा डेटा की भी उसमें वी हैव लॉन्च्ड अ प्लान कि जो सिम अपग्रेड करने आता है उसको 4G एक्स्ट्रा डेटा देंगे, 4GB। तो वो भी हमने एक प्लान लॉन्च किया, तो निकाल सकते हैं डिटेल, उसमें मिल जाएगा। Then digitization of paper CAF is also another issue which is being monitored by sales and marketing cell. कि अब पेपर कैफ तो अब लेना नहीं है यूजर से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है पेपर कैफ उनको डिजिटाइज करना है थ्रू रीवेरिफिकेशन और थ्रू स्कैनिंग का भी हमने प्रोविजन करवाया है थ्रू आवर एग्जिस्टिंग वेंडर मेसर्स इंटेंस। तो डिजिटाइजेशन का प्रोग्रेस भी बहुत स्लो है। पेपर कैफ जो पुराने, नया तो लेना नहीं है, जो पुराने हैं उनको स्कैनिंग के लिए, तो उसमें जो अपना करंट वेंडर है इंटेंस, ही एग्रीड कि सर्कल लेवल पे द पेपर कैफ स्कैन हो जाएंगे एंड उसको अपने सर्वर में पोर्ट हो जाएगा। नहीं तो वो डिजिटाइज हो जाएगा ना, वो आइदर रीवेरिफिकेशन से कर लीजिए या स्कैनिंग से, दोनों ही केस में वो डिजिटाइज हो जाएगा। क्योंकि डीओटी का जो ऑर्डर है कि पोस्ट 1 अक्टूबर अगर वो मंथली कैफ ऑडिट में पेपर कैफ मिलता है तो पेनल्टी का प्रोविजन है, तो ये भी हमें प्रायोरिटी पे टेकअप करने की जरूरत है। देन रीसेंट गाइडलाइन, नहीं एक बार उसमें आ गया, उसमें सर्वर में सेव हो गया तो फिर हम्म 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 सब वो तो सारा कागज, नहीं उसमें हम इनको तो पे कर ही रहे हैं ना, वेंडर को स्कैनिंग के, हाँ उनको पे कर रहे हैं। ठीक है, आपका सजेशन देख लेते हैं। मींस ही सजेस्टिंग कि अगर डिजिटाइज करने के लिए भी हम पेपर कैफ को स्कैन करने के लिए इफ वी कैन पे सम इंसेंटिव 10 रुपीज, वेंडर को पे कर रहे हैं। देन फिर चलिए ये एक रिसेंट डीओटी गाइडलाइंस है जिसमें कि हमको ईच एंड एवरी पॉस को, चाहे फ्रेंचाइजी हो या रिटेलर हो या एजेंट हो, वी हैव टू डू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बिफोर द पॉस इज रेडी फॉर सेलिंग ऑफ द सिम। तो इसके लिए वी आर मींस वी हैव टेकन अप थ्रू आईटीपीसी, उसमें संचार आधार में प्रोविजन इज देयर दैट एट बीए लेवल ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी कलेक्टेड। इस ये न्यू फॉर न्यू पॉस दैट गाइडलाइन is effective with effect from 1st of December this year, and for the existing POS from next year 1st of December. So till 30th of September next year, 30th of November next year एग्जिस्टिंग पॉस हैं उनको भी हमको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो संचार आधार के थ्रू दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय आईटीपीसी एंड अभी पीओसी चल रहा है, सो दैट प्रोविजन इज देयर। देन ईच एंड एवरी पॉस विल बी हैविंग वन यूनिक पॉस आईडी, तो चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो, इंटर ऑपरेटर, दैट POS ID will be unique. That also is being worked upon by ITPC. एंड इसमें जो हमें पॉस के साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन एग्रीमेंट साइन करना होगा, वो एग्रीमेंट का फॉर्मेट सर्कुलेट कर दिया है कॉर्पोरेट ऑफिस ने। तो ईच इंडिविजुअल पॉस, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो रिटेलर हो या फ्रेंचाइजी, पहले हमारा रिटेलर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था, वी वर नॉट हैविंग डायरेक्ट एग्रीमेंट विथ एनी रिटेलर, बट नाउ वी हैव टू साइन एग्रीमेंट विथ रिटेलर ऑल्सो। सो 100 रुपए का, अभी इसमें फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइजी करता है ना। हम्म हाँ, तो रिटेलर को करना होगा अगर वो हमारे साथ एम्पैनल होना है तो।
नहीं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसके आईडी लेना है, उसका पैन कार्ड लेना है, ये डिटेल लेना है, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन होना है। ये सब होने के बाद फिर उससे एग्रीमेंट साइन करना है। तो डिटेल एसओपी जो है सर्कुलेट कर दिया है। नहीं, जीएसटी का अगर उसके पास है डॉक्यूमेंट तो लेना है, अगर नहीं है तो वो एफिडेविट दे देगा। एफिडेविट कि जब, हाँ, जब हमारे पास होगा तब दे देंगे, बिकॉज सबके पास नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे पॉस हो जो लेटर ऑन जीएसटी उनका आ जाए, तो फिर लेटर ऑन दे कैन प्रोवाइड दैट जीएसटी नंबर। तो इसमें डिटेल एसओपी है, अग्रीमेंट फॉर्मेट है, और सिस्टम पे अब ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगी, टेस्टिंग चल रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, क्योंकि इसमें बहुत हैवी पेनाल्टी है, पर इंसिडेंस जो है अराउंड 10 lakhs पेनाल्टी है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। हाँ, नया में मीन्स न्यू विल 1 दिसंबर से इफेक्टिव है। हम्म हम्म गाइडलाइंस तो इफेक्टिव हो गई है सर, क्योंकि गाइडलाइंस पहले से ही थी। हाँ, मतलब वही चीज है जो, नहीं, हमने फाइनल कर दी है। संचार आधार पे भी डेवलपमेंट हो गया, पीओसी हो रहा था अभी फर्स्ट सेकंड को, तो वो ऑलमोस्ट हो गया है फाइनल। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो लेने हैं, उससे आईडी लेना है, एड्रेस लेना है, फिर उसका एड्रेस वेरिफिकेशन होना है, देन फिर वो रजिस्टर होगा और उससे एग्रीमेंट साइन होगा। तो ये प्रोसेस डेवलप्ड है संचार आधार में। So some actions which is required for strengthening marketing and customer interface, क्योंकि we are working and analyzing at corporate level। तो हमारा जो कस्टमर इंटरफेस पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है? ऐप पर है, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप पे है, माई बीएसएनएल पे भी है, यूजर जाता है। वेबसाइट के थ्रू जाता है कंप्लेंट बुक करने के लिए, या फिर न्यू कनेक्शन के लिए, या रिचार्ज के लिए। कॉल सेंटर पे आता है, जहाँ की वेयर सीआरएम इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड। सीएससी पे आता है, या फिर हमारे रिटेलर्स, पॉस या फ्रेंचाइजीज के पास आता है। तो कहाँ कहाँ पे कस्टमर का इंटरफेस है जिसको कि इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है? कॉल सेंटर पे 1503 डायल करके यूजर लैंड्स टू आईवीआरएस, एंड आईवीआरएस if they are, it is able to satisfy the query or answer the query. If not, then it is booked as a complaint and docket is generated and SMS is sent to the customer. Then other numbers are also there for call centers, जैसे कि 1501 है, where retailer can identify they can verify their wallet balance and other requirement, other queries. Then 1507 is there for eKYC authentication. Others are also there. एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि सीआरएम सिस्टम है हमारा, करंट सीआरएम सिस्टम इज बाय सीएस इन्फोकॉम एंड विजन प्लस। तो दिस इज इंटीग्रेटेड टू ऑल द कॉल सेंटर्स एंड वेबसाइट्स। सो कस्टमर की कोई क्वेरी या कंप्लेंट है, वो उस पर लॉग इन होती है एंड is being handled by the agents at the CRM, and also the circle nodals are also authorized this CRM login, so they can check what is what कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, रिजोल्यूशन क्या है। तो ये वहाँ से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। अब गोइंग अहेड उसको ऐप पे भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिससे कि यूजर ऐप पे भी अपनी कंप्लेंट बुक कर सके और उसको सीआरएम पे इंफॉर्मेशन चले जाए, सो दैट फर्दर एक्शन कैन बी टेकन एट द सीआरएम लेवल। सिमिलरली सीएससी को भी सीआरएम से इंटीग्रेशन के लिए वी आर एनालाइजिंग इफ दैट विल बी डन, सो यूजर विल गेट ईज ऑफ मीन्स कंप्लेंट वगैरह सीएससी पे भी बुक करके सीआरएम पे मेड ओवर हो सकता है। देन कस्टमर सर्विस सेंटर में जो सबसे बड़ा इशू रिपोर्ट होता है कि भाई दे आर नॉट अवेयर अबाउट आवर लेटेस्ट प्लान, उनकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सो सीएससी का जो हमारा स्टाफ है उनको वेल ट्रेन्ड होना चाहिए टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट our value proposition to the subscribers, and also CSC को भी हमारे CRM पे integrate होना चाहिए, so that grievances can be handled। एंड जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि एक वन ऐप होना चाहिए, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो। वी आर एनालाइजिंग इफ वन इंटीग्रेटेड ऐप इज देयर, सो दैट यूजर इज नॉट कंफ्यूज, एंड दैट ऐप शुड हैव प्रोविजन फॉर लीड जनरेशन,
न्यू सिम के लिए या सिम अपग्रेडेशन के लिए, there should be provision of complaint booking in the app, जिससे कि user can book the complaint and then it is made over to the CRM for further processing. Also, we are analyzing if SIM delivery can be made at the doorstep of the user for a replacement or for the new SIM. So this also we are analyzing and working towards it. And self eKYC के लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं कि अगर यूजर खुद से UIDI या डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके सेल्फ eKYC कर सके, so that will also help in improving the performance. देन हमारे जो सेल्स पॉइंट हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, जैसा कि हमने देखा उनके अब बिजनेस केवल सिम सेल पे ही रह गया है, दैट आल्सो इज गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, वी आर वर्किंग जो FMRM के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, दैट वी आर रीवर्किंग कि उनको बेटर कर दे, उनके परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग हो। तो ऑल दीज डायरेक्शंस वी आर वर्किंग एट कॉर्पोरेट लेवल। तो सर्कल से फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ये BTL एक्टिविटीज, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, दीज आर रिक्वायर्ड डिपार्टमेंटल होल्डिंग्स, साइन बोर्ड्स, डैंगलर्स, पैम्फलेट, ब्रोशर. So these BTL activities which are to be done by circle level, road shows वगैरह क्या रहती है frequencies? Regularly होते हैं मेलाज, रोड शोज, जहाँ भी हाई फुटफॉल है, once in a week. अच्छा, बाकी BAs, अदर BAs? अच्छा, मेलाज once in a week करते हैं। अच्छा, तो कुछ मीन्स जहाँ पे भी ज्यादा फुटफॉल है लोकेशन। ओके, सो ये BTL एक्टिविटीज, बिकॉज जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि मार्केटिंग पे ज्यादा एफर्ट की जरूरत है टू इम्प्रूव आवर सेल्स। सो मार्केटिंग एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू फॉर द पेशेंस हियरिंग। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सी टॉपअप सेल, अच्छा नहीं, टोटल तो करीब 4, हाँ हाँ हाँ, सी टॉपअप 400 करोड़ करीब का है हमारा मंथली। नहीं, मंथली हमारा टोटल जो रेवेन्यू है करीब 400 करोड़ का है। सी टॉपअप तो अब बेसिकली 60% तो 3 ऑनलाइन ही हो रहा है ना। हाँ, ये चीज। मैम जो सेल्फ केयर की जो आप बात कर रहे थे मैम, उसमें अगर डेवलपमेंट अगर हो सकता है तो पोस्टपेड कनेक्शन में मैम ईमेल कैप्चरिंग का उसमें ऑप्शन होने चाहिए मैम। ईमेल का, क्योंकि नहीं, उसमें हम वर्क कर रहे हैं। उसमें एक तो लीड को कैप्चर करने के लिए हम वो कर लें, तो पोस्ट उससे मैम फिर बिल भी उस पे डिलीवरी हो जाएगी मैम। ठीक है। एंड देन सेकेंडली वही मैम की पोस्टपेड बिल कलेक्शंस में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, या इक्वल टू व्हाटएवर बिल इज देयर और मोर देन दैट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी नोटेड। वो अगर हो जाता तो हमारी कलेक्शन इफिशिएंसी और बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। मैडम एक रिक्वेस्ट था, हमारा एक फ्रेंचाइजी है वो रिचार्ज वाउचर तो बेच नहीं पाया, जो गाइडलाइन अपने पास निकला था दिसंबर 22 तक का, वो बेच नहीं पाया। तो अब उसके अगेंस्ट में सीट अप मांग रहा है, तो उसके लिए मैंने सर्किल से परस्यू करके कारपोरेट भी भिजवा दिया। कब की बात है? इधर तो नहीं आया रिसेंट। मैडम आया, जोसेफ मैडम से मेरी बात भी हुआ था। अच्छा, तो तेलंगाना का भी सेम इशू था, लेकिन आपका कौन सा सर्कल है? मैडम MP सर्किल अच्छा। होशंगाबाद की है। अगर मैडम वो कंटिन्यू उसी के पीछे पड़ा हुआ है, तो अब एक्चुअल में वाउचर नहीं बिके क्योंकि 10 रुपए के वाउचर कोई लेता नहीं है, दैट्स व्हाई सेल नहीं हो पाया। ठीक है, इवैल्यूएट कर लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। If you don't have any other query, so we can say for this particular session to come an end. On behalf of this house and the LTTC, let's have a round of huge applause for the ma'am for such an interesting and informative session. Thank you very much, ma'am. To felicitate ma'am with a token of love, respect, and the gratitude on the behalf of LTTC, I would like to welcome Padyum Kumar Mohapatra, sir, the B.Ed from the Balasore.
Ah, thank you, sir. ये जो पोस्टपेड की बिल वाला है सर, मैं पिछले एक साल से लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब नहीं अपना आएगा। ये बहुत सारे कस्टमर जो बात है 6-7 महीने का पे करके पेंशन फ्री होना था, हाँ जो रेगुलरली है। सेब की पैदावार होगी, हाँ इस साल का एक साथ डाल दो, झंझट अच्छा, खत्म। दूसरा क्या है सर, एज अ सेकेंडरी सिम यूज करते हैं हमारे, तो कई बार तो उनको वो याद भी नहीं रहता। हाँ, लेह और जम्मू में कितनी बार, कितने दिन लेह बैठते हो, कितने दिन जम्मू? महीने में एक बार जम्मू आता हूँ सर। महीने में? तो फिर सर्किल, अच्छा अच्छा अच्छा, संधू है सर्किल आई तो वो तो ही इज माय नेबर, जस्ट टू हाउस। Okay. 30 now. Just to keep the things in short, now I would like to call upon Shri Deepak Gurg sir Yes, to have a quick session about the bulk push SMS M2M service and the IoT. And then we all are required to be present at the tea lounge to have a cup of tea. Yeah, thank you. From distance. अब तो जब से ये ऑफिस आ गया तो ज्यादा इश्यूज नहीं है सर। बाकी सुबह एक वीसी रख लेता हूँ सर सबके साथ। ये सभी खाली बिठा कर रखते हैं। ठीक है। So, wood. So good afternoon. So I am again back with you, but slightly on a different subject. Value-added service section. I will be touching only two business ideas about A2P SMS and M2M IoT communication service. It's a new revenue stream. A2P SMS we are doing for quite some time. This M2M and IoT communications is growing a growing field. BSNL has a lot of scope in it. So I will be touching just briefly what we are doing and currently as per the policy and what Circle can do. So A2P SMS. A2P bulk push SMS, we are currently pushing around 500 crore messages per month. Business around 500 crore messages BSNL is pushing this application to person. It's a good business and we can grow it further from the corporate office side as well as Circle side. So briefly A2P, all of you must be familiar. How does it differentiate from P2P, person to person? A2P SMS is basically an application is sending SMS from the owner of the application, maybe bank or any other issue, any other thing, on the promotion as well as transaction or service message. So every banks, etc., and all organization, every ministries are having a lot of applications which require to interact with their customers or the beneficiaries of any scheme. So this A2P business, you are also getting a lot of SMS. So it's all no person is sending, it's an application is sending. So this is a technical flow. Just all should be aware briefly what is it. So in this business, a DLT platform we have deployed. This DLT platform on the outsource model, it's in the center of the heart. It's a distributed ledger technology platform. So this platform is in sync with all the operators, BSNL, Airtel, Voda. So whatever data updations, deletions, addition, modifications happening anywhere to any operator, it is a common pool, common repository. So it's available with BSNL also. So it's a common regulation of TRI, which every operator is following for this bulk push SMS business.
So in this, in the heart of DLT, we start from the principal entity side. So this is a nomenclature jargon which we are referring again and again, and you are also getting a lot of letters from corporate. We refer a telemarketer, we refer a principal entity, headers, templates, etc. A lot of things you are listening. The principal entity is basically for example, bank, SBI, Punjab National Bank, Axis Bank, ICICI. So all these banks as an organization are a principal entity. They are registering various headers, templates, principal entities. Suppose the message formats are there, that will come in the next slide. They are registering on a DLT portal. The BSNL is also having a DLT portal, and all 3SPs are also having. So any bank registering in BSNL will be able to send message through other operator also, or any bank registering any information regarding that bank on the Airtel portal also, it will be available to us. The registration of a principal entity, header and a template is happening on the DLT portal. Then there are telemarketers are there. These telemarketers are basically aggregator of the business, because not all persons will be able to approach any operator, say like BSNL. They will be very small consumers of SMS also. So telemarketer is basically aggregating the traffic from downstream and then pushing to a DLT system. So their registration of telemarketer is also must. Registration of telemarketer may be PE header template, he will get registered. He can only push the traffic with the registered headers and templates. So this DLT system is having all the PE details, TM details, preference registration of customers, and UCC complaint, unsolicited communications complaint. All these facilities are there. Inactive blacklisting this platform can do. PE approval, header approval, and template approval. This is happening on this DLT platform. So with all these approval in place, the SMS are scrubbed, because not everything can be delivered to customers. A lot of regulations are there, and a standard format is there for the template. If that matches the template format, so we call it scrubbing. So as per the defined rule in the DLT system, each SMS am I audible? Each SMS is scrubbed on predefined rules. Suppose it will check preference check of the customer. If DND, no SMS will be passed for promotion. Template ID check hoga. The templates is a set of rules on which data and fixed and variable is there. So if any message is meeting that criteria, this message will be pushed through further. Header sender ID check, message content, tablet consent. All after applying all these checks are applied in DLT platform. So if the criteria is met, then the message from principal entity through telemarketer, after scrubbing through DLT system, will be given to our SMS. So this is a complete workflow for SMS. Means SMS will be originated from the software, banking software maybe, of bank. This message will be given to telemarketer by bank. Basically, bank is doing this dealing. Any operator has no role on it. Whosoever telemarketer is giving better rates to banks, etc., or principal entity, SMS will be given. This telemarketer is having agreement with operators, just like BSNL. So same telemarketer may be doing business with BSNL also and Airtel also, and Scrubber is part of DLT. Basically, DLT is a scrubbing platform only. So we are calling a SMS scrubbing as per defined rules and approvals that are in place in DLT platform. So if the SMS is meeting this criteria, scrubbing successful, okay, then only this message will be delivered to our SMS. So and the SMS will push to our mobile customer through our mobile net. So this is the flow. Any question in this? Basically, it's a basic understanding that every should have. And no more technical slide on this now. So telemarketer regulation is there. TCCPR 2018 regulation. It defines telemarketer. Registered telemarketer means a person or a legal entity engaged in activity of transmission or delivery of commercial communications or scrubbing or aggregation. That's why I told you. So principal entity, the sender principal entity in relation to commercial communication means a person or entity for whom TM uses TSP resource for telecommunications. For whom means bank.
And unregistered telemarketer also a very commonly discussed term is any sender of commercial communication who is not registered for the purpose of telemarketing with the access provider. So a regulation is that no message can be pushed to any customer without scrubbing on DLT. If any message is going without DLT by BSNL or any operator, it's a fraud. SMS, we can take action. All message have to be DLT system only, invariable. So content templates that I discussed with you, then I will elaborate it further. What is it? It's a template of content registered by P. That P is registering where on DLT platform. So TM has no role in it. With the access provider means BSNL for sending transactional service and promotional message. So these are three categories of SMS. Promotion is purely marketing message. Service messages are there, where bank can inform their customer about some bills, etc., or any other dependency on behalf of that customer. And one is transactional. You are getting OTP. OTP, whenever you are making any transaction with any of the entity, you are getting a transaction SMS. So these three categories are defined in the regulations. Suppose you are getting, we have received a check number. So check number is fixed part of SMS. So it is basically this is a template design. This template you are approving, who is our authority in the DLT system. So variable check number will vary, which check number is given, of rupees. So rupees is a term which is fixed in the message. It's a fixed content. Variable means amount will be put for your account. This portion is fixed in the template. Variable will be given by the software of the bank, your account number. So account will be credited subject to realization as well. So this portion is also fixed. So this is a template composition. It's having a fixed content. This is defined by the entity, here bank, and a variable content which is picked up by the application from the database. Sorry. And consent template is a template of consent which is presented to customer while acquiring his consent and clearly mention purpose. Though this is not implemented yet, but it's under discussion, but the provision is there where for any promotional message, even the customer is customer is not in DND, then promotional message he has to give consent. So particular type of message only can be pushed by the entity. So this is under discussion and implementation as far as, but facility is there for digital consent acquisition. Header. It's an alphanumeric string. Well, a header you understand, most of you. It's the starting part of the message. Suppose BSNL is sending message, so you write PP, BSNL Punjab, then some 4-6 digits are there. So it defines the source of sending the message. It's a string of maximum 11 characters or number assigned to any individual, machine or legal entity under this regulation to send commercial communication. So header is registered of where? DLT. So everything is registered on DLT. So if any message is coming from any header which is not registered, it will fail in scrubbing and message will not be passed further. So header registration is must. Is a combination of lower and upper header is not allowed now because earlier some fraud were happening because so only this type of header is not allowed. P is capital, K R C C B. So all capitals only or all small. Combination is not allowed. So now there are two more terms which we discuss in this handling of UCC complaints. Originating access provider and a terminating access provider. So OAP and TAP we call them. So originating message means which operator has originated the message. TAP is which is termination. Customer belong to which operator. So this type of TMID, entity ID, header ID, template ID, all these are defined in where? DLT system. So everybody is having its own database. Suppose Airtel, VI, Jio, QTL, BSNL, MTNL, Tata. So the BSNL is registered here and it will be visible to all. So it's a basically technology. This a blockchain based technology, digital. It's a DLT we call it, distribution ledger. So it's a very permanent record type of thing. So it's like this. QTL is a some operator is there. Video one, yes, video. QTL भी है one operator is more. Only he is giving this SMS business only, not in voice call or data. QTL I just forgot some.
Hey, QTL is Videocon only. VI is the Vodafone idea. VI is QTL वही है शायद, Videocon का ही है शायद part हो. So UCC detect, it was made live on June. Basically, it's because you are getting many SMS from private number also. So persons are sending. So we have created 300 honeypots, 300 virtual mobile numbers are there. So SMS delivered on these numbers are routed through connectivity to BSNL UCC detect system. So BSNL UCC detect system then do some analysis and try to identify which messages are genuine and which are fraud. The action on the UCC complaint as per the regulation is taken. Also, BSNL is able to segregate such UCC complaint booked by this UCC detect system. Provision to view the report is available. So this system is available in BSNL and working also. A sample basis where we are 300 mobiles are there which are capturing all SMS. So out of these SMS are being passed to UDS. UDS is analyzing it and trying to identify the fraud SMS out of those SMS. लगा हुआ है, yes, this is in place. नहीं, telemarketer का नहीं है. This is for private numbers are sending ना, so it is not required to pass through DLT system. Even then, basically, you may be getting some message. A lot of messages are coming from private numbers. They look like a private number, mobile number. Bulk SMS are sending some education or some property or some insurance. Some lot of they are not coming through proper channel. Even those are only promotional SMS. So for capturing these, we have deployed this system, UDS. So it is capturing SMS from general numbers. It looks like a P2P SMS. Yes, it's as per regulation. Yes. So this has been delivered by the DLT partner only. It is done. So this is the story when July 22, this has come in picture, this regulation, when we implemented for the first time in June 2020. So at that time, this complaint used to be, telemarketers complaint used to be around 25,000. So after this implementation and fine tuning, now it is in less than 1,000 only. So this is further 6 months, around 500, 600. So this system has been effective because a lot of complaints are getting reduced. Whatever is the P2P message, but whatever P2P message you are getting as a because of free SMS, we are giving 100 SMS per day. So a lot of people are sending this. These are not here registered. So therefore, that is a different system is there. So this is a extension of that earlier discussion only. It's based on AI to identify the fraudster, UCC system, detect system, UDS that we discussed previous slide. It introduces a fraud flag for these complaint, registered telemarketer and registered and wrong template flag. All these features are there. I will not go into much details, and they will flag and identify the fraud SMS. And unregistered. So you unregistered are registered. Because whatever you are sending, you are getting private SMS type of thing. These all fall in UTM category. So P to TM mapping has also been now being discussed, and we are going to implement it shortly. Because what is happening, P and TM mapping means P will authorize a particular TM that you pass on my business. Presently, TM can use header and template of any P even without knowledge of P. So what is happening? Some frauds are happening. These TMs are because they are having control over these principal entities, templates and header. So they will pass some message without the knowledge of P using those headers. Some fraud happens and that entity is caught, though it is not in their knowledge. So we are now going to wind this TM and P. So that only TM will, P will authorize TM that you can do my SMS business. You can take it forward, then he will be having control. So this will be implemented from DLT platform only. Right now, it has been tested. So this slide is about that. So binding of P and TM will give control to PE to manage the use of its header and template. Binding will also create responsibility of telco TM PE chain, means BSNL, intermediary telecom marketer and SBI.
where otherwise it's not connected because chain is missing. Any TM can use any telco. So tri-direction is there and PE2 map with any TM registered in BSNL DLT portal. But if PE can authorize more than one TM also. So PE can add the TM at the time of registration as well as from their PE login. So while registering themselves, they can say, I want to do business with this particular TM or more than one TM. The PE can map the TM register on DLT portal only. So only a mapped telemarketer will be able to push the traffic of a concerned PE. For example, if SBI PE is mapped with two TMs, BSNL Karnataka and this Carix Mobile is TM. Because every circle is also a TM, as a registered as a TM, every circle on the DLT portal. So this traffic can be pushed only by these two PIs. So nobody else can pick up any header of SBI to send because it will be rejected from DLT portal. A P session management is also now we are giving this feature. It will give an option of changing the status from active mode to inactive mode and vice versa. When P is in inactive mode, because we are giving more control to P principal entity because they are not aware, no TM can send its traffic. Suppose they don't want to send in a particular period any business, suppose some government P is there. So occasionally they are sending SMS. So they can make them inactive and nobody can use their PE. As a PE registration, they cannot, nobody can push agriculture ministry. In the name of any agriculture ministry, they cannot push traffic if agricultural ministry have made themselves inactive on DLT. So it's the purpose of this. Whenever PE wants to allow any TM to push its traffic, then they need to be in active state. So this will facilitate the PE who are not pushing traffic regularly. Because daily they are not sending, so they can make themselves inactive. This will help protecting the assets of PE like header templates against any misuse. So basically, we are safeguarding our entities. Test हो गया feature. So we are just thinking of it. No? अभी live नहीं किया है, but it has commercial implication also every decision. So this is listing the traffic advantage of customer for opting BSNL. Why anybody should do business of A2P with BSNL? It's an all India presence. With sufficient capacity of equipment, efficient network, and high capacity connectivity, BSNL can ensure high delivery rate with minimum latency. So now we are at par because there is no dearth of any TPS capacity anywhere in any zone. So we can take any as much business as we want. So earlier there was there, so no, capacity is not the constraint. Our network is also at par with other. We are getting good delivery rate efficiency. So technically we are equal. वो ठीक है. Yes, all we have increased the capacity everywhere with the third party SMSC also we are having sufficient TP. So anywhere you can demand TCS, TAPS, nobody will refuse it. Competitive tariff, definitely we are doing analysis and we have revised also recently. So whatever is the tariff, it is better than competitor only, then only business will come. Because it's a very fluid business. Today business is here, tomorrow it will go there, tomorrow it will go to third place. Because it's a very easy to shift traffic from one operator to other operator by TMs. Because they are having a connectivity from all TSPs. So wherever they get better rates, they will push the traffic. So we have to be competitive. We cannot be higher than market. So BSNL has specialized tariff plans, government traffic, exemptions of scrubbing charges available for government, PSU and scheduled bank. This we have extended till this month end, then we may extend it further also. So banking, we are not charging any scrubbing fees because whatever DLT we are saying scrubbing is doing, that is on a payment basis per SMS. It's a transactional type of thing. So 11, so basically 14 only. As AI, SSP, ASP have been impaneled for. We have also impaneled SIs for associating with circles for this business. So list of headers with government PSU schedule bank for which scrubbing is waived off is being provided on regular basis to TM and field units. New business opportunities are being explored with realty tech partner also. So it's a business slide. You can find out some empanelment SI to take you forward with some P's to get the business.
So this is a technical slide. We have converted all the links with the other operator from this LSL to high HSL, high it's a signaling link, basically SS7 HSL is. So it is resulting in the increased delivery rate for A2P SMS. The delivery percentage of A2P traffic is also more than 86%. So it's at par with operators, because 86% is why it is so low, because you may say why it is good, 86%. It is good because you are sending promotional SMS also, which entity may be sending to a dormant customer, because they may be having a list of mobile numbers and customer have changed the mobile number or disconnected the connection. Even then SMS will go and fail. Sometimes customer may be out of coverage area also or delete. So this type of dip will be there in all, and message cannot be delivered. Suppose he is in a non-coverage area, message will go, it will be counted, but it will not be delivered. So it will be 90% to 86% is good enough in a composite traffic. But transactional traffic, yes, they need more than 95%. So this I will speak, yes, but in this only I will tell you one thing. This last para. Provision of adding suffix P for promotional, S for service, and T for transactional. Content template in the header at the time of scrubbing is going to be implemented soon. So you will also receive the SMS, then you will be able to identify which type of SMS is there. Only 3 categories are there. Promotional is a purely marketing message from any entity. As a service SMS, there are a lot of service instance or will reminder somebody is sending to your existing customer. Service SMS is to existing customer only for any PE. And T, of course, transactional, some transaction you are doing live on live. So you will be getting this information, the SMS which you have received from any particular entity, where it is falling, in what category. So this slide is a written slide, but meaning is that the government has given a mandate to subscribe services from BSNL to their all government entities. So you can utilize this type of mandate from government to get the business of government. So major bulk push SMS customers are listed here. So these are all banks, high courts, Canada Bank, State Bank is a very big customer for BSNL, NHPC, ONGC. So these are all prime customers which we are having. Yes. All this we discussed was postpaid business. Now I will update you on this prepaid SMS business also. Kerala Circle has developed a portal for bulk push business of retail entities on prepaid model. So SMS portal was launched 2 years back. As on date, around 447 Ps are doing business directly with BSNL on prepaid model. So total revenue earned is though less, but it is increasing now. So so I will update why you should say what you can say to any school or education institutions or anybody why they should opt for direct prepaid business, because there is a validity of you can take a quantum of say a group of SMS, count of SMS, validity is there 6 months or 1 year. Most important is that data of that enterprise is secure, because right now whatever is given through telemarketers. So telemarketer are maybe passing on information here and there. So if BSNL is doing direct business, then the mobile number of say students, say school is sending SMS to their student for some urgent class or anything. Then mobile numbers of any student will not be exposed. Parent is not exposed to any some this real estate company is sending some SMS. Then they will leak number to many others. So when they are doing direct business, then mobile number data is secure. It will not be passed on here and there. So this is a USP for promoting a prepaid business of SMS. वो तो हमारा नहीं डिलीवरी पे ही है सर, नहीं इसका भी डिलीवरी पे ही है, नहीं तो नहीं आई विल चेक इट, डिलीवर पर ही है। ठीक है, हाँ हाँ bulk SMS to in a localized manner. I mean, like people who are residents of say 10 big cities, Lucknow, Kanpur, Allahabad,
Meerut, Ghaziabad, or such places for updating their Aadhaar if it is 10 years or more than old. So we approached the EB cell in the East Circle. So somehow they could push SMS only on the BSNL subscribers. Can't we do, I mean, can't we promote such things? All this business across we are all- corporate customers also. Give me some other across issue. all operators. Hmm. नहीं, वो उस तरह का वो तो आपका ब्रॉडकास्ट मोड हो गया ना कि आपको मतलब बेसिकली अपने नंबर खुद दे सकते हो फिर तो आप अगर अगर आपको कोई टारगेट नंबर पता है वो टारगेट नंबर किसी का भी हो जिसका रेसिपेंट का वो तो हम दे सकते हैं ऐसे कोई गवर्नमेंट का मैंडेट आता है कोई कभी भी डीओटी बोलता है कि जब अपने मैसेज भेज दो तो आप अपने कस्टमर को ही भेज पाओगे वो तो आप एज ए मैंडेट यू कैन नो ओनली नंबर वीएलआर से लेते हैं आपकी वीएलआर में कौन से नंबर एक्टिव हैं ओनली दोज यू कैन आइडेंटिफाई बिकॉज यू नीड ए रेसिपेंट लिस्ट नहीं तो रेसिपेंट लिस्ट होती तो फिर दिक्कत नहीं है अभी तो हाँ। नहीं सर जैसे अब डीटीएल है तो उसमें क्या हम मतलब वहां पे ये प्रोविजंस नहीं हो सकते कि हम ऐसी चीजें अगर हम कुछ से दिल्ली के सारे सब्सक्राइबर्स को पुश करना चाह रहे हैं क्रॉस ऑपरेटर्स तो वो नहीं वो तो डिजास्टर के लिए करते ही है ना वो मान लिया दिल्ली गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट से आप अप्रोच करके कोई बिजनेस ला रहे हो बल्क एसएमएस का तो वो तो चाहेंगे कि दिल्ली के सभी सब्सक्राइबर्स को मिले तो हमें उस टाइप का that type of feature is only available for disaster right now as per regulation only in case of because it's a C-dot system criminal SCAP protocol is there critical application protocol alert is there so you can only use this type of facility only for disaster as of now so it is not being commercially given so CAP protocol उसमें C-dot is having a system connected with all operators suppose a particular disaster has happened say in Tamil Nadu so every operator is sending through that what BTS is launched. Only BSNL cannot send to all. Even that, then. चलो वो हम आपसे फिर से डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है उसको असेस कर लेते हैं पर राइट नाउ तो यही कि यू नीड ए रिसिपेंट लिस्ट वेयर यू वांट टू सेंड एसएमएस हाँ ये डायरेक्ट वाला अच्छा है यू कैन डायरेक्ट टेक बिजनेस एंड register on the P and start work start directly. Payment is also prepaid, so no question of any default outstanding. So why you were discussing there is no capacity dearth because we are having a third party SMSCs also deployed in our network, which are dedicated to them, and some are giving us TPS capacity for BSNL use also. So we are doing this business with the help of capacity installed by a third party SMSC technology provider also. So this is a list, just the informative list, which North is having 9 SMSC, South is having 3, West is also 3, East is also having 1 SMSC. So these are in addition to our owned SMSC of JET. This is the tariff which keep on revising, maybe some little and old only. So recently also 2-3 days back we have revised. This we can go. So this is a tariff for prepaid. It is on submission, yes. You are right. My mistake, correct. It's on submission for TK, then it will be some discounted also, na, compared to postpaid. Okay, but then it will be हाँ ठीक है पर इसमें फिर ये टैरिफ कम होगा ना पोस्टपेड से कम होगा फिर पोस्टपेड से टैरिफ कम होगा टू टेक केयर ऑफ दिस डिलीवरी परसेंटेज गैप because 14-15% messages are not getting delivered so submission count is more ठीक है so any input can be definitely examined पता करते हैं कोई टेक्निकल इशू है I will check it. So one more business line is there international SMS termination so it's also giving us a good revenue stream of around 6 crore per month so this were untapped business because we are having a now system in place to identify and block the SMS from other routes. International SMS means Amazon is sending. So basically market is charging 4 rupees per SMS. If we don't have this type of system,
and they will be posted in our network at normal rate of 7 paisa. So with the implementation monetization platform is available. 2 partners are providing in 2 zones each, and we are generating around 7 crore to 6 crore rupees revenue profit per month from this. So these are various regulations where they are available. Registration of telemarketer is done on the UCC platform. So these are how complaints are given. So this type of information just in the slides where you can visit also these portals and see what is there, because many of you might not have seen this. So you just have a visit on this. Have you seen it? करते रहते हैं ना, but all may not have seen. So just visit what is available. So because when you are doing business, then you should know all these things. System integrator that I was telling you, these are impaneled system integrator for associating with circles to acquire business of SMS. Because you can just invite the rate from them, at what rate they will offer SMS to you, that you can further sell to our clients in circle. So definitely business, bringing the business needs some homework also. So the SI who has brought this business can be given first right of refusal on the L1 rates. The FAQ and manuals are available that if you want to know further, then you can visit. Suppose some rate has come, L1 rate, because you will invite the bid from these SI who are interested to conduct a business with you. Suppose some rate 6 paisa, 7 paisa has come. The person who has bring the business, he can match it. वो rule है वो. Sorry. So another business line is M2M IoT business that we are doing currently also, and we are having policy also on this. So what is it? I will just, many of you may be knowing about M2M communications refer to automated applications which involve machine or device communicating through a network without human intervention. Sensors and communication modules are embedded within the M2M devices. So M2M devices are there, which are installed in the locations. One SIM is going in the device, either in the form of eSIM or physical SIM, and it is transmitting data from that device to through network to backend application. This is the flow of information from the M2M device to a hosting application, which is having that use case. So this is expected to revolutionize the performance of various sectors, business and services by providing automation and intelligence to the end device in a way that has never imagined before. Because it's a having a unlimited type of opportunity in automation. Because it will a host of applications will come. It's a very growing business, and further a lot of revenue opportunities are there as long as we tap this market. So what are the benefits? It will improve operational efficiency for any organization, quality of product, services. It's improved decision making because you get a real-time data. It's a cost efficient, and it's a scalable solution. So these type of automations are helping manufacturing, surveillance. A lot of things are happening. Smart meters, meter reading. Nobody now required to visit also. So these are the some of the use cases. It's just transportation and automotive fleet management service, where the vehicle driver performance, fuel consumption, containers, cargo movement, GPS tracking, e-toll, vehicle information, prevention of vehicle theft. You may be hearing a lot of these buzzwords because now every car is coming with some this SIM from two operators. So all it's a very good business opportunity. Fleet management, of course, which vehicle is where you can track the vehicle, because this is for transport company and cargo company. It's very useful. Every vehicle they are tracking. Healthcare sector में smart body centers, sensors, remote patient monitoring of residential institution coming with a smartphone and central server. So one central server will be there hosting the health application, and one device will be there which will be taken to patient premise or near that or hospitals. It can be everything can be monitored centrally. So it can be used in primary health center in rural areas to enable speedy diagnosis with timely treatment. But doctor may be sitting elsewhere.
Utility smart meters, this is a huge business case now coming in every state. Utilities companies, smart meters, they are installing. No need to visit the meter reader. Water, energy, fuel consumption from home industry. Gas utility, gas company also they will install. So it will monitor the load in real time, electrical vehicle charging infrastructure. So all type of use cases will be there. So every end point will require a SIM, IoT. Security and surveillance, system monitoring, video surveillance, monitoring, video analytics in banking, retail. Unlimited scope is there. Manufacturing, of course, agriculture also crop movement, etc. Like this. Retail, of course, point of sales, many more. It is unlimited opportunities. So BSNL, BSNL is also sold around 26 lakhs. Now here written 2 million, but 26 lakh M2M SIM till now. But it's more scope is there. We are also having a state-owned telecom operator. We can say Pan India presence, of course, our USP. So M2M IoT SIM, eSIM as well as plastic SIM for various business cases. We can push our business case. M2M tariff, most of you must have seen, it's having around 10 tariff are there, because one parameter is mobile data per month. They had a particular plan offer at the end device, how much data it can traffic in a month. Another is free on-net SMS. SMS can be sent by that SIM to host application server. And then the third parameter is how many SIMs a particular entity is taking. Accordingly, if the higher number of SIM the particular person is taking, particular company, factory or unit is taking, then the tariff is lower. So we are having this two-dimensional, we can say, data and count of SIMs. Accordingly, this M2M tariff is. On net है ना ये पूरा जो भी होगा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो तो BSNL नेटवर्क ही होगा ना इसमें. So we have this 6 partners impaneled for this business. This is available to all circles, and these are available, and you can do a business with them. Various WESP section policies I have listed. CNPN is captive non-public network. It's a basically 5G based system. It's a private public, non-captive, non-public network means a private network inside the factory premise only. So it's a use case can be there for this. You can deploy through the help of partners, CNPN partner, because they will install a core and the 5G radio device within the factory premise. It is there. Cases are also coming. Spectrum now we are only using currently 2600 megahertz only, because 3.5 megahertz we have not taken. 26 or 2100. No? Right now, because we are not investing in a spectrum, because if you give 3.6, you just check with it. No, spectrum to hai, but 3.6 we have not taken yet, because license fees will go. Na? 2600 में कर सकते हैं. 700 नहीं मिलेगा इसमें. 26 मिल जाएगा. मेरे पास में उसको केस बनाओ, फिर सर्कल को डिस्कस करो, भेज देना. भेज देना. So this is CNPN policy. It's policy for M2M that I have discussed. Policy for third-party SMS, bulk push SMS. So these are, so all these policies are available on portal also, because policy for deployment of third-party OBD. Because when policy is there, you can bring in partner and do the business. Policy for partnership, value-added service में भी कर सकते हैं. So this is a very this is a field which we can grow as far as business is concerned. So any question? But just kept brief only. Any question on this discussion? Okay, anyway, you can discuss it later on also. Anywhere. Thank you. Thank you very much, sir. It was a nice, informative, and intuitive session. Now, to facilitate Shri Deepak Aksan, I would like to call upon Shri
बसंत कुमार गुप्ता जी। एक्चुअली दीपक को इसलिए थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही लिया है चार्ज और इतना इन डेप्थ नॉलेज है, तो रियली मतलब इट इज वेरी 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 अप्रिशिएबल। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। मतलब हाँ, कल ही लिया है और इतना नॉलेज है डेप्थ में, तो मतलब बिल्कुल इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। We will keep on discussing. That's what I tell you. Thank you, sir. Now let's have a tea break for 15 minutes and then we are going to December. Thank you.
Rajesh Panikar, then Anil, Rakesh Chandra. Rakesh Chandra, oh, nice to see you. चार ही हैं यार, हैं? हाँ गौतम बोला ना, and myself. So for the Okay. rest of the batch, let me introduce you. Huh? I guess you do have many friends over there. Nah, so many people I know. So for the rest of the batch, I would like to introduce you, sir. So we do have Shri D.K. Agrawal, sir, to have a very interactive session on the 4G project rollout, 5G roadmap, and the spectrum management included. Yep, sir, all yours. Okay, sir. So basically in this lecture, I will take 2-3 things because you all are SSA head and have been doing your work very nicely. And due to this input you have given to us, we are in the such pace that we are going to roll out the 4G network as early as possible. Now, 3 things I want to tell you as SSA head. See, 3 things, I will focus only 3 things. That is, upgrade the network. So upgrade is just like a planning. Here I have to upgrade 4G network. I have to do the IT upgradation. We have to do the any upgradation work which is related to the network expansion in terms of coverage, in terms of capacity, in terms of throughput. So that's what we are doing. So that is a 4G planning. Now, the second point is the upkeep. So as target have been given, we have to more than 90%, 99%. Wherever 99% is there, things are okay. If it is less than that, we are not utilizing our capex optimally. In upkeep, already VATS maintenance has been covered. Maintenance battery upgradation of means we are putting in terms of battery, power plant, other things, so that you can upkeep the network. And nowadays our network has been increased around 5% availability within next 6 months. And maybe when we will get more battery power plant and the payment to our rent sites or our partners, if it is improved, certainly we will go for more than 99%. And third thing is the uptrend of the sale. ये आपने सामान ले लिया, सामान को मेंटेन कर लिया, तो उसको बेचना है. अगर बिका तो पैसा आएगा, नहीं बिका तो पैसा नहीं. अपट्रेंड है, सेल का अपट्रेंड होना चाहिए. अभी तक व्यू ये है, आप देख भी रहे होंगे कि 4G का वेट करते करते हम लोगों को इतना टाइम हो गया कि हमारा कस्टमर हमसे भागता जा रहा है. भागने का कारण भी है क्योंकि मार्केट में पहले हम 4G की बात कर रहे थे, अब 5G भी आ गया है. स्टिल वी आर नॉट इन द पेस ऑफ कि हम 4G अभी लगा रहे हैं. बट जैसा है गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है कि 4G हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत ही लगाना है. कोई भी ऐसा सामान यूज नहीं करना है जो विदेश में निर्मित हो, देशी सामान लगाना है. तो वहीं से मैं चालू कर रहा हूँ अपना लेक्चर कि 2019 में यह आदेश हुआ कि आपको देशी निर्मित सामान लगाना है. BSNL ने EOI फ्लोट किया. 5-6 कंपनियों ने कहा कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, हम लगा देंगे, तैयार है. बट टू चेक इट्स द प्रूवननेस, हमने POC कराने का कहा. तो एक ही कंपनी है TCS जिसने POC का इक्विपमेंट ला के दिया, बाकी किसी ने ला के नहीं दिया. तो इट मीन्स इक्विपमेंट वाज नॉट देयर. एंड अनदर कंपनी इज ITI ने अपना जो कोट किया वो TCS का ही प्रोडक्ट किया था, बट इन द RTO कोटा. एंड POC हुई. एक POC का एक जैसे माइलस्टोन होते हैं, पड़ाव आता है. मोर देन 80% टेस्ट कोर के और रैन के कंप्लीट हो गए थे, तो हमने माना कि इक्विपमेंट चल पड़ेगा और हमने गो हेड दिया. एंड वी हैव गिवन ऑर्डर फॉर 6,000 sites. बट TCS कुड नॉट मैनेज फॉर एट दैट टाइम, करीबन 1.5-2 साल पहले चिप्स वगैरह का सप्लाई का इशू था. उसके बाद फिर और POC हो गया. POC रीच अप टू 96%. उसके बाद वी हैव फ्लोटेड ए टेंडर, नेगोशिएट किया. देन सिंगल बिड थी. सबसे बड़ा दिक्कत थी कि आप 20-22 हजार करोड़ का टेंडर और वर्क्स एक बंदे को दे रहे हैं ऑन नॉमिनेशन बेसिस. कैसे, क्या तरीका रहेगा? थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक पैनल बनाया और द प्रपोजल हैव बीन अप्रूव बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. दूसरी बात, जो हमने रेट्स दिए हैं आज की डेट में, अगर हम विदेशी सामान खरीदें ना तो उस रेट में विदेशी सामान नहीं है. जबकि थॉट ये था गवर्नमेंट का, यदि हमें जो रेट
का सामान विदेशी आता है, उससे 20% भी और 25% भी ज्यादा देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं, बट सामान हमें देशी ही चाहिए। बट वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी आर गेटिंग 100% और इवन हम लेस देन 100% में ही हमें सामान मिल रहा है। तो हमारे को काफी अच्छा नेगोशिएशन प्लस सपोर्ट ऑफ TCS एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा। तो दैट वाज द थिंग एंड नाउ आई विल टेल कि और उसके अलावा क्या क्या चीज रही। तो TCS को PO चला गया है। पूरा जो चारों जोनों का कोर है, कोर हमारा 4 जोन में आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। नॉर्थ में हमारा मेन साइट है DC, जिसको हम बोलेंगे डाटा सेंटर, मेन डाटा सेंटर दैट इज कमिंग इन चंडीगढ़, और इसका DR जयपुर में आ रहा है। ईस्ट में मेन साइट है कोलकाता में, उसका DR भुवनेश्वर में है। वेस्ट में DR साइट है, DC साइट इज इन पुणे, DR साइट इज इन अहमदाबाद, एंड इन साउथ जोन मेन साइट इन त्रिची एंड DC साइट इज DR साइट इज इन हैदराबाद। इस प्रोजेक्ट में हमने NMS भी रखा है, जो पहले कभी नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर पुटिंग NMS। मेन NMS विल बी इंस्टॉल्ड एट पुणे एंड DR विल बी एट हैदराबाद। इंफ्रा के सारे काम हो चुके हैं, इक्विपमेंट स्टार्ट होना चालू हो गया है। मीनवाइल हमारे पास 200 साइट का हमारे पास जो सामान आया था वो हमने अमृतसर में लगा दिया है। वो प्रेजेंटेशन में है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास सामान और आ गया करीबन 3000 साइट का, जिसमें से हमने पहले नॉर्थ इंडिया में हमने लगाने का सोचा है। इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, UP वेस्ट, HP और उत्तराखंड। तो करीबन 1000 साइट लग चुकी हैं कल शाम तक। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है एट द टॉप लेवल। सेक्रेटरी साहब डेली रात को 9 बजे मीटिंग लेते हैं, डेली इनवेरिएबली, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे। ठीक है। PM ऑफिस रिव्यू टेक एट एवरी 15 डेज, मंत्री जी रिव्यू टेक एट एवरी 7 डे। तो आप इस प्रोजेक्ट की गरिमा को समझ सकते हैं। कुछ लोगों जो हैं इनके पास सामान आ गया है, उनको उसकी हीट फील हो रही होगी कि कैसे कैसे सामान। ठीक है। तो चलो अब इस पे आते हैं हम कि एज ऐसे शेयर चल। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकली नॉलेज है, ऐसे शेयर को बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। मोटा मोटा नाम ही उसका जनरल मैनेजर है, तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। एक मैं एनालॉजी देता हूँ कि हमने जितनी भी हमारा एनर्जी लगाया है, जितना हमारा एफर्ट लगाया है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग में किया है। 93% हम सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 7% हम करते हैं जनरल में। जबकि आप जनरल मैनेजर बन जाते हो तो 85% आपकी जो काम आती है जनरल आती है, 15% आपकी टेक्निकल आती है। वो आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में 2G 3G 4G इनमें क्या अंतर है, ये समझने के लिए 2-3 पैरामीटर हैं कि जैसे जैसे हर टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन होता है, तो एक तो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी हमारी 3 गुनी हो जाती है, एक लेटेंसी कम हो जाती है, और एक मोबिलिटी बढ़ जाती है। एज फॉर एज इंडिया में हमें मोबिलिटी की ऐसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ट्रेन भी 180 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती, और गाड़ी भी नहीं चलती, और चलाती है तो हमारे वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट वाले ब्रेक लगा देते हैं कि भाई यहाँ 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं लगाओगे। अभी मैं आगरा गया था, मेरा चालान आ गया घर पे कि गाड़ी की स्पीड 130। ठीक है। तो हमारे को मोबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, टेंशन है लेटेंसी, स्पेक्ट्रम एस्पेसी और थ्रूपुट। तो ये तीनों चीजों में जैसे जैसे हमारा जी बढ़ता जाएगा, हम उस पर ध्यान देना। ठीक है। ये आर्किटेक्चर है वो इसलिए बना के दिया है कि जब हम SSA बनते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों को पता नहीं होता कि भाई कहीं फॉल्ट आ गया, कि साहब आपके रेंज साइड में फॉल्ट आ गया, तो वो बताता है साहब, GTO साहब बताता है साहब वो उसको तो कनेक्ट होगा BSC से, BSC कनेक्ट होगा MSC। तो बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर है कि 2G में हमारे पास थ्री टायर स्ट्रक्चर था। कोर और रैन के 2 पार्ट थे, BSC और जो हम BTS बोलते हैं। ठीक है। और MSC। जब हम 3G में आए वही स्ट्रक्चर चला, सिर्फ उनके नाम चेंज हो गए थे। कोर को हम MSC बोलते थे, हम MGW नाम हो गया था, वहां जहाँ BSC था उसका नाम RNC नाम हो गया, और जहाँ पे हम BTS बोल रहे थे उसका नाम नोड भी हो गया। जब हम 4G में गए तो 4G में आपका जो RNC वाला पोर्शन था उसके कुछ फंक्शनलिटी आपकी कोर में चली गई, कुछ फंक्शन आपकी रैन में चली गई, तो अब 2 ही स्ट्रक्चर रहे। तो आपको नोड बी को आपने नोड बी में नाम दे दिया, और कोर का आपने MME बोल दिया, जिसको हम नॉर्मली अब कोर ही बोलते हैं। ठीक है।
और जैसे जैसे हम 5G में जाएंगे तो ई नोड भी नेम है, जी नोड भी, और कोर का नाम कोर ही। ठीक है, बस ये फंक्शनलिटी फर्क है कि पहले कोर जो आ रहा था वो बेयर मेटल आ रहा था, उसके बाद सर्वर बेस है जो हमने लिया है एनएफपी, आगे भी सर्वर बेस आएगा, उसमें भी एनएसए कोर और एसए कोर। तो ये मैंने 2G 3G 4G 5G का आपको मोटा मोटा मतलब बता दिया, वो आपको पता होना चाहिए। जब कोई कस्टमर आपसे आए तो आप जब ये शब्द बोल दोगे तो उसको लगेगा कि हम आपको पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं ज्यादा नहीं जा रहा, इसमें आप देख लेना जब भी आपको फुर्सत मिले तो। ठीक है, क्या आर्किटेक्चर है। अब हमारे पास ये होना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, अरे सर हम ही चला सकते हैं। तो एक कोई कंपनी है उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे कि वो सेलुलर मोबाइल सर्विस चला सके। तो सबसे पहले वो होना चाहिए उसके पास वैलिड टीएसपी लाइसेंस, जो बीएसएनएल के पास है। अभी तक हमारे पास जो लाइसेंस था वो 2000 में एक पेपर लाइसेंस दिया गया था, कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट नाउ वी हैव टेकन अ यूएसएल लाइसेंस, जिसमें कि कोई भी टेक्नोलॉजी का वार नहीं है, किसी भी कोई भी स्पेक्ट्रम आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे चलाइए। दूसरी बात, अभी तक हमारे पास जो लाइसेंस था रेस्ट ऑफ दिल्ली बॉम्बे को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया का था, बट जो अभी हमें स्पेक्ट्रम मिला है वो दिल्ली बॉम्बे के लिए मिला है। तो हमारी अब दिल्ली बॉम्बे में सर्विस एज ए ग्रीन फील्ड ऑपरेटर चालू होगी। उसके बाद फिर है दूसरा एक्सिस और वैकॉल स्पेक्ट्रम। तो ये पूरी वाली कीमत जब हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा कीमती वाली चीज है वो स्पेक्ट्रम ही है, वो हम बताएंगे आपको कि कैसे स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है। तो एक्सिस में हो गया जो हम लोग कस्टमर से इंटरफेस करते हैं, और बैकएल में ये है जो हम रैन साइड से बनने के बाद फिर एमएससी बीएससी पे या और नॉर्थ बाउंड में ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोबाइल टावर होंगी, आरटीटी होंगे, पोल्स होंगे, उतना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी हमारी रीच बढ़ेगी, कवरेज ज्यादा बड़ा होगा, और उसी तरह कंपनी की इवोल्यूशन बढ़ेगी। उसके बाद मीडिया है, मीडिया ऑप्टिकल फाइबर एफटीटीएच पे भी देते हैं आजकल हम, वो ऑप्टीटीएच और यही है, क्योंकि नाउअडेज हम लोग सोच रहे हैं दिल्ली बॉम्बे और बड़ी बड़ी जगह में, नागपुर में भी सोचा जा सकता है कि हम हमारा मीडिया ना लगाएं, और हम जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टीआईपी हैं या जो ऑप्टिकल फाइबर बेच रहे हैं या केबल ऑपरेटर हैं, उनकी ऑप्टिकल फाइबर लेके हम उस पर बीटीएस चलाएं, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। यानी दे आर गिविंग बेटर एसएलए देन व्हाट वी आर मेंटेन, तो व्हाई डोंट वी टेक। उसके बाद मीडिया है माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव में अभी तक हम लोग सिस्टम में काम कर रहे थे वो सिर्फ लाइसेंस बैंड में दे रखते, 15 गीगाहर्ट्ज और 18 गीगाहर्ट्ज में। अब हम फर्स्ट टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस फॉर द फ्री बैंड, दैट इज द आईएसएम बैंड। तो आईएसएम बैंड में 2.4 मेगाहर्ट्ज में है और 5.8 मेगाहर्ट्ज में हम लोग अभी आईएसएम में अनलाइसेंस बैंड में इक्विपमेंट काफी सारा खरीद रहे हैं। हम फायदा बताएंगे कि फायदा ये है कि लाइसेंस बैंड की जो कीमत है एक की करीबन 3.25 लाख के आसपास पड़ती है, फ्री बैंड वाले की करीबन 80 से 85 हजार पड़ेगी, इंक्लूडिंग एएमसी फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। एंड देन एक लास्ट मीडिया है वीसेट। वीसेट हम कम से कम यूज करना चाहते हैं कि इट इज वेरी कॉस्टली मीडिया, जो उसकी कॉस्ट है करीबन 2.11 लाख पर एमबी होती है, जबकि यहाँ पे हम लोग कुछ हजारों में बेच रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि हम वीसेट मीडिया यूज नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं जहाँ पे कि अगर कहीं कोई मीडिया नहीं है तो वी हैव टू यूज इट। देन एक ये है कि कैपेबिलिटी ऑफ कोर इक्विपमेंट में क्या क्या कैपेबिलिटी है, जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हम अब सर्विसेज दे सकते हैं। तो कोर में अभी हम बात करें एमएमई, एचएसएस, पीजीडब्ल्यू, एसडीडब्ल्यू, आईएमएस, और उसके बाद भी वैल्यू एडेड सर्विसेज के बहुत सारे फीचर हैं, एसएसटीपी वगैरह। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना इक्विपमेंट, जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे हम बिलिंग सिस्टम का है, कुछ ऑपरेटर आउटसोर्स भी कर रखे हैं, कुछ लोग इंटर भी करते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा नेटवर्क लगा रहा है। जैसे हमारे संचार सॉफ्ट है, अपना एप्स वगैरह हैं, तो ये सब लोग उसमें आ जाते हैं कोर के में। उसके बाद नंबर ऑफ रेडियोस, वो जो टावर के ऊपर है, कितने बीटीएस हैं, ई नोड भी हैं, जी नोड भी हैं। आज की डेट में इंडिया में करीबन 25 लाख टावर मतलब रेडियोस हैं, हमारे पास आज की डेट में 1.5 लाख। तो आप देख लीजिए हमारे पास कितना नेटवर्क है, 8% नेटवर्क है हमारे पास। टावर में देखेंगे तो इंडिया में 7.5 लाख टावर हैं, हमारे पास 66,000 टावर हैं, वो भी हम 9% बेचते हैं। लीज इन में देख लीजिए, हमने 22,000 टावर लिख रखी हैं, लीज आउट में हमने 14,000 दे रखी हैं, और 14,000 में भी हम लोगों ने कोशिश करते हैं कि एक नंबर पड़े आए,
बट वो नंबर बढ़ता नहीं। उसके बाद कॉमन कंट्रोल SSTP IN SMSC ये होने चाहिए आपके पास एज पर लाइसेंस। ये स्लाइड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द स्पेक्ट्रम अवेलेबल विद अस एंड द कॉस्ट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज टू द ट्यून ऑफ 1.4 लाख करोड़ रुपीस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है 1 लाख करोड़। जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास अभी तक 6.2 मेगाहर्ट्ज था सब जगह। अभी हमें 6.4 मेगाहर्ट्ज मिला है एवरी प्लेस में एंड कॉस्ट इसकी करीबन 26,000 करोड़ रुपए है। ये अगले 20 साल के लिए हमने रिन्यू करा दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली। गवर्नमेंट ने जो भी पैसा दिया है वो ये कहा है कि भाई साथ लो बट उस हाथ से दे लो। तो बेसिकली जो पैसा दिया है, नो डाउट वी हैव नॉट टू पे इन फॉर्म ऑफ कैश बट वी हैव टू पे इन फॉर्म ऑफ इक्विटी है। इक्विटी इन्फ्यूजन के थ्रू किया है। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो अभी 1.5 लाख करोड़ की थी, अब करीबन 3.5 लाख करोड़ की हो गई। ठीक है, कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, स्पेक्ट्रम का बहुत आ गया है। अब उसका हम जितना यूज कर पाएंगे उतना हमको फायदा होगा। उसके बाद 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। ये मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम हमारे पास था ही नहीं पहले एंड गवर्नमेंट ने ये पिछले साल बेचा था मार्च 2022 में और वहां पे इसकी कॉस्ट आई थी 39,700 करोड़ रुपए, करीबन 46,300 करोड़ रुपए का इंक्लूडिंग GST पूरे इंडिया का स्पेक्ट्रम था। तो मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये स्पेक्ट्रम हमें चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में नंबर्स, क्योंकि 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट उसी टाइम आया था एंड उस टाइम थॉट ये था कि हम 2100 मेगाहर्ट्ज में चलाएंगे। 2100 मेगाहर्ट्ज में करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर और रूरल में जाओगे तो मैक्सिमम 2 किलोमीटर से ज्यादा आपको कहीं सिग्नल नहीं मिलता, बट इसमें आपको 5 किलोमीटर मिल जाता है। तो 5 किलोमीटर के चक्कर में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और इन्होंने हमें पैन इंडिया पूरा 700 मेगाहर्ट्ज दे दिया इंक्लूडिंग दिल्ली बॉम्बे, 40,300 करोड़ का है। देन 850 मेगाहर्ट्ज हमने हर जगह 2100 मेगाहर्ट्ज मांगा था, 5 मेगाहर्ट्ज, बट राजस्थान में और दिल्ली में नहीं था तो उन्होंने राजस्थान में 5 मेगाहर्ट्ज दे दिए, 850 में दिया और दिल्ली में हमें 10 मेगाहर्ट्ज दे दिया। इसकी कॉस्ट भी करीबन 17-18 हजार करोड़ रुपए है। देन 2500 मेगाहर्ट्ज का जो 2600 की बात कर रहे थे, ये मेगाहर्ट्ज का ऐसा स्पेक्ट्रम है जो अभी तक हम यूज नहीं किया, हमने सिर्फ हमारी बायोमेक सर्विस में यूज किया था। जब स्पेक्ट्रम दिया था ये तब हमारे काम का नहीं था, जब सब लोग काम ले रहे हैं तब हमें यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने फिर गवर्नमेंट को कहा कि भाई ये स्पेक्ट्रम हमें और दे दीजिए, तो उन्होंने 6 LS से पहले हमारे थे दिल्ली बॉम्बे मिला के और 8 हो गए, तो ये स्पेक्ट्रम अभी दिया है, इसकी कीमत 9,800 करोड़ रुपए। फिर हमने 5G का स्पेक्ट्रम मांगा तो 3600 मेगाहर्ट्ज में 70 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया है, कॉस्ट इज अराउंड 19,000 करोड़ रुपीज। और मिलीमीटर वेव में हमें ये 800 मेगाहर्ट्ज का दिया है 26 गीगाहर्ट्ज में, ये हम 5G सर्विस करें। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है 1,40,000 करोड़ आती है। 1,40,000 करोड़ है 20 साल का, 20 साल का मतलब 240, 140 में 240 का भाग दीजिए, आएगा आपको 580 करोड़ के आसपास। तो 580 करोड़ रुपए 26 की गार्ड से, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमको 580 करोड़ रुपए हर महीने स्पेक्ट्रम के दे रहे हैं, चाहे आपकी बिक्री हो या ना हो। आज की डेट में हमारा रेवेन्यू है 580 करोड़ रुपए पूरे मोबाइल का। तो आप ये देख लीजिए कि उसमें आपको AMC भी देने हैं, एम्प्लॉय की कॉस्ट भी देनी है, बिजली का किराया भी देना है, मकान का रेंट भी देना है, IP साइट का रेंट भी देना है, और व्हीकल्स का भी किराया देना है। तो आप ये देखिए कि हाउ वी हैव टू मैनेज। तो हमको कम से कम अगर हम 1,500-1,600 करोड़ रुपए पर मंथ रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है कभी क्लीन नहीं होगी, ये रेडी रहेगी, क्योंकि ये पैसा तो देना ही देना। 580 करोड़ रुपए हर महीने जाना ही जाना है, चाहे आप बेचो तो नहीं बेचो। तो हमको इस तरह अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है कि जो सामान आ जाए उसको इमीडिएटली बेचें और एटलीस्ट वी कैन इंक्रीज टू द टू। नहीं नहीं, बैलेंस शीट में तो आपको दिखाना पड़ेगा ना भाई, आपको एवरी ईयर यू हैव टू पे 580 करोड़ मतलब पर मंथ इतना देना है आपको। तो देना का मतलब क्या है, लाइबिलिटी हो गई ना।
भाई हमने उनको शेयर दे दिए, ठीक है, शेयर दे काम करना हो गया। अब आपकी कंपनी में आप इस पैसे को, आपका जो यूज, राइट ऑफ यूज है, वो हर साल कम होता जाएगा, तो आप अमोर्टाइजेशन भी करोगे, आप अमोर्टाइजेशन करोगे, ठीक है, तो 1,40,000 डिवाइड बाई 20, तो 7,000 करोड़ रुपए पैसे डालोगे आप, तो 7,000 करोड़ रुपए हर बार आपके अमोर्टाइजेशन में आएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन में होते हैं, तो वो तो डालना ही है आपको, तो वो फिगर तो आपका नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। तो आपको कम से कम अगर 20-21,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू हमारा मोबाइल का आएगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्लाइड तो बताने का मेरा ये इंटेंशन था कि हम जब प्लान करें तो ये देखें कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। हमने ले तो लिया स्पेक्ट्रम, अब बात है कि हम यूज कर पाएंगे कि नहीं, और यूज कर रहे हैं तो ऑप्टिमली यूज हो रहा है। तो जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा था कि CN/PN में हमारे पास लोग हैं कि साहब हमें आप 5G की सर्विस चलाओ, हमने कहा चला देंगे, बट वो जो पैसा है 3600 मेगाहर्ट्ज में 18-19 हज़ार करोड़ का लिया है, स्पेक्ट्रम के पैसे देने पड़ जाएंगे मेरे को उसी महीने से, बट रेवेन्यू क्या रहा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो उसमें चलाने का फायदा क्या है। जब तक हमारे पास वॉल्यूम में बिजनेस नहीं आए, तब तक हम यही सोच रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का पैसा तभी, मतलब इक्विटी तभी देंगे गवर्नमेंट को, तब जब हमारे पास कोई बिजनेस मॉडल बने, ठीक है। अभी ऐसा है, अप्रूवल आ गई कैबिनेट से, अब मुझे तो जिस दिन लेना है मुझे देना ही है पैसा। हाँ स्टार्ट कर दिया ना, जैसे अभी हमने पंजाब में सर्विस है तो पंजाब का दे दिया, हमने 5 सर्कलों का दे दिया। अभी ऐसा है, DOT का थॉट तो यही है कि आप एक साथ दे दो हमें, हम ये करें टुकड़ों में लेना है। अदरवाइज जिस दिन हमने दे दिया उनको तो, उनका, उनके लिए तो एक अर्निंग हो गई ना गवर्नमेंट के, भाई उनका भी एक टारगेट है कि भाई हमने स्पेक्ट्रम बेच दिया, चाहे ऑक्शन के थ्रू बेचा चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली बेचा, उनका टारगेट पूरा हो गया। अभी तक उनका टारगेट पूरा नहीं है, तो दे आर आल्सो परस्यूइंग टू अस कि भाई आप फट से दो। बिल्कुल देना चालू कर दिया ना भाई, एक भी साइट लगा दी आपने, आपका चालू। नहीं नहीं, अब पंजाब का अभी ऐसा है, 5 वर्ष में पूरा पंजाब का जितना शेयर होगा उतना देना पड़ेगा। सर कैश आउटफ्लो नहीं होगा आपकी इक्विटी में, जो आप, जैसे आप डेप्रिसिएशन लेते हो सर, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट की 10 साल है लाइफ, तो इक्विपमेंट की लाइफ का 10 में डिवाइड कर देते हैं, और स्पेक्ट्रम की 20 साल की है तो उसे 20 से डिवाइड कर देते हैं, बुक्स में डालना पड़ेगा। तो सर आपका प्रॉफिट लॉस तो बुक्स दिखाती है ना सर। नहीं सर, सर हर समय आशावादी होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है सर कि हम, हमारे पास अभी 1-2 रामबाण हैं, वो चलेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि मैं, पहले क्या हालत थी हमारी कि हम लोग 2100 मेगाहर्ट्ज मांगने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा था, अब इतना बड़ा स्पेक्ट्रम मिल गया, सब चीज मिल गया है, गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल गया, साथ में जो हमें कैपेक्स के लिए 22,471 करोड़ रुपए मिला है, प्लस हमने 6,998 करोड़ का और रिक्वायरमेंट भेज दिया, क्योंकि हमारे पास जो 4G में 12,610 की अप्रूवल थी, आपने 17,000 की भेजी है, तो वो भी गवर्नमेंट कैबिनेट में आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो इनेबल कर दिया क्लॉज, तो वो भी मिल ही जाएगा। इसलिए हमको पैसा जेब से नहीं लगा रहे, ठीक है बुक्स में आ रहा है, बट हमको ऐसी स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी जिससे रेवेन्यू बढ़ जाए। अब क्या हो सकती है कि या तो मैं सर्विस, एक तो यह सर्विस बहुत अच्छी दूं, तब दूसरा ऐसा भी सर्विस थोड़ी मेरी खराब है तो मैं सस्ती दे दूं, और सस्ती भी इतनी सस्ती कर दूं कि यार ले लो बस तुम, तो नंबर बढ़ जाए मेरा, एक बार नंबर बढ़ा अपने आप फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी हमें लानी पड़ेगी कि एक बार नेटवर्क लग जाए तो जितने ज्यादा कस्टमर हो जाए उतने ज्यादा कस्टमर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकहॉल पे भी 2 तरह के स्पेक्ट्रम है, जो मैं बता रहा था, 15 गीगाहर्ट्ज में, 18 गीगाहर्ट्ज में। 18 गीगाहर्ट्ज में हमारे पास स्पेक्ट्रम है कर्नाटका और कोलकाता और तमिलनाडु में, वो हम वापस कर रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। क्योंकि हर वाले कैरियर पे हमें 0.15% ऑफ AGR देना पड़ता है हर सर्कल में, तो अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा अब ये है कि जो 56 मेगाहर्ट्ज के 2 कैरियर हमें मिले हुए हैं, यही मोर देन एनफ है। तीसरा हम लोग अनलाइसेंस बैंड अब ले रहे हैं, तो जब
क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑपरेटर ने 75% अपना माइक्रोवेव इक्विपमेंट है वो अनलाइसेंस वेंडर पे लगा रखा है, बट हमने नहीं लगा रखा, हमने सिर्फ लेफ्ट स्विच में लगाया था, वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दूसरा क्या है, पिछले 5-7 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई, तो इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से वहां पे भी हम 1G पे जा रहे हैं। अभी मैंने हिमाचल से कोई है, हिमाचल में और राजस्थान में लगाया सिस्टम 575 मेगाहर्ट्ज आ रही है। आपके यहाँ शिमला में लगाइए एक साइड, वहाँ पे 500, हाँ नहीं नहीं, ये यूवीआर का माइक्रोवेव सिस्टम लगाया है HFCL ने, 575 MBPS का थ्रूपुट आ रहा है वहाँ पे। और हमने फिरोजपुर में कौन है, फिरोजपुर में भी लगाया है अभी सिस्टम, और राजस्थान में भी लगाया है सिस्टम में 500 से ऊपर आ रही है बैटरी। ठीक है, तो काफी अच्छे सिस्टम है और कॉस्ट है करीबन 60-70 हजार रुपये। दूसरा हमारे पास कोई आसाम नॉर्थ ईस्ट HB में भी C1 की DC के सिस्टम है, तो अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको सबको अपन खत्म करने जा रहे हैं। नाउ वन मोर टेक्नोलॉजी हैज आल्सो इवॉल्व्ड, दैट इज इवेंट। तो इवेंट वहां के लिए है, जैसे क्योंकि इवेंट का जो डिस्टेंस है वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो जितनी भी हमारी कंजेस्टेड साइट है, स्पेशली द सिटी एरिया, या जहाँ पे आप ऑप्टिकल फाइबर डाल नहीं सकते और लाइन ऑफ साइट मिल रहा है आपको, तो वहां पे आप इमीडिएटली ये लगा दीजिए। और सबसे बड़ी ब्यूटी इस सिस्टम की है कि 2-3 घंटे में लग जाता है, यानी एक तरफ एंटीना, दोनों तरफ एंटीना लगाए, ऑटो अलाइनमेंट फीचर आ रहा है इसमें, और इमीडिएटली आपको 1 gig की कैपेसिटी बिल्कुल मिल जाएगा है। बट आप ये बताओ, आपके 1-2 किलोमीटर का एरिया नहीं होगा, आपके ज्यादा होंगे, आपके जितने 1 किलो 2 किलोमीटर आपके डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम आपको माइक्रोवेव देंगे। हाँ, नहीं, 1-2 एरिया में दे देंगे, आइसोलेट में तो आप लाइन ऑफ साइट कैसे ले जाओगे? नहीं तो फिर आप माइक्रोवेव क्यों लगा रहे हैं? अरे माइक्रोवेव लगाओ ना। तो इस ये किसकी, आप ये बताओ आपको कितनी स्पीड चाहिए, मैं माइक्रोवेव में दूंगा ना, क्योंकि आपके चलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपकी बारिश हो गई ना, ये सिस्टम फेल हो जाएगा। सिटी में फर्क नहीं पड़ता, सिटी में अल्टरनेट मीटर रहेगा, आपके पास अल्टरनेट होगा नहीं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएंगी, तो यहाँ दिक्कत आएगी। ये बैंड है 61-66 एंड सॉरी 71-76 एंड 81-86। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बोला PO चले गए हैं, और बीटा लॉन्च हमने 15 जुलाई को कर दिया। 4G प्रोजेक्ट का स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया था। एक नया डेवलपमेंट अभी हुआ है कि हमने साउथ जोन में भी इनका टेस्ट करा दिया, 99% टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो नीचे की लाइन लिखी है। इन एडिशन टू दैट हमने TCS का रैन नोकिया कोर से भी कनेक्ट कर दिया, वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। ये बीटा लॉन्च के आपने फोटो देखे होंगे ग्रुप्स वगैरह पे। ठीक है, ये इक्विपमेंट आएगा आपका इधर वाला, ये वाला जो इक्विपमेंट है, ये दिस इक्विपमेंट विल बिकम। ठीक है, एंड आई थैंक्स टू पंजाब सर्कल, जो इन्होंने केक बनाया ना, बड़ा अच्छा है, देखा हम लोगों ने, हैं? नहीं नहीं, इक्विपमेंट ले गए, मोबाइल फोन बनाया है साथ में। क्रिएटिविटी अच्छी है पंजाब सर्कल में लोगों की। ठीक है, इसी तरह में हमको बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, करीबन 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें 4G सैचुरेशन, BOP, LWE, और लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का सारे वर्क अवार्ड हो गए, आपको पता ही है, आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना जल्दी से जल्दी साइट लगवाएं उतनी लगा दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले हमें 9 दिसंबर का टारगेट दिया था, अब उन्होंने 31 मार्च का टारगेट दिया है, तो जितनी साइट हम लगा दें उतनी हम ठीक। दूसरा ये है कि अभी जितनी भी हमारी रीसेट पे साइट चल रही थी, उनको ऑप्टिकल फाइबर पे या माइक्रोवेव पे कन्वर्ट कर दिया है बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया वो कन्वर्ट कर दें। ये है ब्रॉड स्कोप ऑफ द टेंडर में, मोटा मोटा मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन से बैंड आ रहे हैं, FTT के कौन से बैंड है, TTT कौन से बैंड है। FTT TTT में अंतर मालूम है, ये थोड़ा बता दूं, है बेसिकली बताओ ना। FTT में हमारे पास 2 पेयर होते हैं, एक अपलिंक का, एक डाउनलिंक का। तो मजबूरी ये है कि आप अपलिंक के, जैसे मैंने 10 मेगाहर्ट्ज का मेरे को मिला,
जैसे मैंने कहा आपको कि 2100, आपको 2100 मेगाहर्ट्ज में या 700 में 10 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिला, तो एक अपलिंक की फ्रीक्वेंसी, एक डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी है। डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हायर वाली होती है, अपलिंक की नॉर्मली नीचे वाली होती है। मजबूरी यही है कि 10 मेगाहर्ट्ज मिला तो मैं 10 मेगाहर्ट्ज ही यूज कर सकता हूँ, जबकि टीटीडी में क्या होता है, आपको एक पूरा स्लैब मिलता है 20 मेगाहर्ट्ज का, तो जिसमें आप 15 अप कर दो, 5 डाउन कर दो, 20 आप डाउन कर दो, 2 अप कर लो, तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज करना चाहते हो। तो नॉर्मली अभी स्पेक्ट्रम में टीटीडी का ज्यादा अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चल रहा है, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मली डाउन लिंक में हम ज्यादा स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, अपलिंक में कम करते हैं। जबकि आपकी एंटरप्राइज कस्टमर में डाउन लिंक में आपका कम स्पीड होगी, अपलिंक में ज्यादा होगी। तो इसलिए जब हम एंटरप्राइज की बात करेंगे तो वहां पे ये होगा, हर समय अपलिंक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो डाटा वहां से फैच कर रहा है, डाटा भेज रहा है। जबकि यहाँ पे है आपको कस्टमर को चाहिए डाउन लिंक स्पीड ज्यादा चाहिए। बट होता क्या है, एफडीटी में हम लोग फिक्स कर पाते हैं उससे कि हम 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते, बट इसमें हमें 20 मिल गया। हम समवेयर नॉर्मली 70-30 यूज करते हैं, नॉर्मली लोग 70% डाउन लिंक पे, 30% अप लिंक पे, बट हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम 90-10 तक भी जा सकते हैं। देन अभी जो अभी इक्विपमेंट आ रहा है उसमें हमने एंटीना लिए हैं, वो 2 तरह के एंटीना लिए हैं, 4 पोर्ट एंटीना और 10 पोर्ट एंटीना। 4 पोर्ट एंटीना है वो 700 मेगाहर्ट्ज का जहाँ इक्विपमेंट चल रहा है, या 900 मेगाहर्ट्ज का है 2G का, वहां पे आएंगे। हमने ये प्लान किया है कि 1 लाख की 1 लाख सेटों पे सारी जगह एंटीना चेंज हो, सारे एंटीना चेंज हो गए। सर 2 तरह के एंटीना हैं, 4 पोर्ट और 10 पोर्ट। 4 पोर्ट वाला एंटीना है वो 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज चलेगा, यानी लोअर पोर्ट वाला। और जो 10 पोर्ट वाला है इसमें 4 पोर्ट लोअर के हैं और 6 हायर वाले हैं, जिसमें आपकी 2G की सेट भी चलेगी, 4G की भी चलेगी लोअर पोर्ट में, 3G भी चल जाएगी और 4G भी चलेगी, सारी सेट आपकी चलेगी। 3G का प्लान ये है कि जैसे जैसे हमारा स्टेबलाइजेशन होता जाएगा 3G की सेट को हटाते जाएंगे। ऐसा अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है कि इसको रिडिप्लॉय करें, क्योंकि जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट आने वाला है। क्योंकि रिडिप्लॉय में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पुराना सामान एक जगह से दूसरी जगह निकाल कर ले जाएंगे, उतनी कॉस्ट आ जाएगी और चलना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7-8 साल पुराना तो हो ही चुका प्रोजेक्टिव वाला भी सिस्टम, और जब 1 साल और रहेगा तो और 1 साल और बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, हम स्पेक्ट्रम भी वही यूज कर रहे हैं 2100 मेगाहर्ट्ज वाला, तो सेम विल बी यूटिलाइज इन द 4G, तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं। फोर जी की प्लानिंग गाइडलाइंस हमने निकाली दी है। अभी इक्विपमेंट में जब हमने प्लानिंग गाइडलाइंस निकाली थी तो ये था कि हम लोग, अगर हम एक साइट बोलते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, 4 साइट है। कैटेगरी ए का मतलब है जहाँ पे कि 700 मेगाहर्ट्ज है, यानी प्लेन वनीला 700 मेगाहर्ट्ज, जिससे कवरेज बढ़ेगा, थ्रूपुट ज्यादा नहीं आएगा। बट हमने करीबन 30 Mbps की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। कैटेगरी बी में 700, उसके ऊपर 2100 जोड़ दिए, तो आपको कवरेज भी मिला प्लस कैपेसिटी मिली फ्रॉम द 2100 मेगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी डी 700 प्लस 2100 प्लस 2500, यानी हाई कैपेसिटी साइट है, हाई थ्रूपुट है, कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हाईवे साइट है, हाई फुटफॉल है, यहाँ पे आपको लगना है तो कैटेगरी टी साइट लगना। और कैटेगरी कवरेज की अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि रूरल एरिया में 700 मेगाहर्ट्ज में करीबन 5 से 5.5 किलोमीटर आएगा, बट अगर आप 700 मेगाहर्ट्ज को सिटी में लगाओगे तो 4 किलोमीटर आएगा। बट ब्यूटी ये है कि आपका इंडोर कवरेज बहुत अच्छा हो जाए 700 लगाने से। ठीक है, जो आपका 2100 मेगाहर्ट्ज है उसका कवरेज करीबन 1.5 किलोमीटर आता है, रूरल में 1.25 किलोमीटर भी आ जाएगा, हो सकता है तो भी पहुंच जाए, बट 1.5 पौने 2 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। सिटी में करीबन 1.25 किलोमीटर रहेगा। और जो 2600 मेगाहर्ट्ज है उसका जो रहेगा आपके पास, नमस्कार, 26, वेलकम टू डायरेक्टर सीएम सर। 26 मेगाहर्ट्ज में हमारे पास करीबन 300 से 500 मीटर के बीच में कवरेज आएगा, डिपेंडिंग अपॉन लाइन ऑफ साइट। अभी जो हमने इक्विपमेंट लिया है कैटेगरी ए में, वो 44R के 2 RRH भी हैं, जिससे 2 एंटीना, यानी 2 आपके सेक्टर, 2
टू टीआर में काम करेंगे, और एक सेक्टर जो पब्लिक को इंटरफेस करेगा वो 44 आवर से काम करेगा। द रीजन बीइंग कि हमें कॉमर्शियली वो सस्ता पड़ रहा था, बजाय हम 2 आवर का लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी जो हमारे पास सामान आ रहा है उसमें पहली बार फंक्शनलिटी आता है कि सीपेन की फंक्शनलिटी हमने कैटेगरी ये इसमें इनोड भी डेवलप करा दी तेजस से। तो तेजस का सामान जो है, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर साइट आ रही है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड वाली आप लेंगे, और जहाँ पे माइक्रोवेव साइट है या यूवीआर वाली साइट है या वीसेट वाली साइट है, वहाँ पे आप वीबीयू विदाउट ट्रांसपोर्ट वाली आप लेंगे। ठीक है। और ये फंक्शनलिटी भी है कि आज अगर नहीं ले रहे, कल आपको लगता है वहाँ ऑप्टिकल फाइबर आ गया है, तो आप उस कार्ड को चेंज करा लिए बाई पेइंग 50,000 55,000 रुपीज एडिशनल ऑर्डर वी हैव टू प्लेस टू टीसीएस। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था कि हमने 2 RRS लिए हैं हर कैटेगरी में, तो उसमें 44 आर के 2 RRS हैं, तो ए एक 44 आर केस तो बन जाएंगे आपके 2T2R के दो सेक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक बता। 2 ट्रांस 2 रिसीव, 2 ट्रांस 2 रिसीव हैं। और जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, अभी जैसे आप 5G में जाएंगे ना, तो इसमें 16T 16R 32 30 जिससे आपकी बेसिकली है क्या, आपने डायरेक्शनल एंटीना, मतलब एंटीना को डायरेक्शनल कर दिया, और आपने कारपेट बम्बार्डिंग की, जहाँ पे आपका यूई है वहीं पे आपने सिग्नल भेजा। यही है कि आपको हर एक जो ई नोड भी है, अगर आपका कैटेगरी है तो मिनिमम 100 Mbps, कैटेगरी बी है तो 300 Mbps, कैटेगरी सी है तो 500 Mbps, और कैटेगरी डी है तो 1G। आपको ट्रैफिक एग्रीगेट करके लाना है टू एट द मेन इक्विपमेंट, और वहां से फिर आपको सीधा कोड पे चला जाएगा। सफिशिएंट मैन इक्विपमेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आपकी लग रहे हैं सीपेन इक्विपमेंट भी आ गए हैं, साथ में इनोड इटसेल्फ वर्क एज ए मिनी सीपेन। ये सब चीजें हमने कवर कर ही ली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी कोर ने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने आपको साइट बताई थी, TC TR सभी जगह काम हो गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो गया है, एक्सेप्ट NE2 वो भी कर देंगे। अब ये है कि हमने एक ये कहा है कि बैटरी पावर प्लांट हर जगह मल्टीपल नहीं होने चाहिए, एक बिल्डिंग में एक होना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं है कि एक तो रूल हो गया, कोशिश करो कि छोटी जगह कम से कम आप कर रहे हो, एटलीस्ट बड़ी जगह नहीं कर पाओगे पर छोटी जगह आप कर सकते। दूसरा है कि एग्जिस्टिंग पावर प्लांट बैटरी है, इसकी एग्जिस्टिंग जितनी लाइफ है उसको यूज करके ही आप डालो। अभी अपने सारा डाटा ऊर्जा पोर्टल पर डाल दिया है। बैटरी पावर प्लांट हम कॉर्पोरेट ऑफिस से ऑर्डर कर रहे हैं, ऑन नॉट ऑन योर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। यदि ऊर्जा पोर्टल में आपने इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है, उसकी कैपेसिटी, उसकी लाइफ खत्म हो गई है, हम अपने आप ऑर्डर कर देंगे, आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको वो लगानी है। अभी हमने HOCC में भी कहा था कि करीबन 20,000 हमारे पास बैटरी पावर प्लांट आ गए, लगे हैं अभी 8 है, तो 12,000 लगे नहीं है, 40% लगे नहीं, उनको जल्दी से जल्दी लगा। अगर स्टोर में पड़े रहेंगे तो स्टोर के लिए नहीं। अभी जो हमने करीबन, जैसे मैं बता रहा था, 66,000 सेट हमारी खुद की है, और 22,000 हमने लीजन कर रखे हैं, 88,000, 3,000 सेट MTL के 91, तो 9,000 सेट का ऐसा प्लान है हमारा कि हम IP सेट पे लेंगे, कोई नई सेट हमारे लगाने का कोई प्लान नहीं। सिमिलरली कोई भी हमारी साइट है, स्पेशली वैन, वी आर नॉट सपोज टू रन ऑन द इंटरनल नेट। इंटरनल नेट पर तभी रन करना है जब बहुत ही मजबूरी, अदरवाइज BSNL का कोई प्लान नहीं है कि हमको इंटरनल कॉमर्शियल सप्लाई पे रन करनी है। सफिशिएंट हम आपको बैटरी कैपेसिटी दे देंगे। सर्किल लेवल पे और BA लेवल पे आपको यही काम करने हैं कि जो सर्किल लेवल पे काम करने हैं वो मोस्टली हो चुके हैं, बट BA लेवल पे आपको RFI का करना है कि रेडी फॉर इंटीग्रेशन साइट, जिसमें कि 7 पैरामीटर हैं, बैटरी कैपेसिटी, पावर प्लांट कैपेसिटी, जगह है कि नहीं, एंटीना की जगह है कि नहीं, अर्थ है कि नहीं। इंपॉर्टेंट इज अर्थ, कि आपका अर्थ लेस देन 1 होना चाहिए, आपका एविएशन लाइट है कि नहीं। एविएशन लाइट के लिए भी काम नहीं कि एयरपोर्ट के विद इन 5 किलोमीटर आ रही है तो एविएशन लाइट लगानी है, नहीं तो लगानी है। देन लाइटनिंग अरेस्टर,
तो ये 9 पैरामीटर आपको लगाने हैं। इसके लिए इसका दिया पोर्टल है, वो डिटेल इस साइट पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। दूसरा है कि आप RF प्लानिंग चालू करवा दीजिए, और RF प्लानिंग के बाद जहां जहां आपको नई सेट आनी है वो प्लान कर। ठीक है। पावर कंजम्पशन इक्विपमेंट का TCS ने जो बताया है वो हमें बताया करीबन 1.4 किलो वाट का है, बट प्रैक्टिकली हमने देखा है करीबन 900 वाट का पावर है। अगर आप एक साइड पे मतलब कैटेगरी ए साइड पे 900 वाट का है, कैटेगरी बी पे करीबन 1200 होगा, कैटेगरी सी पे 1500 होगा, और 1.8 किलो वाट होगा कैटेगरी डी। ठीक है। तो आप उस हिसाब से आपकी बैटरी पावर प्लांट प्लान कर। ठीक है। जो मैं बात कर रहा था, एक दिया पोर्टल बनाया है, डिजिटल इनसाइट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। जितनी भी आपकी साइट की इन्फॉर्मेशन है दिया पोर्टल पे है। बार बार में आप लोग, बहुत सारे लोग 4G प्लानिंग ग्रुप में होंगे, वो मैसेज डाल भी भी रहते हैं हम लोग। तो आपको RFI डाटा, इसको इन्फॉर्मेशन को डालना है। बैकएंड पे जो इन्फॉर्मेशन हमें सर्कल से आई थी एक बार हमने डलवा दी। नाउ यू हैव टू आस्क योर टीम टू गो देयर, और वहां पे जाके हर चीज का फोटो लेके आना है। उसमें हमने 10 फोटो का प्रोविजन भी रख दिया है। या जैसे आपका अर्थ कैसा है, एंटीना की जगह है कि नहीं, वहां पे प्लेस स्पेस है कि नहीं। ठीक है। ये आपको काम करवाना है अगले 30 दिन में, चिट्ठियां हम बार बार में लिखें। एंड यही टूल से पता लगेगा कि आपकी, मतलब है कि हम लोग इसी टूल से देखेंगे कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है। अब आप फिजिकली कुछ भी कहते रहोगे सर हमारे तो इतने साइट हो गई हैं, बट इस टूल में एंटर है तो ही माना जाएगा। जैसे आजकल हम बोलते हैं कारपोरेट में आपके पास सामान नहीं है, बट अगर ERP में शो कर रहा है, इट मीन दैट मेटेरियल इज अवेलेबल। ठीक है। तो ये स्टेटस है आज की डेट का, डे टू डे मॉनिटर कर रहा है। देन 5G के लिए, जैसा अगर साहब ने बताया था कि हमने एम्पेयरमेंट कर दिया है कैप्टिव नॉट प्राइवेट नेटवर्क के लिए। मीन वेयर वी आर गोइंग फॉर कि हम 5G में SA पे जाएं या NSA पे जाएं। तो अभी तक प्लान ये है हमारा कि बिकॉज इट इज ए डेफर्ड फीचर बाय द TCS ने डेवलप कर लिया है, अभी NSA जाएंगे। बट अल्टीमेटली हम 3.6 मेगाहर्ट्ज में जो स्पेक्ट्रम है और 26 गीगाहर्ट्ज में, उसमें हम डुअल कोर पे जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 5G ऐसे भी काम करेगा और 5G NSA भी काम। बाकी एक ये भी है, एक हमने EY निकाला हुआ है कि लो पावर जो ई नोड भी है, जैसे अभी हमने 40 वाट के लिए हुए हैं सारे के सारे सिस्टम। अब जैसे मानो कहीं पे 10 वाट का चाहिए, 5 वाट का चाहिए, तो हमने EY फ्लोट की हुई है, उसका POC चल रहा है। वंस POC कंप्लीट वी विल ऑर्डर समथिंग, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो एंटरप्राइज कस्टमर की, तो उस पे अपन लगा सकते। हाँ, थर्ड पार्टी सिस्टम पे लग जाएगा, ओपन इंटरफेस है। हाँ, ये हम जो टेस्ट कराने हैं, जो POC इसी करा रहे हैं कि TCS कोर के साथ चले। ठीक है। लास्ट स्लाइड है मेरी तरफ से कि भाई आपको जो बेसिकली इट इज ए प्योरली ऑपरेशनल इशू, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक दिक्कत यही थी कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, रेंट का पेमेंट नहीं कर पाए। पहले ये था कि BSNL के पास पैसे नहीं थे। नाउ मनी इज दिस, आपको ऊर्जा पोर्टल में एंट्री करनी है। अगर एंट्री हो गई तो आपका ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली दिक्कत यही आती है। दूसरा है बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। अभी तक दिक्कत यही है कि जो बैटरी सप्लाई की है, 3 साल हो गए बैटरी को सप्लाई किए, हम कह रहे हैं जी बैटरी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो हुई द रेस्पॉन्सिबल, वी आर द रेस्पॉन्सिबल। बैटरी की लाइफ हमने 6 साल मानी है, और 200 200 एंड अवर एम्पियर आवर की 6 साल है, और 200 तक की है उसकी 4 साल है। तो अगर इतनी लाइफ चली गई है तो बैटरी की हम आपको दूसरी देंगे। ठीक है। पावर प्लांट भी देख लीजिए कि अभी बहुत सारे मॉड्यूल खराब हैं, उनको रिपेयर करने का टेंडर भी हुआ है। दूसरा कॉर्पोरेट ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शन निकल जाएंगे कि वी आर आल्सो इंगेजिंग एजेंसी। ठीक है। देन एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑप्टिमाइजेशन की, एंटीना ओरिएंटेशन की। तो अभी जो हमें बता रहा था कि आपको सभी जगह हम एंटीना नए दे रहे हैं, तो प्लीज एंटीना की एक ब्यूटी है कि अभी तक जो एंटीना थे हमारे पास 14.5 dBi के इनके थे, अभी जो आ रहे हैं 17.5 के आ रहे हैं। तो आपका नॉर्मल कवरेज है वो भी करीबन 30% बढ़ना चाहिए, और उसी टाइम ऑप्टिमाइजेशन करा दीजिए। जो इक्विपमेंट आ रहा है 100% सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन इक्विपमेंट 100% सोन के साथ आ रहा है, तो आप सिटिंग एट योर ऑफिस ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ रेंटेड साइट में हमारे पास अभी भी इशू आ रहे हैं कि सर हमारे पास एग्रीमेंट हमने
कंटिन्यू नहीं किए तो एग्रीमेंट को कंटिन्यू करो, ईआरपी में एंट्री करो, इसके उनके टाइमली पेमेंट करो। अभी दिक्कत पेमेंट की नहीं है, दिक्कत ये है कि ईआरपी में डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो रहा, ईआरपी में काम नहीं हो रहा। मी को हो रहा है, मायरो हो रहा है, बट आर ब्लॉक रिमूव नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने तो सब कुछ कर दिया। पता लगता है साहब किसी एओ साहब को करना है तो यहाँ फंड की रिक्वायरमेंट आती है, तब पता लगता है उस एओ साहब से बात। तो ये आपको एज एसेट देखना मैन काम है, आपका आर ब्लॉक रिमूव हो रहा है तो समझिए कि आपका पेमेंट होगा। इट इज जस्ट लाइक इशुएंस ऑफ द कैश, वो चेक जैसे आप पहले कहते हैं ना, आपने फाइल तो अप्रूव कर दी, एओ को भेज दी, एओ साहब चेक नहीं दे रहे, तो वो चेक जब तक नहीं जाएगा उसको तब तक माइरो ब्लॉक को हटाना है बस। तो जब तक रिमूव नहीं होगा आपको कोई आप तो कोई नहीं, मैंने फाइल अप्रूव कर दी, बट अप्रूवल का मतलब मैं तो आपको जेनरिक बोला है मैंने। जेनरिक पेमेंट में अभी जो इशू आ रहे हैं, कोई कहता है जी हमारे पास पेमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि पीआर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आजकल नहीं आते 2-3 महीने से, बट फिर भी आते हैं तो पता लगता है साहब मेरे को तो दिक्कत ही है साहब, वो 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तब वो ईआरपी में कुछ दिक्कत है। मायरो तो हो गया भाई, अच्छा तो कर लेना, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड ये है, कोई क्वेरी है यार हो। प्लीज। हाँ यूएसओ साइट जो है, पहले उसका तो ऑलरेडी मतलब आप तो टाइम पीरियड खत्म हो गया था। किस चीज का सर जो पहले वाला जो यूएसओ साइट था, एग्रीमेंट कौन सी साइट बता रहे हो यूएसए, कौन सी वाली? पहले जो यूएसओ वाला जो साइट था सर, पहले कौन सी वाली वो तो पहले में कौन सी एलडब्ल्यू की या कौन? नहीं 13-14 की तो उनमें यूएसओ है ही वो नहीं ना, वो तो यूएसओ की फेज 1 साइट है। वो तो उसका रेंट एग्रीमेंट जो है वो लगभग 2018 में खत्म हो चुका है। ठीक है। 2018 नहीं तो अब आपको साइट कंटिन्यू रखनी है तो आप नहीं रखनी है, तो ये पॉलिसी बीएसएनएल की तरफ से चाहिए। ऐसा है देखो, एज फॉर एज बीएस यूएस ऑफ इज कंसर्न, यूएस ऑफ का प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है। नहीं नहीं, एक्चुअली कॉर्पोरेट ऑफिस से पहले मैसेज गया था कि जहां कहीं भी 40 मीटर जीबीटी लगा हुआ है वो साइट को कंटिन्यू करना है। जो है शहर के बाहर, गांव के बाहर लगा 2 किलोमीटर बाहर, तो वहां पे आप इक्विपमेंट लगा भी दोगे तो काम नहीं करेगा। अब वो जो बाहर जो 2 किलोमीटर लगे हुए हैं, तो वो जो मकान मालिक पैसा मांगता है, हमने तो पैसा देना बंद कर दिया उसको, लोग दे रहे होंगे। दूसरा इशू ये आता है कि वो चोरी हो रहे टावर, मैं वही तो उनका आप क्या पॉइंट करना? कर रहा हूँ, एज फॉर एज यूएसओ इज कंसर्न, यूएसओ में कोई पैसा नहीं दे रहा। अगर आपको लगता है वो साइट कंटिन्यू करनी है, हमें टेक्नो कॉमर्शियल वायबल है, तो आप रखो, नहीं तो रखो, नहीं रखो। नहीं वो तो अब टावर बेचने का डिसीजन आप हमें भेज दो, हम बता देंगे आपको, क्योंकि अभी चोरी हो रहे हैं वो। ये टावर थोड़ी चोरी होंगे सर, अरे लगा हुआ टावर कैसे चोरी होगा? हाँ, अरे सर लगा सर लगा हुआ टावर कैसे चोरी होगा उसमें? नहीं तो टावर थोड़ी निकलेगा सर। जो फील्ड में हो रहा है बता रहे हैं यार हमको। चलो भेजो सर हमारे पास, कैसे देखते हैं सर, बता रहे हैं, एक बात कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। So, very good evening to all of you. May I have the privilege and honor to welcome our special guest of today's evening in this CM vertical training, Honorable Director CM BSNL Board, Shri Sandeep Govil sir. Let's have a round of applause to welcome him in this session. Respected officers on the dais, Honorable Director CM BSNL Board, Shri Sandeep Govil sir, PGM ALTTC, Shri Pratap Narayan Dhoreji, PGM BSNL Corporate Office, Shri Deepak Garg sir, Shri DK Agarwal sir, PGM BSNL Corporate Office, Madam Suchi Srivastav, GM BSNL Corporate Office, other senior officers and colleagues from the ALTTC present in the seminar hall, and all the distinguished participants who are attending this training. You all are
welcome in this interactive session of CM Vertical Training. For the appraisal of Honorable Director Sir, I would like to apprise him that, sir, this is the 7th batch of BA Head IFA training being conducted by ALTTC Ghaziabad from 4th to 8th of December 2023. Sir, total 27 participants are there in this training, out of which 16 are BA heads and 11 are IFAs. And now I request all the participants to introduce themselves to our Honorable Director, sir. Good evening, sir. I am MC Singh, BA Head, Chandigarh. Very good evening, sir. I'm Tashi, IFA, BA Leh, JNK Circles. Good evening, sir. I am Yash Panekar, PGM BA Head, Nagpur, Maharashtra Circle. Namaskar, sir. I am Deepak Gupta, Rewari PA. Good evening, sir. I am Nilesh, sir, IFA Ahmedabad BA. Good evening, sir. I am Sanjeev Singhal from Indore BA. Namaskar, sir. I am AK Gautam, Amritsar BA Head. Good evening, sir. I am BG, IFA Mangalore, Karnataka. नमस्कार सर, मैं एससी बुंदेला, आईएफए होशंगाबाद भी। नमस्कार सर, मैं राकेश चंद्राकर, बीए हेड राउरकेला, उड़ीसा। Good evening, sir. Myself Pulkit Agrawal, IFA Gorakhpur B, UP Circle. Evening, sir. Myself Manoj Kumar, IFA Lucknow UP Circle, sir. Namaskar, sir. Myself Ajit Kumar, BA Head, Hamirpur, Himachal Pradesh. नमस्कार सर, मैं सूर्यकांत सिंह राय, आईएफए बीए सागर, एमपी टेलीकॉम सर्कल। Good evening, sir. Myself G. Ramesh, GMTD Kurnool, AP Circle. Good evening, sir. Myself Shyam Gopal Khatri, IFA Prayagraj, UP Circle. Evening, sir. Myself Shyam Singh, BA Head, Agra. Good evening, sir. I'm Mauritius, IFA of GMTD Meghalaya. नमस्कार सर, मैं नीतीश सिन्हा, बीए हेड सुल्तानपुर यूपी सर्कल। नमस्कार सर, आई एम बीके गुप्ता, जीएमबीए उज्जैन, एमपी सर्कल। गुड इवनिंग सर, आई एम सलील कुमार, बीए हेड तेजपुर, आसाम सर्कल। नमस्कार सर, मैं सुमित दुबे, आईएफए सीतापुर, यूपी सर्कल। गुड इवनिंग सर, मनोज कुमार वर्मा, आईएफए जीएमबीए सतना, एमपी सर्कल। नमस्कार सर, मैं बलबीर सिंह, बहरामपुर बीए, उड़ीसा। Good evening, sir. I'm KV Rao, BA Head, Satara, Maharashtra Circle. नमस्कार सर, myself पीके महापात्र, जीएम बालेश्वर बीए, उड़ीसा। नमस्कार सर, I am Venkateshwarlu, BA Head, Bengaluru, sir, Karnataka. Thank you, sir. Thanks all the participants for introducing themselves to Honorable Director, sir. And now for the appraisal of our special guest, Honorable Director, sir, I would like to apprise him how the day proceeded today with CM Vertical. Sir, the very first session was taken by Shri Rajeshwar Dayal, GM ALTTC, regarding 4G, 5G technologies. Then second session was taken by Miss Madam Reena Malhotra, GM BSNL Corporate Office, regarding government-funded GSM projects. Then after that, next session was taken by Shri Deepak Garg, PGM BSNL Corporate Office, regarding BTS Operation and Maintenance, CNMS. Then post-lunch session, the first session was taken by Madam Suchi Srivastava, GM BSNL Corporate Office, regarding sales and marketing of mobile services. Then next session was taken by Shri Deepak Garg, PGM BSNL Corporate Office, regarding bulk push SMS, M2M and IoT. And the last session was taken by Shri D.K. Agarwal, PGM BSNL Corporate Office, regarding BSNL spectrum, 4G planning, rollout and 5G roadmap. So this is how the day proceeded today, sir, with the CM Vertical sessions. And with your permission, now I would like to request the group who will be presenting today for Honorable Director, sir, with their PPT. Yes, sir. Okay.
There is one group only. I want to send a mail. WhatsApp group. Good evening, sir. First slide. मोड में कर दीजिए and then word file है क्या ये? हाँ, आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली सर हमने जो आउटेज होती है, so by outage we have categorized के what type of faults and how much percentage it caters. So in OF cable cut, it's almost 25% faults are coming under OF cable cut. Hardware fault very few, only 2%, and mini link and other system related issues is around 15%. But the major part of the faults, it comes under mains failure, and that too basically in rural areas where electric supply is less, maybe somewhere 12 hours, 16 hours. Next. There are few cases where owner issues are also there. There are around 3% or so. There are rent finalization issues. In this point, sir, I have to add one point. In 2018, one HPC formation was released, and it was HPC was headed by GM. Then a member was SE Civil, DGM planning or AGM planning, and one coordinator. After a VRS, number of officers have been reduced like anything. See in UP West, there are 5 BA heads GM, and there is only one SE Civil, and there are numerous cases where HPC required to be done. So my suggestion is, if it can be downgraded at the level of if a DGM can head or Axion Civil can be made part of the committee, then many cases can be speed up. Say in Agra BA, if I'm having 20 cases, it's very difficult to visit those cases. Any reference made to corporate office for this? Not yet, sir. Kindly send a reference. We'll make, sir. We'll make, sir. And we'll definitely. Yes, sir. Yes, sir. Good suggestion. There are some IP vendor issues also, and battery backup issues are also there in rural areas especially, that we are also following up. Next. So basically the first point is, we want attention of corporate office that the deployment of lithium ion battery is required. Actually, there are some sites in rural areas where the sites are theft prone. So lead acid battery, there is a value in a scrapping market. In case of lithium ion battery, this tendency I think will be reduced, and maybe this problem may be over also. So in deep rural area, almost 5 to 10% sites are prone to theft. Even right now,
when we got new battery, there is one site as Aila in Agra. We installed the site and we offered that for 80. In between, that battery set was theft. So in such cases, lithium ion battery could be successful in rural area. Definitely, because जब market value, if somebody कोई चोरी करके ले जाता है तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है इस पर बहुत डिपेंड करता है. जो लेड है बेसिकली मार्केट में इजीली एक्सट्रैक्ट करके 90 to 100 रुपीज पर केजी बिक जाता है. इसका स्क्रैपिंग का जो कबाड़ी का मार्केट है वो बहुत बड़ा है. In case of lithium ion, resale value will be almost nil. They can reuse at some other place. That is not easy. जो जितने भी टीएसपी वेंडर्स हैं या आईपी वेंडर्स हैं वो शायद रिलायबल सोर्सेज से खरीदना पसंद करेंगे, ब्लैक मार्केट से खरीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत छोटे प्लेयर्स नहीं है. तो लिथियम आयन वहां पे सक्सेसफुल हो सकता है. सर इसमें मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. हमारे यहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये बैटरी थेफ्ट का. तो इनफैक्ट कल डायरेक्टर सीएफए साहब थे तो मैं भी उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि इसको जरूर कंसीडर करें कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें हमने एक तो क्लस्टर वेंडर पे कोई पेनल्टी नहीं है अगर हम हमारी बैटरी थेफ्ट होती है. अभी प्रेजेंटली जो हम इन्फोर्स किए हुए हैं हम उससे रिकवरी करते हैं जो भी हमारी रेसिडुअल वैल्यू हमारे को प्रॉपर लगती है. तो उससे लेकिन हमारे को ये समझ में आया है कि उनको बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है. अंतर हमारे को आता है क्योंकि अगर बैटरी एक बार चोरी हो गई तो हमको दूसरी बार मिलेगी नहीं. कब मिलेगी हमको पता नहीं. तो आज की डेट भी जैसे हमारे 3-4 जगह थी जहाँ बैटरी है ही नहीं, थेफ्ट हो गई. तो उसके लिए जो एक सोल्यूशन जो हम पिछले तरफ देखते हैं कि वहां पे अगर एक आदमी होता है तो हमारी थेफ्ट नहीं होती है. दूसरी वो आदमी हमारा इंजन चलाता है, साफ सफाई रखता है और हमारे को हर प्रकार से फैसिलिटेट करता है. अभी हमने जो पॉलिसी में रखा है वो 3,000 रुपए पर साइट रखा है. जो एवरेज अगर आईपी और सबका अगर हम से 50 साइट देते हैं तो 3,000 to 50 उसका हमारे को रेट सीलिंग दिया हुआ है. तो कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर सीएफए साहब से भी तो ये कंक्लूजन निकला कि हम कोई ना कोई एक वहां पे प्रोविजन रखें अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस पे कि उनको मैन पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट दोस विच आर हैविंग विच आर थेफ्ट प्रोन. और जो 3,000 रुपए वाला है एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा हम एनहेंसमेंट करें सर. वो एक रिक्वायरमेंट है. दूसरा यह है कि जो साइट्स है उसके लिए अगर हमारे को आदमी वहां पे नहीं मिलता है तो जो ओनर है अगर वो राजी होता है तो हम उसको कुछ रादर देन गिविंग थ्रू वेंडर हम उसको पहले एक स्कीम थी हम 5,000 रुपए देते थे. वॉच एंड वार्ड के नाम से थी वो हम भले ही हम उसको 3,000 कर दें और हम उसको दे सकें और वो हमारे रेंट का पार्ट बन जाए. पहले भी ऐसे ही था कि रेंट प्लस वॉच एंड वार्ड देते. वो स्कीम खत्म हो गई है क्या अभी? जी सर अभी वो कोई लेटर तो नहीं निकला कहीं से कि वो स्कीम खत्म हो गई है? मैं सर हमारे को आया और हमने फोर्सफुली सबका टर्मिनेट किया था. हमने सबसे एग्रीमेंट किया था 5,000 का. हमारे यहाँ 45 थे, हमने 45 के 45 टर्मिनेट किए थे. फिर हमने कोशिश की थी कि हम वेंडर के थ्रू 45 जगह अभी चोरी होना शुरू हो गई. फिर क्या स्टेटस है? सर हमारे यहाँ पे करीब 37 बैटरियां चोरी हुई. आउट ऑफ दिस 45 प्लेसेस? नॉट एग्जैक्टली दिस 45 लेकिन टोटल हमारी 203 साइटों में से वो देखो आउट ऑफ दिस 45 कितनी जगह हुई है? जी सर. बट वो 45 हमने उस वक्त ये था कि वहां पे हमको ओनर का एक्सेप्टेंस मिल गया था तो उसका थेफ्ट से और थेफ्ट प्रोन से कोई रिलेशन नहीं था उस वक्त. आपने 2 आंसर दिए सर. बचाने के लिए हम वॉच एंड वार्ड रखते हैं. जी सर. इसलिए मैं पूछा आपसे कि आउट ऑफ दोस 45 कितनी जगह हमारी चोरी एनालिसिस करते हुए सर वॉच एंड वार्ड है तो भी चोरी हुई है क्या या वॉच एंड वार्ड नहीं था तो चोरी हुई? एक थोड़ा सा देखिए. जी सर विल डू दैट.
any watch and ward, before going into all these things, any watch and ward would cost you something. आप एक आदमी रखना चाहेंगे, उस आदमी की कुछ कॉस्ट होगी। ऑन ए पीरियड ऑफ 3 शिफ्ट्स आप किसी भी एक आदमी को रखेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी विज़ व्हाट यू आर गिविंग टू योर वेंडर, वो सारी एक मॉडलिटी एक बार वर्कआउट कीजिए एंड देन कम आउट विद अ सॉल्यूशन। जी सर, कैन ऑलवेज बी दैट आई विल डू। लेकिन इसमें एक छोटा सा और सबमिशन था सर कि हम राउंड द क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक का हमने करना बहुत पहले छोड़ दिया, करीब 3-2.5 साल पहले ये आई थी कि नंबर ऑफ पर्सन शुड बी रिड्यूस। तो एक ही आदमी रहता था, एक आदमी होना सफिशिएंट है सर। उसको फोन करके बोल देते हैं कि लाइट गई है तो वो चला दे और वो सफिशिएंट। बट उसका रहना वहां पे ये क्लियर कर देता है कि एक बीएसएनएल का आदमी है जो उसको मैन कर रहा है, तो चोरियां रुक जाती हैं। 24 आवर्स रहता है वो आदमी वहां। नॉट नेसेसरी, बट वो आदमी वहां का लोकल है या वहां का नोन है, तो उसको मालूम है कि वहां से रहेगा, वो कहीं गांव से आएगा, रह के चला जाएगा, या तो वो 24 आवर्स रहे वहां। उसी गांव का नॉर्मली रहता है। पॉइंट्स बचे हुए हैं कुछ। पावर प्लांट एंड बैटरी लाइफ रिडक्शन, एक्चुअली सर वी आर टेकिंग लाइफ एज 6 years, but in some cases battery manufacturer gives life in the form of charge and discharge cycles. So normally the life of the battery is 3000 charge and discharge cycle. In case of rural area, if light is going for a thrice, then almost 1000 charge discharge cycle will be completed in 1 year itself. So in that case, the life will become 3 years practically. If it is going by twice, then it will be less than 5 years. So normally, if it is not completing 6 years and before 6 years, 4 years में ही है तो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। और ऊर्जा पोर्टल से आजकल सारा डाटा लेकर के हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी साइट्स जो डीप रूरल में where there is a frequency of 2 to 3 times, then for almost 1 year or more than 1 years, there is no battery backup. If it happens to be hub side, then it affects our transiting sites also. So there is a suggestion, if it can be reduced for the rural areas, depending on the frequency, then it will be helpful in strengthening the network by replacing the battery at early stage. मतलब कितना लाइफ आप प्रपोज कर रहे हैं रूरल एरिया के लिए? सर ऑलमोस्ट यदि हम ये मान लेते हैं कि 2 बार लाइट जाती है स्टैंडर्ड, तो करीब करीब 4.5 साल की लाइफ निकलती है सर, एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन 3000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल। तो मतलब अबाउट 4 to 5 years शुड बी द लाइफ फॉर रूरल एरिया। यस सर। अभी कितनी है? 6 years है सर। अब इससे डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, नॉट बाय रूरल। जी जी। एंड पावर प्लांट? पावर प्लांट इट्स 15 years लाइफ, बट इन रूरल एरिया बर्निंग के इंसिडेंसेस बहुत होते हैं, तो या तो पावर प्लांट के मॉड्यूल्स रिप्लेस हो जाए बीच में जो बियॉन्ड रिपेयर हो, अदरवाइज 8 years और सो, इससे ज्यादा लाइफ इन जनरल होती नहीं है सर। क्यों जल जाते हैं मॉड्यूल? सर बेसिकली कुछ तो इशूज अर्थिंग के होते हैं, प्रैक्टिकली अर्थिंग के नहीं होते। दूसरा वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस वगैरह भी काफी होते हैं, और हीटिंग के कुछ इशूज होते हैं, किसी कारण से फैन वगैरह यूज मतलब नहीं हो रहे हैं, या रूम बंद है, समर का सीजन है, कोई वहां पे स्टाफ नहीं है, तो इस तरह के कुछ इशूज सर डेवलप होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, Yes, डोंट sir. टेक इट अदरवाइज। आई हैड बीन to one of the circle recently and I inspected 2 of the BTS in that circle, and those 2 BTS cannot be in more filthy condition, dirty condition one can imagine. हम उस कंडीशन में पैर भी नहीं रख सकते। उस कंडीशन में हमारे वो दोनों शेल्टर और रूम, एक शेल्टर था एक रूम था, उससे गंदे खराब डस्ट एंड ओपन कंडीशन की चीज नहीं हो सकती। This is the reason our power plant goes out of order. यदि हम अपना नेटवर्क इस तरह से मेंटेन करेंगे तो 6 साल 4 साल कोई भी लाइफ से नहीं होता। हमारे घर में हमारा फ्रिज और टीवी कितने साल चलते हैं? It completes life and even beyond life also. क्यों चलते हैं वो? कभी हमने सोचा? क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमने अपने पैसे दे के खरीदे हैं, और ये बीएसएनएल के हैं जो हमने अपने पैसे से नहीं खरीदे हैं, एंड वी आर नॉट कंसर्न कि यार ये चल रहे हैं, ठीक है चल दो, चल जाए। जी जी।
As a senior officers, it is our duty. Matlab, I was really appalled to see the situation of those two BTS. We are talking of putting 25,000 crores worth of 4G equipment. What for if we are not going? If we are going to put it there, better not to put it. सही कह रहे हैं सर आप. Now you all are the young leaders, CEOs of your BA areas. And I am not sure how many of you are inspecting any of the BTS location. I'm not saying fault है, BTS नहीं है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, light नहीं है, everything is taken care of. वो जब आएगी light चल जाएगा and all. But at least the environment we can keep it right कि वहाँ नहीं ठीक कह रहे हैं सर आप. आप लोग देखो जरा सा in your areas if you will find many such places which are in those situation and definitely that is going to affect all our power plant battery and equipment life. Just an input to each one of you. You all are very senior officers and definitely know what to be done. No one can teach you as a BA head what is to be done, what is not to be done. But this is just an input ki how we can improve our system. जी जी. Just think it over. नहीं ठीक कह रहे हैं सर. जैसे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड तहसील हेडक्वार्टर्स, इवन पावर प्लांट वर्क्स फॉर मोर देन 20 years. I'm talking about our capital place. I have not gone to deep rural. I'm talking the capital of the circle. तो ये सिचुएशन और भी सर्कल्स में होगी, सिमिलर होगी. एक जगह है तो दूसरी जगह भी होगी. I'll request you to visit your places. Don't tell before you are going, because I did not tell anyone I want to go there. I just suddenly went there. Otherwise वो सब लिपाई पुताई करके आदमी आपका भी JTO SD उसको ठीक कर देगा, है ना? So don't tell it to anyone. Just go and visit it whenever you are visiting any areas. I'm not saying we have to punish someone. We have to just guide them, tell them यार इसको ठीक कर लोगे तो it would be good for the system. A sense of ownership has to come among our employees. You see, unless until our employee will think कि ये it is for me. But that's why I asked the question, आपके घर में TV, fridge, washing machine कितने साल चलते हैं? If they can run perpetually, why not our BTS? Why our environment is such in a bad situation? Just think it over. It's a point for discussion, open point. I'm leaving it here. Okay. Yeah. Next. So flexible policy for hiring of BTS sites and renewing their hiring agreement. Sometimes क्या होता है सर, जैसे हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम 5 years का एग्रीमेंट हो, कई बार पार्टी कहती है कि हम 3 साल से ज्यादा नहीं करेंगे. तो दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी नीड कि वहां इस तरह के हम डिसीजन ले सकें. रेजोल्यूशन ऑफ आईपी वेंडर इशूज फॉर हायरिंग आईपी साइट्स. जनरली बहुत इशूज सर इसमें नहीं होते, पर कई बार पेमेंट से रिलेटेड इशूज होते हैं, पेनल्टी से रिलेटेड इशूज होते हैं. तो जहां पे थोड़ी ज्यादा पेनल्टी आईपी वेंडर को लगती है तो उसको लगता है कि हम आगे जो है साइट्स वगैरह हायरिंग के लिए नहीं देते हैं, कई बार मना करते हैं सर. ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ 75 एम्पियर पावर प्लांट मॉड्यूल एंड डू अवे विद 25 and 50 एम्पियर मॉड्यूल्स. बेसिकली इसके पीछे जो रीजन है कि कई बार एक मॉड्यूल रह जाता है और उसी पे हम साइट चलाते रहते हैं और उसमें बैटरी चार्जिंग पॉसिबल होती नहीं है. यदि मिनिमम 75 का होगा तो बैटरी एंड जो अपना पूरा कंप्लीट लोड लेना है सिस्टम का, वो एक मॉड्यूल भी सफिशिएंटली ले सकता है. 75 एम्स का तो आता नहीं ना, शायद 25, 50 या 100 का ही आता है ना. 75 एम्स का कोई मॉड्यूल शायद नहीं आता मेरे ख्याल से. नहीं लिया सर इस बार. 25 we have not taken, only 50 and 100. 50 and 100. That is standard now. 50 and 100 we are taking. And for power plant, maybe Deepak would have told you, we have placed order for close to about 10,000, 7,000 power plants. That is for existing, we are along with lithium ion batteries, and then more number of batteries and power plants again being ordered. Along with, they would become along with AMC. Plus, we have entered into an agreement with both Delta and Exicom for repair of our faulty power plant modules. Existing modules, whatever. Existing modules. देखिए, use anyone, each one of you would say, sir, light नहीं आती, battery is the problem. मेरा एक मानना है, battery is not the problem, power plant is the problem.
आप लोगों के, as you rightly said, there is only one module remaining, and then one module remaining, it will not charge the battery. Battery would go out of service after 1 year or 2 years. So unless until we attack the root cause, that is the power plant, तब तक ये बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. Even you are installing a new battery there, it will go out of order after 2 years because there is no power plant to charge the battery. That's why corporate office has been driving a situation that you should not install a battery if there is no power plant there. You should install new batteries only at the places where you have sufficient modules. Either rearrange it, get it repaired, and then only install a new battery at a place where you have got a power plant. Otherwise, your new battery आज तो अच्छी चलेगी for 1 year or so, and second year onwards, it will start giving you the trouble. So that one point I'll request each one of you to take care in your BAOA, that you must install the power plant battery at the only place where power plant is available. One additional thing that I mentioned in the morning, again repeat, this low voltage disconnect facility we have forgotten. Just to check in the That is power must. plant. Otherwise, deep discharge of battery. है अपन इनको रिपेयर करा है ना. वी हैव फॉरगॉटन द मेंटेनेंस फिलॉसफी. अब आप देखिए फेज 9.2 प्रोजेक्ट में फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस वी आर इशूइंग रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस आस्किंग यू टू रिपेयर द योर अर्थिंग, योर लाइटनिंग अरेस्टर. व्हाट फॉर? ये ड्राइव हमने कभी आज तक नहीं चलाया बीएसएनएल में, जो अब हम यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं. वी आर आस्किंग यू टू रिपेयर योर अर्थिंग, to have your arrestor should be okay, so that those surge and all whatever are coming into our system, it should not be there. Low voltage disconnector we are asking you to have in all the power plants, so that your ultimately whatever battery power plant you will install, they have to work for next 6 years, 8 years, 10 years. If we will not do the right installation today, again after 3 years, 4 years, we would be sitting at the same stage ki everything is not working. So as an important BA head at an important location, kindly work over it ki we have LVD, we have surge arresters, we have lightning arresters, and we have earthing on place. Okay. Next is standards for chemical earth. So basically, we need where chemical earthing should be done and where a normal earthing should be done. क्या होना चाहिए? You give the suggestions. Sir, for my suggestion is wherever space is constrained, then we can go for chemical earth, and if space is not constrained, then we can go for normal earth. If you would have seen 4G saturation guidelines, the exact same guidelines we have issued in that. Wherever space is not available, where is strata is rocky, you go for chemical earthing. So this for 4G saturation, we have already issued the guidelines. Same can be followed into our normal also. If you want any letter from corporate office, we'll arrange for it. Deepak, एक बार देख लो, we'll issue a letter. कोई दिक्कत नहीं. Local constraint that is driving the. कोई दिक्कत नहीं. You just let us know आपको काम करने में कहाँ दिक्कत आती है. And if you need a letter from corporate, we'll get it issued to you. Because in urban areas, sir, in built-up areas where that multiple dwelling units are there, because it is side by side. Agreed. I fully agree. ये जो 4G saturation की guidelines issue किया है, that आप ले लो and we'll issue it for all our guidelines. It will be easy for us to plot the tender and everything to vote on that. Agreed. We will issue that letter. Thank you. है ना? Next is provision of getting work done on R&C in cases BTS outsourcing vendor fails to work in vendor management app. तो बेसिकली इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि कई बार वेंडर जो है रिगर्स वगैरह नहीं भेजता है, साइट्स जो है 2 से 3 दिन भी हो जाती हैं कई बार. तो इमरजेंसी कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए जिसपे हम लोग अपना काम करा सकें, जिसे वेंडर पे जो डिपेंडेंसी है वो हम एक जो है लिमिट तक ही रखें. यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसे कर सकें. फॉर दैट वी हैव मेड दिस सजेशन सर. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड सिंगल आईटी सोल्यूशन. तो इसके लिए ऑलरेडी इस पे डिस्कशन प्रेजेंटेशन में हो चुका है कि सिंगल आईटी सोल्यूशन के लिए काम हो रहा है और बहुत जल्दी ये आ जाएगा. सो विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज ऑल्सो सेम. नेक्स्ट
That is basically, sir, for a plan. We are having so many ये एक पॉइंट है plans. जरा आई रिक्वेस्ट जीएम मार्केटिंग मैडम एक बार सूची इसको अपन निकालें एंड लेट अस सिट टुगेदर वी हैव टू मेक लेस नंबर ऑफ प्लान्स एक बार आप पूरी लिस्ट निकाल लो आई ऑल्सो फील कि नंबर ऑफ प्लान्स हम एक सिंप्लिसिटी लाएं बीएसएनएल के प्लान्स में सो दैट कुड बी अवर मार्केटिंग की यार बस हमारे ये प्लान है आप इनको यूज करो तो किसको करते हैं कुछ आप लोग के जो सजेशंस हैं वो आप भेज दीजिए मैडम के पास में वी विल वर्क ओवर इट आई हैड बीन थिंकिंग ओवर इट फॉर सम टाइम कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर मेकिंग इट मोर सिंपलर सो वी विल वर्क ओवर इट जस्ट सेंड योर सजेशंस टू मैडम यस सर दैट्स ऑल एंड इसके अलावा सर एक पॉइंट और है जो जनरली हमारे पास हाई BSWR की साइट्स होती हैं या मिनी लिंक फॉल्ट से रिलेटेड होती है उसमें जंपर्स कनेक्टर्स और IF केबल की हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो उसका कोई स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर हो जाए तो वो थोड़ा सा इजी हो सकता है हमारे लिए काफी सारे पार्शियल फॉल्ट्स इसमें रहते हैं क्या क्या होना चाहिए बेसिकली प्रिक्योरमेंट बेसिकली होना चाहिए सर IF केबल हमको जैसे आवश्यकता पड़ती है तो सर्कल से हमें कुछ तो IF केबल मिल गई थी दैट वी हैव यूटिलाइज्ड बट जैसे मंकी प्रोन एरिया जैसे मैं आगरा की बात करूं तो काफी इंसिडेंसेस होते रहते हैं जो हमको रिप्लेस करने होते हैं तो सर ये मिल जाती है इधर उधर सर्कल में स्टोर में रहती है इवन इफ सम सर्कल इज रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा ऑथराइजेशन गुजराती में इन्वेंटरी में नहीं है जी वी आर ऑथराइजिंग वी हैव इशूड ऑथराइजेशन एट केस बेसिस ठीक है तो हम सर्कल टीम के साथ बात करके ऑथराइजेशन केस भेज देंगे एक्स्ट्रा जो आपकी ERP में अवेलेबल नहीं है वो चाहिए आप जी 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 नहीं आउटसोर्सिंग में नहीं है नहीं मटेरियल ये इंक्लूडेड नहीं AMC में भी नहीं आता हमारा जो नहीं AMC में भी नहीं है ये कंज्यूमेबल्स हैं बेसिकली मतलब these are available in local market हाँ इस अवेलेबल इन लोकल मार्केट सर हम लोग टेम्परेरी एडवांस के थ्रू कभी कभी कनेक्टर्स और जंपर्स खरीदते हैं so it can be purchased जी, जी, centrally through for all the circles जी जी और में नहीं है कि बड़ी रिक्वायरमेंट आप एक लेटर सबको इशू कर दो सब सर्कल्स को कि ऐसा ऐसा फीडबैक है एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड दे कैन मेक आउट ए संडे केस यदि उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो दे कैन टेक फ्रॉम अस एंड देन प्रोक्योर इट फंड्स तो अवेलेबल हैं अपने पास मैं भेजता हूँ बिल्कुल सर दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड सर थैंक यू सर very good input. Anyone else? Anyone who wants to say something? Sir, one. Yeah, please. This regarding, of course, this is a policy matter that regarding that removal of that 18 GC micro links. Actually, in our Bangalore urban, we are having almost around 173 sites now working on 18 GC micro links. So far, it is stable because now micro links it is not getting affected. But whereas once if you come the overhead cable, fiber cable, now it will go to the very now even right now we are having the problem removal of these OFC overhead cables. So do we have any either extension of that period so that we can make out these systems either underground OFC or something? One more year time if it gives. Suppose now if it is how many years have been given to you for this work? Sir, it was because this frequency band this mera pointed question. Yes, how many years have been given to you for this work? It was given, sir. It is actually was how many years? Last year, actually, the letter I have seen. More than 3 years have been given to Karnataka and Tamil Nadu and one more circle. Yes, sir. We are only more. We are having it south side only. We are having the more in Bangalore. I am having 170. 3 years we are not able to do it. And how much spectrum cost we are paying to DOT for this work? Yes, sir. Is there any possibility to give some small? There is absolutely no possibility beyond 31st of December. Normally, I am agreeing to all the suggestions, but not this one. Yes, sir. Kindly transfer it to OFC. Again, it will go on overhead only, sir. That is the thing. Let it be done on overhead right now. Yes, once you get new, we have to see the cost benefit analysis. How much cost we are incurring over it and how much benefit we are getting out. For this 100 links, how much spectrum charges we have to pay? Yes, sir. I understand, sir. That definitely. That is the and it's not that we have taken this decision today. It's going on since last 3 years. Yes, sir. At least we have a small help of giving some 15 GC systems, sir. It will come. 15 GC systems we have already tendered. It would be coming up in phase 9.2 project, but it will take time to come. It may maybe another 2 months, 3 months it will take. Just try to work it out, whatever best possible. We do not want services to be hampered in any way. So just work over it
And whatever best required from corporate office, we will try to. Another one more point, sir. The second point is, of course, this is also corporate administration earlier taken. Only in urban, it has not been allowed to outsource the BTS, sir. Whereas some suburban areas only, we are giving to outsourcing it. But that while giving their policy decisions, it has been told that by utilizing our existing staff and everything, this non-executives and everything. But that also it is becoming very critical. Just like a Karnataka circle, we are having a good shortage of the staff in all cadres. And we don't have that much manpower to maintain it in urban also. Is there any possibility, can we send a proposal to consider it, sir? I can't comment it off immediately. Yes, but we'll have to really see. At least we'll send we'll send a proposal with a cost, analysis and everything. आप भेजिए proposal. I can't comment on it immediately without seeing the fraction figures. How much is the staff available with you? Yes, sir. And in what way the staff is being utilized. Abhi, just since you have raised the point, you all know it. How much is the total staff in BSNL as of now? 60,000 staff is available with BSNL right now also. And how much cost we are incurring for it, almost close to 9,000 crores is the cost towards our employees and all. And still we want to outsource each and everything. Our still about 55 to 60% of our revenue is going towards the staff expenses, as against to 10 to 12% of in other private operators. They are able to go for outsourcing because their expenditure is only 10-12% towards their own staff. We are incurring about 50 to 60% still even after VRS and all. So either we increase the revenue or we reduce the expenditure. In what way we want to work? We should aim for increasing the revenue so that this ratio comes down. We double our revenue, staff expenses will become 25%. No one would raise a point that why don't you outsource many of the things. But we want to outsource, keep the staff also. You all are able to see the facts and figures. Your all IFAs are here with you. You must be seeing the revenue figures of your BA day in and day out. You decide yourself. Thank you. Thank you. I can't guide you कि आपको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए. You decide yourself how much revenue you are earning and how much expenditure you should make. Yes, sir. We'll do it, sir. Another one more attached point is because this earthing and whatever the guidance has been given for doing this earthing and the light string, other things. We are making the tender. We have made the tenders in Bangalore also. A lot of operational maintenance work it is coming it. Most of the places we have to do the chemical earthing and the new earths we have to do it. So we requested some additional budget for that one in either on capital side or on OPEX side. How much budget has been given to you under phase 9.2? So they say that it is only around 28 lakhs is available in our for this. Just see any letter issued by corporate office. You all on intranet. Everyone is seeing the transfer order, posting order immediately. No other order you are able to see it. I'm just asking if anyone of you would have seen it. How much budget we have given for civil and electrical works in phase 9.2 project? Anyone, if you can tell me. Rupees 10,000 per site for civil work and 10,000 for electrical. 10,000 for electrical, it has been given, sir. Hey, we have given you this much. How many sites are there in Bangalore? Bangalore now, where we are total sites are there? Total sites are how many? 1453, sir. 1450 into 10,000. This much fund has been given to you for civil. This much fund has been given to you for electrical. Now you do whatever you want to do with this fund. I'm not asking you anything out of it. Out of 1450, you have to do only at 700 places. Use this all the fund for 700 places. No one is. I think this should be sufficient. We'll try, sir. We'll come back to you. Yes. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. But we have calculated and this work is being carried out by electrical wing in Haryana circle. So we have identified, we have purchased 1 megar for each FTCA. And we took a drive कि सभी का change नापना है. And we find कि some around out of 200, 3 sites, some 170 odd sites are having more than 1 home resistance. So we have given, they are telling only 40 sites with this budget will be covered.
You see, each chemical earthing would not cost more than 10,000 rupees. If anyone is doing more than that, kindly work over it. Why the expenditure is more than that? We have taken an input from more than 10 circles. It will not cost more than 10 to 12,000 at each place, this chemical earthing. So if you want, you are incurring expenditure more, kindly work over your contract once again. Sir, electrical wing is doing. I am not concerned with electrical wing or XYZ wing and all. You see, they all are under you. Kindly work over it. You are sanctioning their estimate. You are approving all their tenders and everything. Kindly work over it. Find out yourself from the market. What is there? You can't say civil wing is doing it, electrical wing is doing it. No. It's the BA and the circle who are doing the work. Okay. Now one more question from my side. What is the revenue of your circle, your essay, your BA? आप ही बताए रोहतक ना you said Rewari. What is the revenue of your Rewari BA? 36 crore from all the services in a year. In a year. How many OAs are there? Acha, only one OA BA is only one Rewari. So 36 crore is what you are is your revenue from all seven. And what is the expenditure? Just go through it. My question is how much you are earning and how much you are spending. है ना? वो एक बैलेंस शीट हर OA BA should have on his table कि यार मैं क्या कर रहा हूँ BSNL के लिए, है ना? Leave apart CFA, CM, EB, anything. If I am earning 100 rupees, I should not spend more than 100 rupees. Okay, that is the, if at most that is the minimum what is needed from each BA head. And you work out break your whole gamut of finance into small brackets. Like if you have got 4 exchanges, 10 exchanges, break it into 10 exchanges. How much revenue is coming out from each exchange? How much energy you are putting into that area? It may happen that you are putting lot of resources in one area, revenue coming out is very less from that. If those resources you are put it somewhere else, you may get more revenue out of it. So just analyze it. Where you are putting more staff, we are putting more energies, and how much returns we are getting out of it. This is true for everyone, and it will really give you an insight where you have to focus. That would be improvement for your BA, BSNL, for everyone. That is necessary, because I have seen in many BAs and all, BA heads are not worried about the revenue part. For that, they just leave it to the accounts person. यार वो कुछ बना लेता है और भेज देता है corporate office को, circle को, और खत्म हो जाता है. You all must have to see service wise your revenue. You will have to see OLT wise revenue. Which OLT is giving you how much revenue? How many connections are working there? Which BTS is giving you how much revenue? How many connections are working in that BTS area? That all you unless until you monitor it at the granular level, the improvement will not come into the system. As far as mobile vertical is concerned, we are giving a lot of BTS equipment to each one of you. Close to 1 lakh BTS we have ordered under phase 9.2, and about 22,000 would come under various USOF scheme, 25,000 almost. LWE, USOF, BOP, BIP, and all other these projects, close to about 25,000. So 1,25,000 BTS would get added to our network. It's a very big amount. If you'll see, it will cost us about more than 25,000 crores. This much government has put faith on us now. So it is our duty to see to it that this 25,000 crores coming to our network, we are able to utilize
in the best possible way. Now, there are 2-3 things which I, from corporate office, we have an expectation from you that as and when the equipment is coming, it should be in a position to install on the same day. My all colleagues from corporate office would have spoken to you about the necessity of it. We can't keep even one day equipment into our store. We'll have to really hammer TCS every time equipment आ गया store में जाओ और इसको install करो. अब install करने के लिए if they go to the 2 places what I have seen in the past, what I narrated you in the past, it cannot be installed in months also. In the condition those 2 shelters and room were there, nothing can be installed there in even in months. So if equipment has been ordered for all of you and equipment is going to reach, you have to ensure that the equipment can be installed. The site have to be ready for installation. RFI. This is the term which we have been using it since last 3 months. Kindly ensure that all your sites are RFI. Ready for installation. It should be, space should be available, neat and clean should be available, media should be available, and power should be available there. Media, wherever it is OFC, kindly ensure that OFC is available from your BTS location till your super edge router. Power modules, lot of battery power plants have been ordered. You make a plan where you have to install phase 1, phase 2, phase 3. Prioritize your installation accordingly. This you only can do as a BA head. No one else can do, neither corporate office nor circle office. No one can do it other than the BA head. You have to sit with your planning team, CM team, transmission team, guide them properly, how and where the media has to be made ready, where the microwave will come, where UBR would come, where OFC would come. Whatever you have to convert into OFC, kindly convert it. Another 2 months time period is there when the equipment would come to you. DK, आप मॉनिटर कर रहे हैं क्या कितना OFC में कन्वर्जन हो रहा है? जस्ट एक बार है ना, एक जस्ट मतलब अनलेस अंटिल वी मॉनिटर इट फ्रॉम कॉर्पोरेट, तब तक आप लोग भी देखो आपके एरिया में कितना आपको OFC में कन्वर्ट करना है, वेदर दैट इज हैपनिंग और नॉट. Because after coming the equipment, we will not tolerate even a single day's delay. That you please ensure it, because we are going to fix the responsibility after seeing those 2 BTS. Tomorrow I am going to issue a letter. Someone would get fixed in the circle if next time we notice all BTS or any installation in such a shabby situation. So these are the 2-3 things we expect from corporate office, that our BA heads should be in a position to do it. आपके जो भी आपने issues बताए हैं, they are very valid issues. They are happening in all the circles. But the life of power plant cannot be reduced. I am of that opinion. Life of power plant is because we are not maintaining it. So we are saying it should be made 4 years or 6 years. It is our responsibility to have it a good infra, so that we maintain the life as 10-12 years or whatever is the life prescribed in this. Battery life is a situation which we will have to really see. We will work over it, how it can be done. Lot of battery power plants getting ordered. आप देखेंगे अगले 6 महीने में फील्ड में बहुत पावर प्लांट बैटरी अवेलेबल हो जाएंगे. स्मॉल भारत नेट का नया प्रोजेक्ट आ रहा है. Lot of new voltage getting included into the network. All BTS locations would become VoLTE locations. They will become our hub. From there you can start providing all kinds of services. ये जो UBRs we are procuring है, microwave we are procuring, you can उसमें जो spare capacity available होगी, you can use it for giving the lease circuits also. That also, because you are a BA head, you will have to provision all the services from the same transmission equipment. It's not that ये मोबाइल ने procure किया है तो ये सिर्फ मोबाइल की BTS के लिए होगा. No. Whatever you find that इसमें spare capacity available है, use it for giving lease circuits as an alternate media, or one end to other end. कहीं और दूसरा कुछ modem खरीदना है तो हम खरीद लें और we are able to give the services. This is how you all should plan as a BA head. This is what the expectation is there.
basic purpose of discussion of this training, it's no more training. It's basically a information sharing, best practices sharing between one BA to other BA. All of you are meeting in the lunch time, dinner time, or while playing badminton and all. You can always share the best practices being done in one BA with other BA. That should help each other so that the BSNL progresses further. IT and all, it has been discussed. Definitely, we are working over it. कुछ initiative हमने ले लिए हैं. Some tenders have already been called for. eSIM, USIM, all these are in the pipelines. They all would be coming up. All IT tools, bombs also you would have told them. They all are coming up. A lot of initiatives have been taken in last 6 to 8 months. We'll be able to see it in next 3 to 6 months down the line in the field. DIA पोर्टल देखो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है, वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा वंस यू सी इट कि मेरे पास 200 साइट्स हैं, उसमें कितने जगह पे अर्थ ओके हो गया है. वंस यू पुट ऑन टू द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल प्रिपेयर्ड बाय TCS or the निरीक्षण portal prepared for 4G saturation, if you will input a correct data, that will help you only, no one else. You will be able to catch hold of your subordinate staff कि उस SDCA में ये साइट में this work is pending, why it has not been done so far. तो इस timelines are stiff. We have to commission 4G saturation, at least all towers are to be erected by March and commissioning by September. These are the timelines on which all of us have to work. From corporate office, we will extend whatever help is needed. But a lot of initiatives have to come from circles and BA heads. This is our expectation is there. With these, my intentions and my thought process, I had come here to share my thoughts with each one of you and take inputs from you wherever, like Arthing, you said a good inputs. We will try to issue an order from corporate office so that you are, your hands are helped by these orders from corporate office. You said about hiring. If you say, if hiring for 3 years or so, it's a very short time, basically. If we enter into any agreement for our endeavor should be to go for a maximum length, 5 years, 10 years, 15 years, so that you need not renegotiate, because I know hiring and renewal is a very tough process, because you'll have to really negotiate with him hard to get the agreement signed, because nowadays it's the toughest job in the field. Hiring it, and second thing is replacement of the SIM. What we have to do for our 4G project, all जो 2G 3G SIM customer के पास हैं, उनको replace करना है with a 4G SIM. These two are the toughest job. Without that, our project cannot be successful. तो ये 2 jobs on which each one of you should have to work day in and out. और एक दिन में होने वाले काम नहीं है ये. Really, we'll have to work hard to get these 2 projects completed. Let us work in that direction. आप लोगों को हमसे जो भी चाहिए, my WhatsApp is also all the time up. You can just send me WhatsApp कि सर ये issue है. We will try to find out if it is possible to do it. We will definitely try to give a solution for the same. And plans के लिए भी आपका suggestion is very well taken. We will try to work on it. आप इसमें just you study the plan of your other competitor, Jio, Airtel का जो भी है, on based on that आपको लगता है कि sir we should have this plan, we should discontinue these plans and have only this plan. So we will work over it. We'll just need some suggestions because you all are our ears and eyes. आप जो बताएंगे उसके ऊपर हम काम करके we will come back to you. Because sitting from corporate office, sometimes we are not, to be very frank about the ground reality, which you are there on the field. So if you will give us a good input, each one of you is always welcome to give us the input, and then we'll work over. These are my thoughts. Any other thing you want to hear from me, I am happy to share. Another point था कि जैसे कि हम माइक्रो की साइट को ओएफसी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम अपना ओवरहेड केबल डालें या टीआईपी से फाइबर लें.
तो हमने टीआईपी का सर हमें ट्राई करा, उसके उल्टी से ट्राई करने का, तो वो 2 वीलाइन पास होने में दिक्कत आ रही थी। तो कुछ उल्टी भी पास हो जाते हैं, कुछ में नहीं हो पाते, तो बहुत रिलायबल नहीं है। तो सर हम अपना फाइबर डालेंगे तो हमको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसका एसएलए थोड़ा सा इशू आता है। तो ईवी में पॉलिसी आई थी 3 साल पहले 2020-21 में, ऑपेक्स मॉडल में। तो उसको हम यूज कर सकते हैं क्या, मतलब माइक्रोवेव की साइट्स को ओएफसी में कन्वर्ट करने के लिए? वो बहुत बहुत रेट कम ही है, हर कोई आएगा भी नहीं उसमें। या तो हम माइक्रोवेव की साइट आप ओएफसी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं सर? पहले तो नहीं, साहब कह रहे 4G आएगी तो 4G के लिए मतलब क्या होगा? नहीं, जहाँ माइक्रोवेव में सर हमने सर एक्चुअल में इंडस्ट्री में सर 75% लोगों ने भी माइक्रोवेव यूज किया, 25% है। हालांकि बीएसएनएल का फाइब्रेशन काफी अच्छा है, बट अभी जो सामने कहा ना फाइब्रेशन, अभी सिर्फ हम 18 गीगाहर्ट्ज को खाली कराने के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ जो साइटें हैं 2-4 किलोमीटर के, ना करें ना फिर उसको, ठीक सर आगे आपकी हब साइट है हब तो नहीं, आप हब नहीं है तो जरूरत नहीं, लेकिन पुराने जो है वो तो 10-20-50 एमबीपीएस के होंगे, उसमें 4G में दिक्कत वहां आएगी। पे आप आपको हम बड़ी आप दो क्या? ठीक है, ठीक है। देखो मैं एक कोई देयर कैन नॉट बी ए सिंगल फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम। सम साइट्स यू विल बी एबल टू कन्वर्ट, यू डू इट। सम साइट्स यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट, वो बहुत डीप अंडर में है, वहां फाइबर डालना मुश्किल होगा। लेट देम कंटिन्यू ऑन माइक्रोवेव टू बी रिप्लेस्ड विद अनदर माइक्रो। ठीक सर, those solution would be coming up to you. Some sites where by laying some fiber you can convert it so that we need not put a new microwave there. They'll continue on fiber, whether overhead or underground. That choice is also with you. Whatever best possible for giving us the optimum network available. कॉस्ट बेनिफिट के साथ देखेंगे सर, कॉस्ट बेनिफिट। सर दूसरा था सर ये एक मिनट सर, साहब ने कहा ना बेसिकली सर अपन ने 2 किलोमीटर तक का ऑलरेडी आदेश निकाले हुए हैं कि 2 किलोमीटर में कहीं चेंज करना है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप करिए। तो वो ही साइट कन्वर्ट होनी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 15% साइट है हमारी, हाँ हो जाए वो उसमें करना। देखिए 2 किलोमीटर लिमिट इज फॉर लेइंग अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल व्हाट ही इज आस्किंग इज वेदर वी कैन हायर फ्रॉम टिप एंड ऑल दिस थिंग्स ही इज आस्किंग। सर वो बिजनेस केस देखना पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा मैं कह रहा था सर, लेकिन कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। That is already there. You can देखो we are giving we are using tip fiber for providing the lease circuits. ली सर्किट के लिए है वो, हाँ तो उसके same thing can be done for this also. ठीक कर लेंगे, कर हम कर ही रहे थे तो हाँ कोई इशू नहीं। Only the clarification we wanted that we utilize the Apex model is there for that EV circuits. It under that vertical it has come. We are using for the providing the leaf circuits. Now it will become a backhaul for our own equipment. Okay. Say that one exchange point or BTS point. Now as per this 18GC rollout also. So that we want to utilize that opportunity. What are already commercials are there. It is already commercials are there. We will implement so that it can be immediately we can convert it. Agree. That's only the sir. Agree. Thank सर एक चीज और थी सर, एक सजेशन था, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी लग सकता है कि सर आज से 10-15 साल पहले एयरटेल जियो क्या करता था कि जियो नहीं था, एयरटेल वोडाफोन क्या करता था कि रूरल एरिया में टैरिफ कम रखता था। मतलब बीटीएस में जो रूरल एरिया में बंदा जाएगा तो टैरिफ, उसमें कॉलिंग के रेट थे तो कॉलिंग फ्री भी आती थी, सस्ती भी आती थी। तो उस समय हमारे आईएन में वो फैसिलिटी नहीं थी सर, मैं अब बात कर रहा हूँ 2006-07 की सर। तो अब हमारा रूरल बीटीएस जो है वहां पे हम 4-5 हजार रुपये रेंट दे रहे हैं, 10-12 हजार की बिजली खर्च कर रहे हैं, प्लस बाकी खर्चे हो रहे हैं हमारे, और रेवेन्यू हमारा 2 हजार भी नहीं आ रहा। तो सर हम ऐसा करें वहाँ का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कि वहाँ पे हम अनलिमिटेड डाटा फ्री कर दें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बाकी कॉल तो फ्री कर नहीं सकते, कॉल वैसे ही फ्री है, डाटा ही हमारे पास एक खेलने के लिए है बचा, तो हम डाटा अनलिमिटेड फ्री कर दें वहाँ पे। जैसे कि अभी भी ये जियो और एयरटेल ने 5G का अनलिमिटेड डाटा दे रखा है, फ्री देता है सर अनलिमिटेड डाटा 5G वाले कस्टमर्स को। तो जिससे सर हमारा क्या है, जो रूरल की साइड से जो केवल कवरेज के लिए काम आ रही है, तो उसमें कुछ कस्टमर आ जाएंगे, कुछ तो रेवेन्यू आएगा सर, वो हमारा रिचार्ज कराएगा 150 रुपये का, 200 रुपये का महीने का, तो कुछ तो सर वो अनलिमिटेड डाटा के लालच में आ जाएगा सर। हाउ वी विल एंश्योर कि वो बीटीएस एरिया में ही अनलिमिटेड डाटा मिले उसको? सर वो मतलब बता रहा हूँ, 2006-07 में प्राइवेट ऑपरेटर के आईएन में था वो वाला फीचर, हमारे 11-12 में 12-13 में जब मैं ईटी में था तो आईएन में फीचर आ गया था कि हम बीटीएस बेस्ड टैरिफ सेट कर सकते हैं सर। तो अब ये गर्व बताएगा अगर आईएन में रहा है कि अभी क्या लेटेस्ट आईएन क्या कर रहा है। वो बता रहा हूँ 2006-07 में था, मैं जयपुर में था, मैं प्रपोजल भेजा था, मेरी डिस्लो साहब से बात भी हुई थी
तो उन्होंने बताया था उस जमाने में कि हमारे आईएन में भी है नहीं, नेक्स्ट फेज के आईएन में लेंगे सर। अभी लेटेस्ट में उस मतलब 2007-8 के बाद से टच में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ध्यान है सर 11-12 के आईएन में तो आया था सर ये प्लान फीचर। में आपके लिमिटेड डाटा तो रहता ही है, प्लान में तो रहता ही है। नहीं नहीं, हाई स्पीड का वो तो जीपीआरएस में 1.5 GB के बाद कम हो जाती है स्पीड, 2 GB कम हो जाती है। शहर में तो कम होना ठीक है सर, लेकिन रूरल में हमारा कस्टमर ही नहीं, तो फिर कैसे आएगा कस्टमर? बट एक चीज मैं बताऊं, ये जो 2 GB पर डे भी हम दे रहे हैं, ये सर। खाली 5% लोग हैं जो 2 GB पर डे पे पहुंचते हैं। सर नहीं सर, वो हमें अट्रैक्ट करना है रूरल में। हमारा वो जो है, हमारा 15,000 का एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू हमारा 2,000 भी नहीं है। देखो, समटाइम मार्केटिंग गिमिक आल्सो वर्क्स, दैट इज आल्सो ए, मैडम एक बार नोट कर लो इसको, देख लेते हैं क्या फिजिबिलिटी है। इट्स ए मार्केटिंग गिमिक कि यार हम इस एरिया में जो रहेगा अनलिमिटेड देंगे, आईएन में so चेक that करना may पड़ेगा, attract some customers. आईएन में चेक करना पड़ेगा सर। ठीक, we'll get it, we'll get it. और सर वो रेंटल का मैं कह रहा था, रेंटल का जैसे बता रहे थे प्रॉब्लम, तो रेंटल में सर हमने तो जो इंदौर में आने के बाद मैंने कर लिया है, किसी उस समय रेंटल कम भी चल रहा था जब मैं गया था कोरोना में, तो किसी का भी हम 18 से ज्यादा बढ़ाते ही नहीं है। एसडी डी को पावर है 15% की, किसी को 18 है तो मेरे पास आता है, पर्सनली मैं मिलता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसका रेंट सही में बहुत कम था, तो उसको 18 बढ़ाते हैं सर। तो मैं तो ये कहानी बनाता हूँ कि भैया 18 के ऊपर तो केस भोपाल जाएगा तो होगा, इंदौर भोपाल जाएगा तो होगा ही नहीं केस। तो सर वो मतलब हमारा जो है, मैंने देखा था बहुत से लोग 40% पहले बढ़ाए हुए थे। तो मतलब इसको मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि सही में जो पावर डी ए हेड की 20-25 से ज्यादा दी नहीं जाए सर, तेरे बहाना भी मिल जाएगा सर। अदरवाइज सर वो आपको पता है फील्ड में क्या होता है सर, फील्ड में सर अब मैं तो सर पूरे इंडिया का संभाल नहीं सकता, मैंने इंदौर का संभाला, मैं 18 से ज्यादा किसी को नहीं दिया, चाहे मेरी लड़ाई हो गई कुछ भी, और वो मान भी गए ऐसा सर। नहीं है सर, मतलब हमारे अगर रेंटेड साइट देखो, मैं एक चीज बता, मैंने एक कहा ना, देर कैन नॉट बी वन फॉर्मूला फॉर वन प्रॉब्लम, है ना। मतलब वी हर सिचुएशन इज डिफरेंट एट ईच प्लेस, योर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, एंड वन हैज टू टेक इंटरेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ बीएसएनएल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बेस्ट है, टेक ए कॉल ऑन, है ना, तो बेस्ड ऑन दैट। 20 के ऊपर दी नहीं जाए, 25 के ऊपर दी नहीं जाए, सर्कल में जाएगा अपना केस, तो अपना वो टेनेंट बन जाएगा सर। आपके सर्कल में तो है, बट जैसे कुछ सर्कल है बेंगलोर है, यहाँ तो केस ही ज्यादा आते होंगे ना। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। मतलब हमारे यहाँ पे केस जाएगा जस्टिफाई होके सर, जस्टिफाई होकर जाएगा ना फिर सर। यदि 40% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, तो सर्कल जाएगा केस, डॉक्यूमेंट जाएंगे सर। 15 दिन रोड 15 दिन आता ई ऑफिस है आजकल, ई ऑफिस परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज। Actually, in other areas, in urban areas, we are having another threat that the owner should not request us to vacate it, sir. That we are praying it, because percentage, okay, we can bargain it. That man, he turns back so that you vacate it. Because all our regular infrastructure is there. सर मेरा स्टैंडर्ड है, मैं कोटा था और यहाँ पे था, मैंने कुछ भी कर लो, कोर्ट से आगे खाली कर रहा हूँ, मैं तो खाली नहीं कर रहा। मतलब जब तक सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग का इशू है, एक खाली करा हमने इंदौर में, वो नगर निगम के 10 नोटिस आ गए थे कि बिल्डिंग गिर जाएगी। अदरवाइज तो हमने कहा तुम कोर्ट से करा लो, मैं तो नहीं करूंगा जब तक मैं सीट पे हूँ सर। ठीक ठीक ठीक, गुड। यही सर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है बीएटी। So thank you, sir. Thank you for addressing our participants. And I think all the queries and all the doubts have been cleared by our Honorable Director, sir. And now, as a token of thanks, may I request our PGM ALTTC, Shri Pratap Narayan Dore, sir, to give a moment to our Honorable Director, sir. And I again request our PGM ALTTC, Shri Pratap P. Dore, sir, to give a memento to our last speaker of the day, Shri D.K. Agarwal, PGM BSNL Corporate Office. Now to
end today's proceedings. I now request our PGM Dore sir to give a formal vote of thanks to our Honorable Director sir. Honorable Director CM Sri Sandeep Goel sir, guest speakers, distinguished BA heads, IFA attending this prestigious training. It's a matter of great pride and gratitude to convey my vote of thanks on such a prestigious occasion on completion of the second day of 7th batch of BA head and IFAs. I sincerely thanks on behalf of ELT fraternity to Honorable Director CM Sri Sandeep Goel sir for this interaction session and addressing closing remarks very effectively and informative for all BA heads. ELTTC is again thankful to Director for sparing precious time out of his busy schedule for interacting with BA heads. We are thankful to our eminent speakers who are imparting this training to train and groom our officers as the future leaders and for manning the important position of BA heads as well as IFA. We are thankful to all the participants, officers who have shown interest and participated with full zeal in today's session. Last but not least, thanks to all who are directly or indirectly involved in the smooth conduction of this session by putting their best efforts. Thank you.